पूछ के और अपनी पढ़ाई करा करते थे। वो दिन मैं तो नहीं भूला हूँ, मुझे याद है। बेसमेंट में हुआ करता था हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट। और उसके बाद मेरे फादर को ऑप्थेल्मोलॉजी ब्रांच से ही बहुत लगाव था और वो कंटिन्यूस कैंप करते रहते थे, सब करते थे। ही हैड ऑल द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज जो दुनिया में हो सकती है, सब हुई उनको, बट उन्होंने सब फेस की। और 1997 में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसके सर्टिफिकेट कोर्सेस वो चालू किए। अभी जब मुझसे बुलाने आए थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं आपको बताऊं, मेरे को इतना ला के सिलेबस वो सब दिया इन लोगों ने। तो इस 2024 में इंदौर में श्री अरविंदो यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं बीएससी का कोर्स या बैचलर डिग्री का कोर्स नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में कहीं भी, तो वो शुरू कराऊंगा मैं आज अभी वो। और मैं अभी यहाँ से सीधा भोपाल जा रहा हूँ, तो मेरी कोई मीटिंग भी है, उसमें वहाँ हमारे पिरामिडिकल काउंसिल में आते हैं सब लोग कोर्स मध्य प्रदेश में, तो उसमें एड ऑन कराने के लिए 1 आध महीना लगेगा, बट मैं आई गेट इट डन सो दैट। दूसरा आपकी कॉन्फ्रेंस तो ठीक है, बट मेरा एक और सजेशन है और करना भी चाहता हूँ कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्स और फेलोशिप आप जो अपने सीनियर लोग हो गए तो एक स्पेशलाइज ब्रांच में भी करना चाहिए। और इसकी आजकल तो अलग अलग स्पेशलाइज ब्रांचेस हैं, बहुत सारी डिसीज है, और उन डिसीज को भी उस कोर्स में पढ़ाया जाए, बेसिक सबको नॉलेज हो जाए। जैसे मैं डायबिटीज का बोलूँ, मुझे आपको बता रहा हूँ कि विदिन 6 मंथ में डायबिटीज का पूरा डिपार्टमेंट अलग बनूंगा, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजी में ही रन करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, और ऑप्थेल्मोलॉजी के डिपार्टमेंट वाले ही रन करेंगे। तो इससे कई ब्रांचेस आपकी हो सकती है, कई विधाएं हो सकती है, कई तरह की सर्जरीज होती है। जैसा हम लोगों में कोर्सेस आजकल ब्रॉड स्पेशलिटी हुई, फिर सुपर स्पेशलिटी हुई, अब उसकी भी सब स्पेशलिटी होने लग गई है। तो ये समय आपका भी वैसा ही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर मिलाए लायक कोई भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, रेडी। और इंदौर को लेना चाहिए इस काम के लिए, और ये मेरे ख्याल में पेशेंट वाइज भी और सब डॉक्टर्स को भी बहुत मदद करेगा। एक और यूके में कोर्स होता है क्लिनिकल असिस्टेंट टू सर्जन फिजिशियन। मैंने अभी कल जब मिल के गए थे तो मेरे रजिस्ट्रार को बोला है, वो कर रहा है कलेक्शन, क्लिनिकल असिस्टेंट टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो दे कैन डू पीएचडी एंड ऑल, एमएससी डिग्री लेके, सो दैट एक डॉक्टर भी लिखने के लिए उनको चांस मिले और अच्छा रहे वो। तो ये सब कोशिश करें आप लोग। और फिर मेरे को आपका जो भी सहयोग मेरे से चाहिए या आप मेरे को बताएं, तो मैं आई कैन टेक इट और कर सकता हूँ सब चीज़ें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपके आगमन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, वो तो हमारे लिए उपलब्धि थी ही, पर आज के इस मंच से आपकी जो घोषणा है और सर की घोषणा, सर की गारंटी, मिस भंडारी सर की गारंटी, सर ने कहा है और करके दिखाया है, और उसका अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का प्रतीक है। और ग्रेजुएशन कोर्स के लिए सर ने जो आज हम सबसे वादा किया है, जल्दी ही इसका क्रियान्वयन होगा। रियली सर, यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स मध्य प्रदेश में होता है, ग्रेजुएशन का कोर्स मध्य प्रदेश या आसपास के प्रदेशों में कहीं नहीं है। बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ कई ऑप्टोमेट्री के अगली पीढ़ी के पुत्र या पुत्री भारतीय विद्यापीठ या अन्य इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इंदौर तो चिकित्सा और शिक्षा दोनों जाना जाता है। तो ऑप्टोमेट्री संकाय के लिए आज निश्चित तौर से गौरव का दिन है कि हम इस उपलब्धि को छूने जा रहे हैं। सर, हम संगठन की ओर से और व्यक्तिगत रूप से जहां हम लोग की आवश्यकता रहेगी, चूंकि ये हमारी विधा से है, माँ ऑप्टोमेट्री की सेवा में जैसे हम लोग संलग्न हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसा आगे करना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे उसमें पीजी हो, पीएचडी हो, और हम सब उससे लाभान्वित हो सकें, ऑप्टोमेट्री की अगली पीढ़ी उससे लाभान्वित हो सके। साथ ही सर ने जैसा बताया कि स्पेशलिटी पर वर्क करने की आवश्यकता है, ये बिल्कुल सही है। इंदौर में भी हम लोग इस पर लगातार सोच रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं। पर मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सर, हमारे आज के एक वक्ता विराजमान है, आदरणीय संजय मेहता सर।
सर रेटिना पर खूब अच्छा काम चेन्नई में कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि देश के नामचीन प्रैक्टिशनर है, तो स्पेशलिटी रेटिना पर सर के क्लिनिक में रेटिना का सारा कुछ सेटअप है और रेटिना पर खूब अच्छा वर्क कर चुके हैं। सर बताएंगे अपने उद्बोधन में पूरा। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ इंदौर में भी नए ऑप्टोमेट्रिस्ट काफ़ी अच्छे जो पीजी करके और जो करके एजुकेशन करके आ रहे हैं, उन सब से मैं चाहूँगा कि वे स्पेशलिटी पर वर्क करें। जैसा सर ने बोला डिपार्टमेंट शुरू करेंगे तो सबके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। तो थैंक यू सो मच सर आपके इस उद्बोधन और सहयोग के लिए। आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे अपने ही, जिनका आशीर्वाद टीम इडोवा पर सदैव रहता है, सुविख्यात नेत्र विशेषज्ञ राजस आई एंड रेटिना रिसर्च सेंटर के चेयरमैन, सहज सरल स्वभाव के धनी डॉक्टर राजीव चौधरी सर से निवेदन करती हूँ कि कृपया हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डॉक्टर भंडारी, सोसाइटी के अध्यक्ष शैलेन वाशने, धर्मेन, बाहर से पधारे सभी स्पीकर, ऑप्टोम, मेरे बहुत आप सब ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लोगों को अपने नॉन रत्न पारखी, खन्ना साहब, सबको देख रहा हूँ, हमारे मित्र, हमारा स्टाफ। सबसे पहले तो रत्न पारखी जी को बहुत बहुत बधाई, जो आपने बहुत सही कैंडिडेट्स चुना, या शायद मैं उस ऑकेज़न पे यहाँ सही कैंडिडेट के समय में भी यहाँ था, बिकॉज मैं जब इंदौर में आया तब से मैं रत्न पारखी जी को जानता हूँ, शायद करीब 40 साल हो गए हैं तब से। और उनका डेडिकेशन, जब हम इंदौर आई हॉस्पिटल में वर्क करते थे, कैंप करते थे, तो उसमें काफ़ी। फ्रेंड्स, ये कॉन्फ्रेंसेस हम लोग हमारे ऑप्थोलॉजी में भी काफ़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रतीक जानते ही होगा, दैट्स ओके, वी आर एंड आई एम सीइंग द इतने सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट इकट्ठे हो गए हैं। तो जैसा ऑप्थोलॉजी या मेडिकल साइंस या हर साइंस डेवलप हुआ है, वैसा मेडिकल ऑप्थोलॉजी डेवलप हुआ, उसके साथ साथ ऑप्टोमेट्री डिवीज़न भी बहुत डेवलप हो गया है। शुरू में सिर्फ करेक्शन के लिए रहता था, फिर आजकल every ophthalmologist, every eye hospital is dependent on the optometrist, their quality, bifurcation. जैसा ऑप्थोलॉजी में पूरा एवोल्यूशन हुआ, अलग अलग ब्रांचेस, रेटिना, कॉर्निया, वैसे ही ऑप्टोमेट्रिस्ट में भी बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ है। आप लो विजन एड, स्क्लेरोकॉर्निया, स्क्लेरल लेंसेज, एंड अभी तो वो नया मायो स्मार्ट लेंसेज आ गया, जो बिकॉज इट इज़ ए ट्रीटमेंट पैटर्न एंड आई केयर के लिए प्रॉबेबली ऑप्थोलॉजिस्ट एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट का एक कंबाइंड एफर्ट इज़ मच मोर नेसेसरी। एक अकेला ऑप्टोमेट्रिस्ट पर्टिकुलर ठीक है, करेक्शन देना वो सब ठीक है, डॉक्टर्स हमने सर्जरी कर दिया, पर फाइनल आउटकम इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर एंड क्वालिटी ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट। हम करीब हमारे इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स ग्रुप में करीब 10-12 ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो हमारा आधे से ज़्यादा काम संभालते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर एनी सक्सेस, अपन जो कहते हैं मनी कम्स विथ योर क्वालिटी डिलीवरिंग। अपन सोचे कि मनी के लिए अपन काम करेंगे, अगर हम काम करते हैं, कोई क्वालिटी वर्क देते हैं, तो मनी इज़ ऑलवेज ए बाई प्रोडक्ट। आप क्वालिटी वर्क करते हैं तो क्वालिटी उसका रिकग्नाइजेशन होता ही है। हम जानते हैं, खन्ना जी को जानते हैं, मैं जब से आया था तब भी नाम था उनका और आज भी नाम है। बहुत सारे ऑप्टोमेट्रिस्ट आप अपने से जानते हैं। भंडारी साहब को देखिए, दैट कहाँ से कहाँ, दैट इज़ बिकॉज मेडिकल कॉलेज तो बहुत सारे हैं, बट भंडारी या अरविंदो ग्रुप, मेरी दोनों डॉटर्स ने वहाँ से किया है। और मैंने सर को पहले भी बोला था कि अगर मेरी डॉटर टॉप पे भी आएगी तो मैं एडमिशन अरविंदो में ही लूँगा, आई विल नॉट गो टू एनी अदर मेडिकल कॉलेज। So it is the effort of the quality. अब क्वालिटी ये इशू रह जाता है, क्वालिटी अपन सब बात करते हैं क्वालिटी, तो क्वालिटी कैसे आएगी? क्वालिटी के लिए 2 चीज़ चाहिए। फर्स्ट, योर इंटेंशन, कि हम उस क्वालिटी को डिलीवर करना चाहते हैं, कोई सी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे हम सर्जन हो या ऑप्टोमेट्रिस्ट हो या कोई भी दूसरी भी ब्रांच का है।
अगर हम क्वालिटी डिलीवर करेंगे तो हमारा रिकग्नाइजेशन होगा ही होगा, बिकॉज जैसे हमको मरीज की ज़रूरत है वैसे मरीज को भी गुड क्वालिटी के डॉक्टर्स की ज़रूरत है। इट इज़ ए म्यूचुअल। अपन सोचे कि हमको ही ज़रूरत है, ऐसा नहीं, उनको भी ज़रूरत है, तो उसका रिकग्नाइजेशन सूनर और लेटर होता ही है। तो क्वालिटी दो चीज़ से आपकी सक्सेस डिपेंड, वेदर यू आर हैव ए इंटेंशन और, अगर आपका इंटेंशन है तो आप उस चीज़ को, और क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस आर मस्ट, जो आपके इतने सारे स्पीकर आए हैं दैट डिलीवर। तो नॉलेज का म्यूचुअल एक्सचेंज एंड योर इंटेंशन कैन इंक्रीज योर क्वालिटी। सो मैं आप सबको इसकी थर्ड कॉन्फ्रेंस की सक्सेस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारा हॉस्पिटल इज़ एसोसिएटेड, जैसा भंडारी साहब ने बोला कि वो कोर्सेज करेंगे, इट्स ओके, इट विल बेनिफिट टू द सोसाइटी, बेनिफिट टू द आवर हॉस्पिटल, एंड सभी के लिए बेनिफिट का है। एंड हम राजस की तरफ से प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी कोर्स आप सब स्पेशलिटी कोर्स चालू करना चाहें तो कर सकते हैं। हम हमारे यहाँ जैसा स्पेशलाइजेशन का है, हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट जानते हैं कि वी आर रनिंग मायोपिया क्लिनिक, वेयर बिकॉज इट्स में पूरा रोल ऑप्टोमेट्रिस्ट का ज़्यादा आ गया। मायो स्मार्ट लॉस भंडारी खन्ना साहब जानते हैं, सब आप जानते हैं, मायो स्मार्ट धनोतिया जी, उनका लड़का तो करके ही आया है कोर्स स्पेशल। सो दिस इज़ ऑल ए कंबाइंड एफर्ट टू डिलीवर द क्वालिटी सर्विस टू द कस्टमर। सो वी विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपका उद्बोधन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है और मार्गदर्शन हमें आपसे हमेशा प्राप्त होता रहता है। जब भी कभी ऑप्टोमेट्री विभाग के लिए या ऑप्टोमेट्री संकाय के लिए या हमारे किसी कार्यक्रम के लिए सर से हम मुलाकात किए, सर जब भी जानते हैं या सर कहाँ कहीं किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है, इवन हम जब नहीं बोलते हैं सर पूछते हैं कि अगर मेरे लायक कुछ भी हो तो बताना। कभी भी जब भी इन्विटेशन देने गए सर का हमेशा रहता है कि मेरे लायक कुछ हो तो बताना। तो आपका ऐसा अनुपम सहयोग हमें हमेशा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता रहता है। एक बार आप भी स्वीकृति प्रदान कीजिए कि थैंक यू सो मच। एक और हर्ष का विषय आज के इस कार्यक्रम में है दृष्टि मंथन, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जैसा हम सब जानते हैं, भंडारी सर से अनुरोध करना चाहूँगा सर, ये तीसरा आयोजन जो थर्ड नेशनल ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस हम लोग जो कर रहे हैं, 2 आयोजन तक हर बार हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और उसका संदेश ऑप्टोमेट्री संकाय में पूरे देश में जाता है। शायद इसकी साक्षी पोला में भी है, जैसा सब जानते हैं, पूरे देश की मैगजीन्स में और सब जगह इंदौर का ऑप्टोमेट्रिक संगठन के बारे में लोग जान रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इस बार के दृष्टि मंथन 24 में हमने फिर एक नया इनोवेशन किया है। हमारे मार्गदर्शकों को मार्गदर्शन के साथ इस बार हम दृष्टि मंथन 24 पत्रिका का संकलन करके उसे तैयार किया, जिसका विमोचन आज हमारे मुख्य अतिथियों के बीच होना है। दृष्टि मंथन पत्रिका में कॉन्फ्रेंस से लगा जानकारी, संगठन के सभी सदस्यों की विस्तृत जानकारी, उनके नाम, फ़ोन नंबर, पारिवारिक जानकारियाँ, ब्लड ग्रुप्स और अन्य कई जानकारियाँ जो सबके लिए सही साबित होगी और उपयोगी साबित होगी। दृष्टि दोष से संबंधित जो भी अन्य व्याधियाँ हैं या बीमारियाँ हैं या जानकारियाँ हैं, उन सब का संकलन और साथ साथ और अन्य कई समसामयिक मुद्दों के संबंधित जानकारी को संकलन करके प्रकाशन करने का आज अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे राष्ट्रीय वक्ताओं के कर कमलों से उसका विमोचन किया जाना है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ पत्रिका के संयोजन में विगत 1 माह से अनवरत प्रयासरत और तन मन धन से समर्पित दृष्टि मंथन के संपादक ऑप्टोम विवेक वर्मा सर और उनकी टीम में सहयोगी ऑप्टोम हेमंत रत्नपारकी सर, ऑप्टोम सुबोध अग्रवाल सर, ऑप्टोम कमलेश सेठिया सर, ऑप्टोम उदित ताम्रकार सर, ऑप्टोम सुधांशु धनोतिया सर।
कृपया मंच पर पधारें और निवेदन करती हूँ हमारे अतिथियों से दृष्टि मंथन का विमोचन करने पधारें। टीम पत्रिका में विवेक वर्मा सर का जो सहयोग है और निश्चित रूप से उसके लिए भी कोई शब्द नहीं है। पूरी टीम ने जो काम किया है और पत्रिका हमारे बीच है, कृपया आप सभी लोग समझ। हमारे मुख्य अतिथियों की समय की व्यवस्था को देखते हुए हम प्रतिबद्ध हैं। रियली हमने सर से वादा किया था कि आधे घंटे हम फ्री करेंगे, तो कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते हुए हमारे अतिथियों 2 मिनट सर एक बार लेना चाहूँगा। हमारे वक्ताओं की तरफ से 2 मिनट का उद्बोधन अजीत लिमिये सर खासकर एकेडमिक एक उसको लेकर, और सर जो मिशन शुरू कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन के लिए, 2 मिनट का सर का उद्बोधन होगा। इसके बाद मोमेंटो और फिर हम यहाँ पर समापन करेंगे। मैं अजीत लिमिये सर से निवेदन करूँगा, कृपया पधारें। Good morning. Sorry to barge in the program. सर, आपने कहा कि इस साल 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और मैं जानता हूँ इस डिफ़िकल्टी को कि यहाँ पे टीचर्स मिलना उसके बाद में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और वो क्वालिटी एजुकेशन अगर ना मिले तो बच्चों में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। मैं भारतीय विद्यापीठ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ ऑप्टोमेट्री का ट्रेजरर भी हूँ, और बिना पूछे मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मेरी तरफ से, हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से, एस्को की तरफ से, और यहाँ पे जो अतनु सर है, ही इज़ ऑल्सो हेडिंग एन इंस्टीट्यूट, पॉला मैडम है, और मेरे दोस्त संजय जी है, whenever you require expert teachers, we will definitely provide all those expert help और exchange program। तो यहाँ पे उसकी कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं यही देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। और हमारे अतिथियों वक्ताओं ने आज हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया, जिसकी कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु एवं हमारी स्मृति उनके जहन में सदैव कामना कायम रहे, ऐसी कामना के साथ हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट विजेंद्र यादव जी से डॉक्टर राजू चौधरी सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। विजेंद्र यादव जी डॉक्टर राजू चौधरी सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट मुकेश बिरला जी, ऑप्टोमेट्रिस्ट मुकेश बिरला जी डॉक्टर विनोद भंडारी सर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। ऑप्टोमेट्रिस्ट सुनील मालविया जी,
हमारे आज के मुख्य वक्ता ऑप्टोमेट्रिस्ट अजित लिमिया सर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। ऑप्टम सुनील मालविया जी, अजित लिमिया सर को, ऑप्टम आशीष शर्मा जी, ऑप्टोमेट्रिस्ट आशीष शर्मा जी संजय मेहता सर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। ऑप्टोमेट्रिस्ट पवन शर्मा जी, पवन शर्मा जी, अतनु सामंता सर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। ऑप्टोमेट्रिस्ट कामना भरोसे, कामना भरोसे जी, ऑप्टोमेट्रिस्ट पोला मुखर्जी मैम को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। पोला मैम, मित्रों हमारे बीच आज इंदौर शहर के सुप्रसिद्ध रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक महाजन सर भी विराजमान हैं। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रवीण परमार जी से निवेदन कर रहा हूं कि प्रतीक महाजन सर से निवेदन करूँ कृपया मंच पर आएँ और पुष्पगुच्छ से प्रवीण परमार जी उनका स्वागत करेंगे। सर प्लीज़। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। आज के ज्ञान का कुंभ शुभारंभ करने हेतु हम अग्रिम गतिविधियों को संचालन करने हेतु मैं अब मन समर्पित करूंगा टीम इडोवा के यंगेस्ट मास्टर डिग्री होल्डर सुधांशु धनोतिया एवं हमारी विधा से चित परिचित आज की कुशल संचालक माही अग्रवाल को आमंत्रित करूंगा और अतिथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहाँ के इस सत्र का समापन करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही एक निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के पश्चात जैसा आपको सूचना है शाम को डिनर इसी हाल में है। आप सभी लोग यहाँ शाम को डिनर में उपस्थित रहेंगे और सर से भी निवेदन करूँगा, भंडारी सर से भी और राई चौधरी सर से भी कि थोड़ा समय शाम को निकालेंगे हमारे साथ। जब आप सब काम से फ्री हो जाएंगे तो आपका आशीष हमें अगर प्राप्त होगा तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। नीले आसमान से धुंध अब छटने वाली है, खुशनुमा आलम में फिजा बहकने वाली है। नेक्स्ट, कुछ फरिश्ते एवं कुछ परियां शिरकत करने वाली है। सौगात अब ज्ञान की चंद पलों में लूटने वाली है। जोरदार स्वागत। I would request all the delegates to please be seated. Warm greetings of the day, ladies and gentlemen. How are you all doing? आप सबकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे पीछे से। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सबको? हाँ। How are you all doing today? I, Optum Sudhanshu Dhanotia, And I, Mahi Agrawal, welcome you all to the 3rd National Conference of IDOVA, Drishti Manthan 2024 at Brilliant Convention Center, Indore, the cleanest city of India. Firstly, I would like to thank our optometry experts for taking their precious time out and making it to this conference. Secondly, I would want to thank my audience for being present here today.
Before we begin with today's session, please allow my fellow host to deliver a short speech to warm up everyone regarding today's conference. So today's conference is about recent advances in the field of optometry. I'm sure our expert must have done their bit of studying around the topic, and so did our audience. Despite of relentless efforts towards ensuring our patient get the best-in-class services, we lack in the practical implementing the new technology in our daily practice. So today our experts will be briefing us about the basics of retina, vision therapy, low vision, and the role of optometrist in the community. Many optoms among us have private practice. So please raise your hands. किस का private practice है यहाँ पर? Private practice, दुकान plus clinic. हाँ. So one of our honorable speakers who owns one of the leading private practices in India will tell us about some brainstorming ideas to upgrade our practice. Our first speaker is Optom Sanjay Mehta sir. From the second batch of Elite School of Optometry, started his practice by the name Tor Optics at Anna Nagar, Chennai. While he was entering his third year in the year 1988, he started his optometry practice in the year 1990 with minimal instruments and has seen around 35,000 patients and around 10 lakh customers to date. He has given innumerable lectures. Glaucoma and retina are his favorite subjects. With his knowledge spread across all the aspects of the profession, his clinic has been awarded #1 among all the best clinic of India in the year 2022 by Carl Zeiss, and in the year 2023 was awarded as the second best. His clinic has set a benchmark for what an optometric clinic should be. The clinic setup comprises a 5-step slit lamp, autorefractometer with keratometer, applanation tonometer, retinoscope, direct ophthalmoscope, high resolution non-mydriatic fundus camera, pachymeter, non-contact tonometer, portable visual field analyzer, and OCT for a comprehensive eye examination. His poster was awarded as the best at IVA 2023, held in October 2023. An active member of all optometric organizations in India, believes that true recognition of the profession will happen only when more and more optometrists start their optometric practice, as our country with its huge population is the best place to reach out the masses and thereby really serve the country. I would like to invite Optometer Sanjay Mehta to give us some insight about retina, its basics and its importance. Good morning, Indore. Good morning, Indore. Good morning, Indore. I am really thankful to the Indore Optometrists Association, the team Shailendra Vaishnav, Dharmendra Anya, Gajraj ji, and every one of you for calling me to this wonderful city. I have been here for the last 4 days. It is really an eye-opener for me. Okay? And I don't know, I have always some connection with Republic Day. I go to a speech, to give a speech or presentation during this time. So this time also no exception. Okay? Right. Okay. So even before I talk about the word
retina, I would like to thank my first anatomy teacher. He was Dr. Cooper. His first class, my first class in was anatomy. So he said, his first sentence was, being normal is more than enough. Two hands are working, two legs are working, you are able to eat, speak and have a nice sleep. That's more than enough. He had a very great impact on me, and as well as my teacher, Dr. Badrinath. He took retina classes to me, to our batch, and we are privileged to listen to him. And retina and vitreous was his topic, and he taught us. So I'm really thankful. Whatever I am right now, I'm standing here is because of them. Thank you very much, sir, wherever you are. In fact, I am the only optometrist in the whole school or college who have presented his case in his own class. He told me to do that. So really, sir, and before I start, sir, thank you. Sir, sorry if I do any mistakes, sir. Sir, okay. Whatever little I know, definitely. So we'll start with the basic. Okay. So this is हमारी सबसे one of the most fascinating organ is our eye. Everyone is aware, but still, it's made such a way that the light falls directly on the retina. And if you see carefully, there is a small pit here which is called fovea, and that's where the whole game happens. But when we see still more closer, that retina, it has about 10 layers, and each one has its own fascinating job to make us see clearly. Still in more detail. So the top layer are responsible for the glaucoma test changes, and at the bottom we have these layers which are responsible for causing problems like AMD, retinitis pigmentosa, which are one of the reasons why we require low vision aids. Ajit Limay, okay? And there is one more part which takes all the nerve fibers, everything, in the optic nerve, which is called lamina cribrosa. It always fascinates me, this part. Sir, you will agree? Okay. And second thing is how we see binocular vision. Atanu? Okay. Such a wonderful connections have been made from the eye to the brain. And the left side, the nasal side crosses over to the other side. And that's how, anywhere you want me to be slow, let me know, or go back, I will definitely do, okay? How the radiations goes, how the visual impulses are converted photochemically, and how it is processed is very amazing. So 6 and 6 is normal, everyone? Yes? How many agrees? How many of us agree with that? Please raise your hand. 6 and 6 is normal? Sir, I would have also raised my hand 9 years back, but not now. Okay. Generally, we do a retinoscopy, autorefractometer. 6 and 6 hai, chalo. Everything is over. But that's not the case now, okay? I'll show you how it is. Next step is, we check 3 more things. That's the beauty of it. The retina is just 1.5 millimeter structure, highly sensitive to light, transparent. But the way in which it can be interpreted is fascinating. Each test has its own way to tell us something. Let's see. So we have pupillary light reflexes there, which we check. Then we have Amsler grid.
and the color vision chart. This gives us basic idea that whether that macula is working properly or not, okay? But let's see something else. We have to use direct ophthalmoscope. How many of us are using here? Okay. It gives a upright image. The magnification is about 15 times or so, but the field of view is very limited. We are able to see only the, I'll show you what, it shows just very limited part of the retina. Then we have two things, applanation tonometer. To a certain extent, it also tells you about the retina, through the eye pressure, and this is 90D method. One of the most difficult way to look at the retina, I have not tried, sir. Okay, to be honest, it was there attached to my slit lamp, but I have never used it. Then we have indirect ophthalmoscope. It gives an inverted image, but with a stereopsis. The patient has to be supine, and then only we can see. It is also, one has to master this technique. In our internship, probably even much earlier internship, the ophthalmologists were very kind enough for us to give a free hand. So probably by the end of the second year, they allowed us to do this indirect ophthalmoscopy. It was really fascinating to see the structures in a very, though the magnification is less, but the field of view is very big. Then we have fundus fluorescein angiography, wherein a fluorescein injected into the patient veins, and then a series of pictures are taken to understand where the leakages are there, where the defects are there. So each of them will show something different. Then we have another thing called EEG visual. People use different ways and to tell about this. This also gives us whether the rods and cones are working properly, whether the retinal fiber layers are working properly. सर सभी की हमारी 90% यहाँ के लोग की शुरुआत चश्मे से ही होती है. Agreed? मेरी भी ऐसे हुई थी. I started my showroom when I was in my, I finished my second year and I was entering my third year. I realized much earlier that what I am going to be, okay? And that was in a professionally, but that is as an optician. But as an optometrist, my eyes opened only when I had one case, which is rhyming with like chashma only. This is a part called chiasma, wherein the two optic nerves cross over. I remember very clearly, still clearly, it's so fresh, as if it happened today morning. I had a patient who was around hardly 18 to 19 years old boy. He came one day morning, he says, I am not able to see clearly. He had been to some few places where his eyes was examined by some experts also, and they prescribed him glasses and just sent him out. He says, no, something is wrong. So I had a look at we did a check, vision 6.6, everything was normal. I checked his pupillary reflex. That's where I saw that there was a condition called RAPD, relative afferent pupillary defect. Okay, so I saw that there is something abnormal. The reflex was not like a normal reflex. I didn't had any machine in my clinic, so I used had a mydriatic drop bottle with me, so I took up that color cap and did confrontation test. I saw that his field of vision was less. I had direct ophthalmoscope, so I had looked at his retina. The optic nerve was absolutely pale, absolutely white. I'll come to again in few slides that how a normal should be. I said something is wrong. So I asked that boy, what is his father doing? He says, he's working in one of the medical colleges. So I told him, go immediately, there is something wrong behind your eye. That was almost more than 25 years back, but there was no mobile, nothing. So probably after 6 months after his visit,
his relatives came and told me, sir, thank you very much. I said, what? Says, the boy did go to his hospital and they found a life-threatening pea-size tumor at the chiasma. It was life-threatening. They said, had you would have come few days late, you would have died. So that really opened my eyes, that there is something beyond what we are normally looking for. So then, like every one of us, we go into the rut. I would say rut, yes. Our focus becomes our bread and butter. We have to make specs and all that. But down the line, I realized that something I was missing in my practice. So almost probably 10 years back, I got my first fundus camera. I had everything other, slit lamp, I had auto ref, applanation, but I said, no, something is missing. So I got my fundus camera here, that's handheld. That is the first image from that machine. And 2020, I got my non-mydriatic fundus camera, and that's the first image from that machine. Then I felt, no, this is also not enough. Then I bought a NCT and pachymeter. Okay. You will know why it will be important. Okay. Then the third stage was for me, I felt that was also not enough, incomplete. So then I got a portable visual field analyzer for various reasons. For me, that the things should happen in my clinic only. Okay? Because many of the times we refer them to go outside and the patient doesn't either go there or come back to us for their own reason. Okay. So I got this. And then last year I got an OCT in my clinic. So each of the instrument shows the same retina in different ways. That's the fascinating thing. The interpretations are different. The way in which things show to us is different. This is one of the most dearest image to me, for me, taken from a non-mydriatic fundus camera. This was taken on a World Optometry Day. It was some 8th October 2020. This was the first patient in my clinic. I have a collection of about 15,000 to 18,000 images with me. But this is the only image which is a book picture, which shows all the complete retina in what we described in a book. All the retinas are different, but this one is the most perfect one. Sir, so you would agree, sir? Thank you, sir. So these are the main parts. We have an optic disc. Then we have arteries and vein. The arteries are thinner compared to vein. Veins are a bit thicker. 2:3 is the normal ratio. And then there we have a thing called macula. That's where we are seeing maximum vision happens here only. So as we are talking now, what to see in it is the question, and what significance it has in our practice. So this shows that the dimensions of the retina and the optic disc and the fovea. There is one more interesting part. In the optic disc, there is a small depression, like a cup, and that is what we call it optic cups, correct? And that is how it will show. I'll show you what it means actually. This is, as we are nowadays, the hot topic is myopia. So this is one of my patients is highly myopic, and what happens to when the retina is stretched fully, and you can see the underlying choroid sclera also. And this fundus is called tessellated fundus. And next, 1 minute. Second comes as sir was telling about diabetics.
his father was diabetic. So this is a case of, this is how a diabetic retinopathy complications can happen in the patient with diabetic retinopathy. When we want to understand retina, we have to understand how our blood mechanism works in the body, how our blood pressure works in the body, and this is how first it happens. The blood starts when the sugar. Anything else, sir? Okay. When the blood sugar level gets disturbed, over a period of time it has its own capacity, but after that complications like this comes. First are small spots, small spots comes, they get absorbed, they again come, they keep leaking and again gets absorbed. After a certain time it does not have that capacity, so then they leave a permanent marks on the eye. So any organ for that matter, any part of the body, four things are common. There is a, when any disturbance happens, there is a swelling happens, there is a hemorrhage happens, then there is a, what we call it as a disturbance in that structure happens. The same thing applies to the eye also. So this is image of one of my patient. She's diabetic for the last probably 5 years only. And you can see those white spots everywhere. Okay, they are not getting absorbed, but that's what this might lead on to further complications. And here we can see a small hemorrhage here, and few of them over here also. These are actual images. Okay. This is one of my recent patient. His diabetes was not under control for very long time. Sorry, he's diabetic for the last 6 months only, 6 years only, and it is uncontrolled. So here you can see there are hemorrhages are there, and these are all hard exudates. Few of them are here, soft ones are there, but these are all hard exudates. Luckily, it has not formed over here. Otherwise, his vision would have got lost, as it happens in many cases. Sir, आगे नहीं जा रहा है? Yeah. So that's what okay. These are the different structures of optic nerve, and here this is what the cup is all about. These both are same. These I've given a closer look, and if you can see, there are small disturbance here. These are the pores which I was talking about, and here there is one more optic nerve wherein this cup size has become much bigger. Why it is important, I'll tell you now. So when we look at the optic nerve, the one which is in the center is normal, the one in the middle is abnormal, and the third one is also abnormal. Am I correct? Am I correct? No. These three all can be normal. Okay? Only thing is the last one can get glaucoma faster. I'll show you. I'll give you 3 examples, and it will tell you about this. I had a patient whose eye pressure was normal, but if you look at this optic nerve, it almost looks like he is glaucomatous. We call a condition called non-tension glaucoma, normal tension glaucoma, wherein his eye pressure is normal, his other tests are normal, but this optic nerve is has swollen a lot for various reasons. Okay, it has to be kept under watch throughout. I had a patient. All of us get a patient who is around 40, 42 years old. I had a patient. She came in the morning. She came one of the day in the morning. She says, "I am not able to see near object."
I said, fine. Vision was 6 with very minor correction and N6 normal correction. But when I had a look at her optic nerve, I had to suspect, I said, something is abnormal. When compared to her other eye, this one eye was not all right. I said, fine, let's go. I checked her eye pressure, applanation tonometer. Sorry, before doing this, I had done a applanation tonometer. The pressure was very high, 30 in one eye and another eye 20. Then I did my NCT. There also it showed the same thing. And then I looked at the fundus camera. I also said, yes, something is wrong. But my doubts became clear when I did this field test in my clinic itself. Is this indicative of that she has glaucomatous changes already happened. She was just hardly 42 years old. Okay. So I immediately referred to the ophthalmologist. By the time she started treatment, believe it or not, her eye pressure went somewhere around 45 to 50. She took her own time to decide upon the treatment. So, but yes, timely she went and she listened to me. That's the very important. And she understood the problem, the gravity of the situation. This I had recently, just about probably hardly 2 weeks back. The patient, everything is normal, eye pressure is normal, vision is also normal. But when I looked at her optic nerve, it was very pale. I said, something is not normal. Because whenever I see a pale optic disc, I feel that something is wrong, definitely behind. All of us should realize that something is something wrong behind. So when I had a look at it, I did her OCT in my clinic. So this report showed that something is wrong, definitely. Her eyes are, the nerve fiber layer is definitely is below the normal limits. And this is the first, almost the third slide I showed you that the nerve fiber layer gets affected. So this, when I did it, it showed that definitely there is a loss in her ganglion cell complex, the first layers, okay? So all the three patients had normal vision, but all of them three showed different features of the same condition. So when anyone says glaucoma, is to say that a person has glaucoma, one has to see many factors, even to utter the word glaucoma. But as one of the second leading cause of blindness in India, silent killer. So this is what opened really my eyes that yes, we have to do something else. These are the conditions which I am showing you, which are commonly seen can be seen commonly in our practice. We would have missed also many times. This lady, she came says my vision is blurred, but when I had look at her eyes, she was having a BRVO, we call it as a branch retinal vein occlusion. One of the branches of the veins, one of the network gets occluded, and it typically shows this type of leakages in the vitreous. It floats around and it is very obvious. These are very common conditions. And she is diabetic also, so if you can see over there are some white spots here. So she is having those hardy exudates over there. Another common thing, we see probably in this crowd, anyone above 40 to 60, we will be having it. These are called drusens. These are all small lipid deposits at the macula. As long as they are, what you call it is a hard one, small tiny specks are normal. All of us must be having it. In somewhere or another, small places, we will be having it. But when it happens, when it comes in the macula, as in this case, it is a dangerous condition. If the person does not make changes in
in the food, like more antioxidants, it can lead on to more complications. This could be the initial stage. This patient is in the intermediate stage. If you see also carefully, the retina is pale. The color is not vibrant at all. Lot of anemia must be there in her, and lot of, and as you see here, sorry. These are already formed, and these are forming. This one is called wet, correct, sir? Yeah. This is more dangerous. It can lead on to more complications. And this is a full-fledged AMD. So before we go about learning how to give low vision aid, we should know what the condition is. So this is one of the, this patient is helpless. There is no treatment for that. Neither he can see clearly, 100%. This patient has 50% vision in one eye, and another eye, this eye is blind totally. So we have to handle this type of patients, give the best advice possible. One more thing I often see in my practices is called epiretinal membrane. A small layer forms around above the macula, and it causes stretching of the macula. It can cause macular hole also. I'll show you one. Very common this one is. So this also cause low vision because it's exactly at the macula. This patient came to me, says, suddenly, Sanjay, I'm not able to see something exactly at my left down corner. Sometimes I'm not able to see at the top. All that was there. He said, at the bottom, I'm not able to see properly. This is how he described me. So when I had a look at his eyes, the retina has got detached at this place. Vision is 6/24 or so in that eye. Vision has also got disturbed. So when the patient comes to you saying that my vision and will not improve by giving your normal specs, you should see that something else also will be wrong. One more thing, because of this condition, you get amblyopia, wherein the nerve fibers, when optic nerve, normally it will, as during the gestation time, the sheet over it will go away, but many cases it remains as it is, and it gives a wonderful look at the pic, but the patient vision is always less, probably amblyopic most of the time. Unilateral most of the time it is. Second thing is, this is retinitis pigmentosa. Loss of, there are many reasons. Heavy loss of rods over a period of time due to various reasons can cause retinitis pigmentosa. It's always a challenge to give any low vision aid to the patient. I'm sure Ajit will cover this also. It's very heartening to see these conditions. During my internship, I was sitting in the visual field department, and next to that there was a doctor, ophthalmologist, Dr. Vijaya, who specializes in glaucoma. So I remember clearly that one patient was there and said, please give me back my vision. You do anything for me, but I want the vision. She said, we can't help it. So really, that really shook me. I said, what is this? We are not able to, such a big doctor is not able to provide back the vision. So that's how my eyes opened really. These are conditions which are very common, retinitis pigmentosa, and progressively the vision gets deteriorated. It causes a lot of economic problems also to the patient, socioeconomic problems we get. This patient, he was an electrician. He was working as an electrician in one of the hospitals. Slowly the vision deteriorated and he has no other work now. Almost he is begging on the road. Okay.
Here you can see the optic now is very pale. So whenever this pale optic now comes, that something is wrong behind, definitely. This is also one of the common condition wherein it affects due to genetics, and the parent, there's always passed on from generation, and there is no treatment for this. Over a period of time, the progressive vision loss happens. That's where our duty comes to make sure that we give them proper optical treatment, wherein this main macula gets affected. Sir, can I join you? Please take my selfie also. Thank you. So the retina can get affected due to various ways. Every medicine we take in our body, it goes somewhere, travels throughout the body, it travels to the eye also. This patient, he was working in Integral Coach Factory in Chennai for the last 25 years, and he was handling batteries. So over a period of time, because of this handling of the batteries, the toxic material caused this condition, wherein the main part, again the macula got affected, and absolutely he has no vision in that eye. I had a patient who said, sir, just 2 hours back, I realized that I'm seeing one small ring in front of me. Just 2 hours. He was so intelligent that he came within 2 hours. He said, sir, I'm just seeing a small circular ring in front of me. So when I checked up, this part was swollen. Okay. So his vision was 6, little bit less, and 6 also, but there was a elevation here, and how it looked in my another machine I'll show you in OCT. This is his normal eye, but here there is a collection of fluid between the layers, and that was causing that small circular ring. There is no treatment for this. It will subside on its own, but recurrence can happen. So this has to be checked over time, because these are all normal patients. Most of them you will see we would have seen also in our practice. It subsided. This happens to people who are they call it type A personality, who has a lot of tension. You can see it mainly in people who move around a lot, who are very extremely active, overactive I would say, whose profession demands a lot of stress. Say for example, a person who stitches clothes, okay, they have always a deadline, commonly seen in them. Okay. So this is how, when I showed him, he realized and he made a difference in his lifestyle. He says he said he isolated him from all the things, mobile, work, everything. So after probably 15 days, he came back. It became all right. He was so happy to see this. Of course, when I saw this, I referred immediately to the ophthalmologist first. Says, you make sure that everything is all right. And they also said the same thing. And believe it or not, every 2 months, he keeps coming to my clinic just to check everything is all right or not. Okay. That's where the revenue comes also. Okay. So this is the macula. Sometimes we call it as a hole happens. I have not seen yet, but yes, I saw one which is called pseudo macular hole, wherein it looks as if there is a hole, but it is not full. And here also the patient said, I'm not seeing things clearly. Blurred vision was there. And that was the only complaint, blurred vision, that's what. His vision is
around 6, 9 or so with the correction, and 6 everything. But when I had a look at the OCT, this is how it was. This eye is normal. And here you can see the whole ear. It is not completely, it is not complete. It is still partial only. But we have to be careful that it can, over a period of time, can develop into a full thickness hole. There is a retinal membrane which pulls the, which causes this in the vitreous. Hypertensive retinopathy. Blood pressure, all of us have it sometime or another for various reasons, okay? So these are the changes which can happen over a period of time. The arteries become narrow. The disc becomes, there is an edema there. There is a, because the veins become thick, they press on the, the arteries are very thin. So the veins are thick and they, the arteries thick press on the veins and they cause a deflection. So we call it as a AV nicking. There are few hemorrhages here and cotton wool spots also. This patient came to me just after the opening of lockdown. He says, sir, my vision is blurred. So he says, I don't have any other work and all that. During that time, stress time, he developed this, you can see here, there is a hemorrhage here and there is a blood hemorrhage also here. So he had a momentary raise in the blood pressure and it caused this. There was one more patient here, in which you can see it much more clearly. So this patient is so dear to me. Sir, हम लोग जो चश्मा बनाते हैं, तो पेशेंट को जब भी तकलीफ आती है तो पहले कहाँ आते हैं? हमारे पास ही. सर, आपने चश्मा दिया बराबर नहीं है. Correct? How many of us agree? ठीक है? So he also came the same way. Just 6 months back, we had given him the glasses. He's one of my oldest customer. Okay. So I said, no, how can it be? Within 6 months, it won't change that fast. I said, no, let me check your eyes. He agreed. So when we had a look at his eyes, said something is wrong here at his for retina. So whatever changes which I told you is there. The arteries are very, very thin. There was AV nicking also was there. And the veins were super dilated. I have used this as the original picture, okay? I have done a slight touch up on this, but this is one of the best picture I could take from him. So I told him that something is wrong. So I asked what are the complaints he was having. He says, for the last 3 months, he was having gastric problem. He is diabetic for the last 30 years or so, and hypertensive also. He says, the last 3 months, I'm having severe gastric problem. I said, then I tried to connect with him. I said, go and meet your cardiologist. He said, something is wrong, definitely. He did go. So they found a condition called widowmaker, in which these are the actual reports and the picture. There is something called left descending artery from our heart, which supplies blood to the whole body. They found 75% block in that artery. The importance of this condition is, the patient gets sudden, instantaneous, non-revivable fatality, death. No way they can revive. I'm really so grateful that I could save in all this career, second patient, someone's life, 2 patients' life I could save.
He underwent all the treatment and he is all right now. One more thing we see is cholesterol. So generally we live, many times it will be floating around in the eye. So still there is a confusion whether it's due to cholesterol, high cholesterol, anything like that. I would have left this patient as it is, but I had one more patient in which I could see this. And when I connected with his condition, I said definitely something is wrong in your circular system. Go and check your cardiologist. And he did go. And also they found a heart problem in he underwent surgery, everything. And he is all right now. He's from US. So he underwent the surgery there. But the beauty of that one is that surgery was so dangerous. The blocks were so dangerous. No cardiac surgeon in India were willing to do it. Only the US surgeons were able to do it, and they did it. I had a friend of mine, school, would say he is friend from me for the last, from standard third. He had come to my clinic to give an invitation to my practice, to give an invitation for some reason, for some other persons. He said, I'm not able to see, I'm seeing blurred vision from that. So when I had a look at it, of course that image, I was not able to take a picture at all because it was full muddy. Absolutely, I could not see anything in his eyes. I said, then I connected, asked him all the questions, whether he has undergone any tooth extraction, anything. He says, no, nothing. I said, definitely this looks like a tuberculosis attack. uveitis, we call it. So then I immediately referred him to the ophthalmologist. We have a very renowned ophthalmologist. And it turned out to be a tuberculosis attack. And this one is after it became all right. Still the vision is little bit less only. So one more thing, I told you that something can swelling ho sakti hai. So this is a case of a papilledema. It happened in an optometrist colleague of mine only. So wherein there is a swelling of the optic nerve. It suddenly happens is because of the intracranial raise in the intracranial pressure which is there in our brain. The migraine attacks. Migraine attack also can cause a condition called migraine retinopathy. This was also seen in one of the optometrist eye. This is a case wherein neuroretinitis, whereas when something goes wrong in the brain, it also reflects in the retina like this. So we might think it's a retina, but it reflects about 300 systemic conditions in the eye, in the retina. We can see much before even it is diagnosed. And that's how I did. Of course, I had a very old picture of retinal tumors, but sorry, I was not able to retrieve it, but this is how it looks. And this also can cause, this will require condition, the low vision aids will be required. If the tumor is more or even less also, the vision will be less. Also, most of the time it is enucleated. So I will say that this is my bottom line of this presentation, that every retina has a story to tell. Only thing is we have to be able to see what it is telling to us. That's it, sir. This has been my journey. If anyone wants any questions, you can ask them. If you have any questions, you can just raise your hand. One or two, that's it. Anyone? Sir, question? Yeah, tell me. Sir, according to you,
what is the importance of history taking? Very much. Very much. So can you elaborate, please? See, I showed you the case of Widowmaker. I asked him what are the problems you are having, not only in his eyes, but in his systemic conditions. He said, I am having a gastric problem for the last 3 months, and it is not getting all right by any of the medicines also. I had showed you a case of Stargardt disease or retinitis pigmentosa. We have to make sure that anybody in the family is having a similar case or not, because it can transmit, these are genetic conditions, can go on to something else. Second thing is, you should be proactive. Had I not brought the patient said who was having a complaint of that Widowmaker, please come, we'll confirm it. You should be proactive in also doing your work, find out what is wrong, where it is wrong. Yeah. सर एपी रेटिनल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बताएंगे सर? Sir can tell more than me. Sir, can give the So I would like to invite Dr. Pratik Mahajan. Please, sir. Aye. Thank you, sir. And Mr. Sanjay Mehta ji, I really feel very much connected with you. You have done so much imaging and all those things, diagnosing so many diseases about retina. So, आप एक बार और जोरदार तालियां बजाइए प्लीज सर के लिए. तो अभी सर ने एपीरेटिनल मेम्ब्रेन का पूछा. बेसिकली एपीरेटिनल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन. बेसिकली कई बार एक बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है जिसके कारण एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है. इट्स लाइक जैसे किसी पेपर के ऊपर एक लैमिनेशन होता है ना, तो इस तरह एक लैमिनेशन की तरह एक मेम्ब्रेन होती है जो कि रेटिना पर डेवलप हो जाती है. इसके कारण जो विजन है डिस्टॉर्टेड हो जाता है. लाइक इफ़ यू डू अ एम्सलर ग्रिड टेस्टिंग इन योर क्लिनिक, तो उसमें द पेशेंट विल सी कि हाँ जो लाइंस हैं वो उसको आड़ी तिरछी दिखाई दे रही हैं. और इवन रीडिंग में ही कैन सी कि लेटर्स जो है वो कहीं जंबल अप हो रहे हैं या आड़े तिरछे दिखाई दे रहे हैं. सो व्हेन इट बिकम्स सिम्टोमेटिकली, देन इट कैन बी वेरी वेल सीन ऑन एन OCT एग्जामिनेशन. तो उसमें जो फोवियल कंटूर होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें मेम्ब्रेन, एक्चुअली यू कैन सी द मेम्ब्रेन. कई बार अगर वो विजुअल सिम्टम्स कर रही होती है तो फिर उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें विट्रेक्टोमी करके मेम्ब्रेन को पील ऑफ कर देते हैं. Sure. No, that membrane is a disease basically. Epiretinal membrane तो एक disease ही है ना, जो कि अगर लेकिन बट इट्स नॉट कि अगर वो मेम्ब्रेन है तो उसे रिमूव कर ही देना चाहिए अगर वो मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है. इफ़ इट इज़ मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स कि एक एज के साथ पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट होता है. दैट वी ऑल नो, इट्स कॉल्ड PVD, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट होता है. समटाइम्स जब PVD होता है तो वो मेम्ब्रेन अपने आप स्पॉन्टेनियसली सेपरेट भी हो जाती है. सो इट्स नॉट कि एवरी टाइम द एपिरेटिनल मेम्ब्रेन इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, बट व्हेन इट्स सिम्टोमेटिक, जब उसके कारण डिस्टॉर्शन हो रहा हो, जैसे कैटरेक्ट के लिए कहते हैं ना कि कैटरेक्ट अर्ली है, बट अगर वो सिम्टोमेटिक हो, पेशेंट की लाइफ स्टाइल में दिक्कत कर रहा हो, तो फिर उसको करना होता है. इसी तरह एपिरेटिनल मेम्ब्रेन, इफ इट इज़ कॉजिंग सिम्टम्स, इफ इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम इन द डेली एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट, देन इट शुड बी treated earlier. But it can be treated only with surgery, vitrectomy surgery. That binds with retina. That is a epiretinal membrane. So it is a membrane which is above the retina, above the surface of the retina, which we can see from inside. Sir, बहुत common है, and that is one of the reason why they'll say my vision is not blur, not clear and all that. Sir, I'll be happy that everyone starts using some device in their practice to determine how to examine retina. Probably a simple direct ophthalmoscope is good enough. That's how I also started with it. So if all of you start using it, I feel that this small speech will
has made some difference. सर मैं जस्ट ऐड करूँगा कि सी when you talk about retina, मतलब I actually will ask everyone to look into the eye over the retina. After COVID थोड़ा सा डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज़ थोड़ा सा कम भी हो गया है, like it requires going close Yes, to sir. the. Yes, sir, sir, that. But what I see when Rohit is an optometrist, I don't know whether he has come. He worked with me for such a long time, so he became very much trained in examining retina with a smartphone and a 20D lens. Okay, just Yeah, holding sir. the 20D Yeah, lens yeah. and using your smartphone. Yeah, smartphone. So that's such a wonderful technique, I feel, and he has actually diagnosed. He still goes to camps and he diagnoses diabetic retinopathy, retinal vein occlusions, and if somebody asks me to summarize the future of optometry in 2 words, what I would say myopia and diabetic retinopathy, because diabetes is like it's becoming more and more common. Yeah, we are the capital, and it is like you can save the vision. It's a most common cause of प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन इंडिया. और ये जो डायबिटीज़ वाले जो ब्लाइंड होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो 40 साल के होते हैं, 45 साल के होते हैं, जो कि अपनी पूरे फैमिली के लिए कमा रहे होते हैं. दे आर एक्चुअली द अर्निंग मेंबर्स, एंड सडनली वन डे उनको पूरा विट्रस हैमरेज हो जाएगा, डिटैचमेंट हो जाएगा और वो पूरी तरह ब्लाइंड हो जाएंगे. एंड इमेजिन द बर्डन उनका पूरी फैमिली पर जो आएगा. तो ऐसे लोगों को अगर आप प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं ना, और क्या होगा कि व्हेन यू विल सी रेटिना इन योर क्लिनिक ना, अगर इफ सी आईज सी व्हाट द माइंड नोज, जब आप 100 नॉर्मल रेटिना देखेंगे तो आप एबनॉर्मल को पकड़ लेंगे. जब और किसी का आप एबनॉर्मल रेटिना जब देख कर जब उसको बोलोगे ना कि क्या आपको डायबिटीज़ है क्या 10 साल से, तो वो समझेगा यार क्या है, बिल्कुल ये तो ज्योतिषी है, इनको कैसे पता चल गया. या आप जब उसका रेटिना देख के बोलोगे ना कि आपका बीपी नहीं कंट्रोल रखते हो, तो बोलेगा अरे यार ये इनको कैसे पता चल गया. तो इट्स लाइक जब आप रेटिना को देखोगे ना, तो आपको पूरी उसकी डिस्क को पेल देख के जब आप बोलोगे कि आपको तो डायबिटीज, आप शुगर कंट्रोल नहीं रखते हो, आपको बीपी है, तो वो समझेगा कि यार ये तो बिल्कुल ज्योतिषी है, इनको सब कैसे पता है मेरे बारे में, है ना. तो वो एक एप्रिसिएशन जो आएगा. सर आई हैड वन पेशेंट हु इज डायबिटिक फॉर द लास्ट 45 years, परफेक्ट रेटिना, कुछ भी नहीं हुआ है उसको. आई हैव वन फ्रेंड ऑफ माइन हु डज नॉट हैव एनी ऑफ द सोफिस्टिकेटेड मशीन in his clinic. What he has done, he dilates the eye and हमारे ट्रायल फ्रेम में जो +18 +20 रहता है उसको रख कर he looks at it. Wonderful, wonderful. If you have a, आप बोलते हैं जुगाड़. तो अगर आपको कभी बस रेटिना देखना, थोड़ा सा सीखना, आप एनी टाइम यू कैन कम ओवर टू माई क्लिनिक. 20D लेंस एंड विथ योर स्मार्टफोन, है ना. It requires little practice of using 20D with your left hand, and it just requires that distance जो थोड़ा सा maintain करना पड़ता है, और जो एक reflection आता है उस reflection के को avoid करते हुए उसके through देखने की एक practice लगती है. और अगर उससे तो आप स्मार्टफोन से आप रेटिना को, आप खुद का रेटिना भी देख सकते हैं. Right. अगर आप अपनी एक आंख डायलेट करो, आप मिरर के सामने खड़े हो जाए, आप खुद के रेटिना को भी देख सकते हैं with your smartphone and a 20D lens. Sir, please one more question. सर हाँ बोलिए. प्लीज, मान लो किसी पेशेंट को डायबिटीज भी और हाइपरटेंशन भी है. यस सर. और डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो रेटिनोपैथी रहती है उसमें मेन डिफरेंस कैसे पता चलेगा, क्योंकि माइनर डिफरेंस रहता है. सर यस सर, बोथ दे आर सिमिलर. सर विल टेल मोर देन मी, बट दे आर सिमिलर. बट सो उनको पूछेंगे कि हाउ मेनी ईयर्स यू हैव डायबिटिक, विच इज़ कंट्रोल, विच इज़ अनकंट्रोल, तो उससे मालूम पड़ जाता है दिस इज़ व्हाट इट विल बी. बट मोर और लेस दे मिमिक, बट देर आर फ्यू, आप डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, उसको बोलते हैं फ्लेम शेप हेमरेजेस, हाइपरटेंसिव रेटिनो. मान लो सर किसी पेशेंट को 10 साल से डायबिटीज भी और हाइपरटेंसिव भी है. हाँ तो दोनों उसको कंबाइंड रेटिनोपैथी भी हो सकती है. दोनों हो सकती है. और इंसुलिन भी ले रहा है मान लो पेशेंट, तो आपने को कैसे पता चलेगा कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी? डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव, ये कंबाइंड पिक्चर भी हो सकता है ना. लेकिन अगर डायबिटिक है पेशेंट तो यू शुड एयर ऑन द साइड ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, बिकॉज डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अ वेरी साइट थ्रेटनिंग डिसीज. इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट. पर सर अपन परफेक्ट कैसे बोलेंगे कि फंडस में हाँ आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी ही है? नहीं, तो आप उसको कंबाइंड लेबल कर सकते हैं. कंबाइंड लेवल. सर, और टू अंडरस्टैंड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन
you should have knowledge, even glaucoma, how the blood circulates in our body, how the cholesterol works, how our arteries and veins are protecting our organs. Sir, you should learn more about it. And then the whole outlook will change. Or you will be able to make out this is it. Okay? Thank you very much. Thank you. Sanjay. Sanjay, one thing. Sir. Will you encourage every optometrist to use Amsler grid charts in his routine, Sir. just like the vision taking and other? Sir, we should have everything ready in our clinic. Yesterday we went to Mukul's clinic. He had a patient, so I went there to examine. So with minimal things, hopefully we justified the examination, Mukul. Yeah, so with minimal instruments, minimal requirements, so that's how our agar current nahi hai, none of the machines are working, patient is there, we have to examine. So these are all very simple things but important. Thank you very much. हमारे बीच डॉक्टर उर्वी चौधरी मैम भी आ चुकी हैं, हम स्वागत करते हैं उनका. Thank you. Hello. Thank you so much, Sanjay sir, for such an informative session. Mahi, do you know how many people have low vision in India? Tell me something about it. According to a study published in June 2023 in BMC Ophthalmology, around 33.8% males and 40% females suffer from vision impairment in India. Most of them are left undiagnosed or untreated due to lack of low vision practice. So, what are the basics of low vision practice? This is what our next speaker is going to talk about. Our honorable guest and speaker, Optum Ajit Limai sir, who is consultant optometrist at Limai Eye Clinic and Hospital Sangli since 1987, associate professor and head of optometry department in BVDUMC and Hospital Sangli, manufacturer of optical low vision aids, his screen. He also served as principal, College of Optometry Miraj, program advisory committee member, YCMOU Nasik, executive committee member, Contact Lens Society of India, joint secretary, Indian Optometric Association. He conducted national conferences for low vision aids. I would like to invite Ajit Limai sir to shed light on the ABC of low vision practice. Ajit sir. Hello. Can I request you to please stand up? Bore हो गए आप बैठे बैठे ना? You can stretch, turn right, turn left, move ahead. कोई इसमें आदत नहीं. Please have a seat. Thank you so much. Okay. Generally, it is very difficult to speak as the second speaker when the first speaker has dazzled people with the knowledge. Okay. And with Sanjay's narrative, एक थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट है कि अब मेरा कैसा होगा, ठीक है? तो till the time you are having a smile on your face, I would like to take half a minute of yours and take selfies with you right now on my stage so that we can start. Can you please wave?
Thank you so much. मेरा स्पीच देने के लिए I was told that it would be 11:55 and it would be handed over. So I wrote good morning, now it is good afternoon. And the time allotted to me is 40 minutes, but I'll finish off in 30 minutes. So don't worry. I'm an optometrist just like you all, and I'm sincerely thrilled to be here in the cleanest city of India. I also wish to congratulate the organizing team, especially our president, secretary, and team. क्या बोलते हैं? IDO, है ना? IDO. And Ratnaparki sir, thank you for sharing the congregation here. What I feel is every participant here has come here with that quest to understand something, to gain some knowledge so that they can start different things at their own clinic, practice so many more things, and do better things. You may foster new friendships, and only thing I wish to promise you now is that after attending today's session, one thing you can definitely do is that start low vision clinic from tomorrow. Okay? So that's my promise. To cut short from my elaborate talk, I'm going to cut few things which probably are not required. So I'll directly go from here to find out what is the path of new learning. This is probably anyone here practices low vision right now? Okay, there are few hands who have raised. Anybody who does not know how to start? Anyone who does not know, मैं आगे जाके क्या करूं अगर मुझे लो विजन एड किसी को प्रिस्क्राइब करना है, नहीं मालूम मुझे. Can you raise hands? That's fine. It's, you know, it's difficult to raise hand when you want to say no. So, okay. When you wish to start learning, there is a small difficulty hill. You start learning few things, और वो एक मज़ा है उसमें. With a small hill, आपको एक knowledge मिल जाता है, and then you are in a comfort zone. आपको कुछ मिलता है, you start practicing. लेकिन उसके बाद में और एक difficulty हो जाती है. With that extra gain, आपके पास और ज़्यादा difficult patient आने लगते हैं. तो अगर आपने उनको कहीं और भेजना है, he has come with a high hope, आप उसको ना नहीं कह सकते, and then you may probably want to learn more, and that, my friend, is more difficult. That is a very uphill task. उसमें bumps है, difficulties है, you start doing something and you fail, but at the end of that, there is an ocean of happiness, professional achievements, and you will gain so many things. So let us now begin our journey. I'll just enumerate what you require to do this. Okay? Number one is desire to learn new things. I think that is why we are here. Otherwise, Sunday के दिन कौन मुश्किल में पड़ेगा और यहाँ आएगा. Along with that, you have to read more.
ponder. सिर्फ सुनने में एक बार बहुत एक चकाचौंध जगह पे बैठ के सुनने में ऐसा लगता है कि अरे हाँ ये तो कर सकते हैं, but it is not like that. You have to read. Invest your time in reading few things and pondering over it so that you have mastered. You have to write down notes like you were in school. Write your own protocols so that you do not miss so many things. Equip yourself. जो है मेरे पास उसे सब बन जाएगा ऐसा थोड़ी है, नहीं बनेगा. You have to equip yourself. You have to invest wisely so that you gain more things with little investment. Once you have done that, show off your identity. जैसे कि नेम बैज हो, आपके साइन बोर्ड पे लिखा हो लो विजन नीड स्पेशलिस्ट. आपके अचीवमेंट्स है, जैसे कि अभी एक प्लाक मिला है मुझे, तो आई प्राउडली गो एंड शो दैट टू माय पेशेंट्स कि मैं इंदौर में जाके भी देखो मुझे कहाँ कहाँ से बुलावे आते हैं, नो. सो यू हैव टू शो ऑफ कि हमें कुछ मिला है. आप एडवोकेट के पास गए कहीं कोई काम की वजह से? उनके ऑफिस में देखो लाइब्रेरी सामने भरी पड़ी रहती है. क्या आप कभी शो ऑफ करते हैं? डू यू हैव लाइब्रेरी टू शो ऑफ इन योर ओन क्लिनिक्स? शो ऑफ, ओके, कि इतना मेरे पास है. डोंट हाइड. एक बंद कमरे में उसको ताला लगा के मत रखिए, जस्ट शो ऑफ. आप जितना फ्रेम्स, लेंसेस और उसका डिस्प्ले किसी ने एक गिफ्ट किया हुआ बाहर में चमक चमक करके लगाया, शो ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म. यूनिफॉर्म स्टाफ so that things become better. Now, having said that, let us go directly to low vision. WHO has defined low vision between 20/70 to 20/400 in the best possible correction, and visual field loss which is 20 degrees or less. And further to that, blindness is defined as visual acuity which is worse than 20/400, and visual field which is less than 10 degrees. But this is a WHO definition. Indian standard is little different, but how should it make a difference whether how you label it or not? A person who has difficulty with vision and it is not correctable is your patient for low vision. विजन उसकी 6/9 है और N6 के बजाय N8 पढ़ रहा है, and he wants to read N6. He is your patient for low vision. Patient's best corrected vision which is not satisfactory. That's all. उसमें कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. I'll tell you why. उसके आगे और ज़्यादा nomenclatures हैं, वो ज़्यादा difficulty पैदा करते हैं. Something called as total blindness, economic blindness, social blindness, professional blindness, educational blindness, practical blindness, partially sighted, legal blindness. कितने नाम है भाई? You don't need to go into that. You have to practice. When person does not have satisfactory vision with best possible correction, is the candidate for your low vision practice. Simple? Fantastic. I will also give details about two different things which are very essential. One is defined as disability and the other is defined as handicap. Okay? Handicap
is illness, injury or condition that makes it difficult for someone to do some things that others may do. Which means handicap is functional. And disability is long-term physical, mental, intellectual, sensory limitation, impairment, that is physical. So उसमें difference क्या हुआ? Let us keep those definition to the books. एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. आपने रास्ते पे ब्लाइंड को देखा होगा, हाथ में व्हाइट केन लिए हुए, ही इज गोइंग टू सम वर्क, राइट. कोई एक केन की वो काम कर रहा है, या टेलीफोन ऑपरेटर है, या जो भी है. He is not taking any aid. He is not being taken by someone. So he has lot of disability, but he has less handicap. और दूसरा वो है, जैसा कि संजय सर बता रहे थे, उसको डायबिटिक डिफ़िकल्टी है, उसके फंडस में गड़बड़ी हो गई, उसको कुछ दिखना में डिफ़िकल्टी, वो घर में बैठा है, मुझे ले चलो खाना खाने के लिए. He has less disability but more handicap. If you want to practice low vision, you have to absolutely make sure what is the level of difficulty, disability, and what is the level of handicap. इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है whether the patient has accepted his difficulty and whether the patient is able to overcome the difficulty. At that stage, he is the right candidate to accept new things, things which are more than a spectacle correction. नहीं तो पहले से वो क्या सोचता है, मुझे सर्जरी करवाओ, मुझे और कुछ दवा दे दो, you know, do something so that my vision becomes better. That kind of person is not a suitable candidate for giving low vision aids because he will not accept. Acceptance of the difficulty कि ये मुझे हुआ है, इसे और विजन इंप्रूव करने का कोई तरीका सर्जिकल नहीं है, and I need something else to enhance my abilities, is the right kind of person who can accept low vision aids easily. Okay. So what is the primary goal of that low vision person? Primary goal is able to read. Okay? Because the person is not able to read, लिखित जगत में ये बहुत ज़रूरी है, उसको चेक्स साइन करने हैं, कहीं पे साइन करना है, कुछ पढ़ना है. So the basic requirement is independent reading. And the simplest way to start practice is when the person has low grade of vision disability and high expectation. Okay? That's where you should start. Okay? From tomorrow. And then go on as it goes. I'll tell you. The reason is, वो आपके क्लिनिक में आ गए हैं, आपने उनको कुछ एड दे दिया, एक टेलीमाइक्रोस्कोप दे दिया, and the person is able to read. Reading inside your clinic and reading at the working place or at home is entirely difficult, because actual reading in a normal way requires so many more things, okay, like speed, fluency, comprehension and other things. इसका मतलब ये नहीं कि वो एक लाइन लेटर सिंगल लेटर पढ़ गया और आपने दे दिया. So
इनिशियल एक थोड़े थोड़े अलग अलग सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सो दैट आई कैन गो फॉरवर्ड एंड find out how we can start practicing. If we have understood all these, let us now classify low vision. You can classify that into mild, moderate, and severe, or very severe. And mild would be 6-9 parts to 618 parts. Moderate would be 618 parts to 660. Severe is 636 to 660, and very severe is less than 6/60. Okay? Grossly. ये बुक पिक्चर वाली डेफिनेशन नहीं है, ये प्रैक्टिस वाली डेफिनेशन है. ओके? ईजियर, स्लाइटली डिफिकल्ट, more difficult, and very difficult. Okay? So, between 6/9 to 6/18 are easier patients to handle. So let us label them as mild. For whatever reason. वो डायग्नोसिस वाली जो डिफ़िकल्टी है ना, वो हम संजय सर के पास भेज देते हैं. सर आप डायग्नोसिस करके भेज दो, बाकी का पैसे वाले का जो काम है वो हम कर लेते हैं. And with telemedicine, जस्ट थोड़ा एक डाइवर्ट कर रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट को. विथ टेलीमेडिसिन एंड ऑल द, ये कहाँ गया मेरा पागल वाला ये डिवाइस, यू कैन टेक पिक्चर एंड सेंड इट टू एनी डैम एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड कि भैया ये मैंने फोटोग्राफ निकाली है, इसका डायग्नोसिस क्या है बताओ. राइट? एज सिंपल एज दैट. आपने वो खुद एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है. I am not an expert in each and every field, so it's absolutely fine to ask some professional कि ये क्या है. Believe me, patient is happier when you take second opinion. आपकी condition इतनी अहम है, I'll take second opinion so that we both together are able to help you better. Patient appreciates that. Okay? And you can send a picture, pay professional fees, get print out and give it to the patient. आप खुद के क्लिनिक का एक फाइल बनाओ. ओके? रत्न पार्किट लो विजन एड सेंटर, एक फाइल बनाओ, उसमें एक पर्चा डाल दो. दिस इज द डायग्नोसिस, दिस इज द ओपिनियन बाय संजय सर, और मैंने उनको ये दे दिया है. इन्वेस्ट इन योर प्रैक्टिस. ओके, हमने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को डिफाइन किया. नाउ लेट अस फाइंड आउट इफ वी वांट टू create the best possible clinic, low vision clinic in our own setup. क्या क्या चाहिए हमें. Okay, I have just enumerated. मैंने उसकी स्लाइड नहीं बनाई, but you can write down. I can do that again. वो उसमें नहीं है, थोड़ा लेट चल गया था इसलिए वो मैंने थोड़ा बाजू में रख दिया. Okay. Okay, what are those? What you require is prismatic half eyes. What is that? +3 with 3 prism base in both eyes, 5 with 5 prism base in, 8 with 8 prism base in, something like that. So prismatic half eyes ready with you. उसको बनाते कैसे हैं? एक मुझे 5 with 5 प्रिज्म बनाना है चश्मे में. कैसे बनाते हैं? आप सब लोग चश्मा बेचते हो, है ना? डिसेंट्रेशन पता है? बस उसको डिसेंटर कर दो, प्रिज्म बन जाएगा उसमें. आप नहीं तो आप मुझे ऑर्डर कर दो, मैं उसको और एक 0 लगा के आपको भेज दूंगा. Okay, dispensing optics gives lot of money. अगर दूसरे सामने वाले को पता नहीं है ना, तो उससे बेहतर चीज़ हो ही नहीं सकती.
Okay. You require prismatic half eyes. You require full field microscopes in the tune of 2x to 12x. Okay. Now you can get those right by ordering online. You need few handheld magnifiers. Again, it could be from 2x to 5x. You need pocket magnifiers. I'll tell you, ये शुरू में मुझे भी डिफ़िकल्टी हुआ करती थी कि एक हैंडहेल्ड भी चाहिए, एक पॉकेट मैग्नीफायर भी चाहिए. Why? It works same, ना? No, it does not. Functionally, it may be giving same magnification, but ease of handling, and patient may want to hide it when he doesn't want to show. इसलिए वो पॉकेट मैग्नीफायर लेगा, हैंडहेल्ड मैग्नीफायर आपसे नहीं लेगा. ओके. सिमिलरली फॉर टेलीस्कोप्स, टेलीमाइक्रोस्कोप्स और बायोऑप्टिक्स, बहुत फैसिनेट हो जाते हैं हम कि हमने उनको ना एक दिस आई हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम माई ओन क्लिनिक. एक स्टारगार्ड्स का पेशेंट था, बच्चा, और आई वॉज वेरी हैप्पी विथ द टेलीस्कोप्स विच आई हैड प्रिस्क्राइब्ड इन द स्पेक्टाकल. ही वॉज एबल टू रीड एट हिज ओन स्कूल. तो मैंने वहाँ जाके उसके फ़ोटो निकाले. आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि कैसा मैंने फैंटास्टिकली डिस्पेंस किया. 6 महीने के बाद मैं वापस आया, उसके आई थिंक पेरेंट्स आए थे. तो मैंने बोला क्या वो अभी पढ़ रहा है? बोले नहीं. क्यों? तो एवरीबडी इज पॉइंटिंग फिंगर्स एट हिम. क्या ऐसा एक अपेंडेज लगा के स्कूल में जाएगा तो ही इज़ नॉट हैप्पी. The most difficult thing in that person's life is that it is not like spectacle and it looks different, and patients feel that it looks ugly. So you have to be very careful when you are prescribing a aid to that patient. Okay, just to go ahead, you require stand magnifiers. Patient easily accept those because you are hands free. There is a stand at the workplace, and this elderly patients who are working in the office, this is the most happiest person who will accept your stand magnifiers. Okay, because he is sitting at one place, there is a stand with magnification. He just puts whatever he wants to read or work behind and he is happy. So stand magnifiers, I feel, are very comfortable. Along with that, you should have illuminated magnifiers because extra illumination provides a lot of help. You can have handheld telescopes, spectacle mounted telescopes ready in your practice, binocular spectacle mounted telescopes, telemicroscopes which you use for near, bioptics, filters, again fitted and separate. There are different CCTV and other models which are present. Diagnostic charts like contrast sensitivity charts and single letter charts, charts which you can go nearer and find out. So all that you can enumerate, you can elaborate, but this is the list which I have made for you. And of course, with so many years of practice, I have collected many more, but there is no point in just telling you things right away, but smaller things which will start your practice with a kick. I think this should be enough. Again, my first question and first answer I'll repeat here. When should I start my low vision practice? And my answer is tomorrow. As you go, start with less difficult patients, mild low vision, that is disability,
and mild handicap. The main difficulty is to read small prints. You should do comprehensive eye examination and give extra ads without fear. Okay? Up to +4, आप कितने लोग हैं जो +3 और +4 एड कॉमनली देते हैं? +3 या +4 एड्स कॉमनली देते हैं? मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक उसमें से हिच बताता हूँ. आई ऑल्सो शेयर दैट विथ यू. Many people who for some difficulty prescribe less hypermetropic correction tend to prescribe high ads. ये एक common difficulty है. Hypermetropia gets refracted and prescribed less than what is required. डिओक्रोम करते हैं आप सब, है ना? डिओक्रोम करने के बावजूद लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ग्रीन बेटर है तो वैसे ही रखो, विदाउट रियलाइजिंग कि आप क्या कर रहे हो. एंड उसके बाद में पेशेंट बोलता है कि नहीं नहीं आपने जो एज के हिसाब से मुझे एडिशन दिया है इससे मुझे कंफर्ट नहीं है, दबा के और थोड़ा एडिशन दे दो, खत्म हो गई बात. कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन, best possible correction for whatever the working distance the patient requires, and then if the patient has difficulty, wisely prescribe high ad. Once you are adding some plus correction, how high can you go? कितना दोगे? Maximum what you can prescribe is up to +8 or +10, not in a bifocal of course, but separately, but not beyond that. Why? Because you cannot maintain binocularity. 10 centimeter के भी नज़दीक आ जाएगा. With whatever prism you give, the patient will not be comfortable, and you can give up to +20, right? But then it will not be a binocular thing. Uniocularly you can always prescribe. अब जबकि आपने उसको, this is how I practice, I'll come to that. My first prescription for the patient is, after explaining, give things for reading नज़दीक के लिए. एंड यू एक्सप्लेन कि आपको ये पकड़ के ना यहाँ तक रखना है एंड स्टार्ट रीडिंग. ओके? द डिफिकल्टी इज बिकॉज ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस द पेशेंट्स जनरली गो थोड़ा पास लेने के बजाय दूर रखते हैं एंड द फोकस गोज ऑफ एंड पेशेंट से आपके चश्मे से तो कुछ नहीं दिखता, ऑब्वियसली, क्योंकि वो दूर लेके जा रहे. देन यू हैव टू कंटिन्यूअसली टेल दैट पेशेंट दैट दिस इज द फिक्स्ड फोकस लेंथ, यहां पे रख के ही आपको पढ़ना है. सो डू यू थिंक दैट ही विल डू इट फॉर हिज लाइफ? सिंपल आंसर इज नो, इट्स नॉट कंफर्टेबल. लेकिन आपको यही देना है पहले, एक्सप्लेनिंग दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर योर सक्सेस. तो ये कैलकुलेट कैसे करना कि उसके आगे कब देना है? आई टेल यू. पेशेंट घर जाने के बाद में उसको बोलना कि फॉर 1 minute हाउ मेनी वर्ड्स ही कैन रीड इन अ मिनट. ठीक है? विदाउट डिफिकल्टी. अगर 1 मिनट में वो 8 शब्द पढ़ लेता है, आस्क हिम टू प्रैक्टिस so that the speed doubles. भले उसको 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीने लग जाए. He has to come back to you after the speed doubles. 8 के बजाय 16 शब्द वो पढ़ने लगेगा. I will not go into the details of why this is important.
then you can prescribe telemicroscope for reading. Okay, that is the best possible time when the patient will accept. ये telemicroscope से क्या हो जाएगा? Obviously his working distance will increase, but fields would restrict. So when he is taking closer, anyway his field restriction, आप यहाँ रख के ना दूसरा पढ़ ही नहीं सकते, तो he has indirectly got used to field restriction, and then he has advantage of taking it slightly away and read. एक बार वो पढ़ जाए ना, then you can increase to telemicroscopes, then you give telescope at home for a stationary position. You can prescribe telescope for stationary position right on day 1 if the patient is intelligent. ये कौन लेंगे? जो घर में बैठ के टीवी देखना चाहते हैं, रिटायर्ड पर्सन है, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी है, लेज़र दे के इंजेक्शन लगवा के सब कुछ करा के, अब दैट इज़ अ बर्नड आउट केस, एंड उनको घर जाके ना एटलीस्ट मैच देखनी है, वेरी सक्सेसफुल. आप उनको दे दो, वो जिंदगी भर आपका नाम लेंगे, मुझे मैच दिख रहा है, ही इज़ वेरी हैप्पी. एल्डरली पर्सन है, घर में ऐसा इमरजेंसी है नहीं, बट सक्सेसफुली देने का मतलब ये है कि ही इज एबल टू पास हिज टाइम इंडिपेंडेंटली. ही इज वेरी हैप्पी. उसको उनको दे दो, चश्मे में लगा के दे दो, या हैंड हेल्ड दे दो, स्टैंड वाला दे दो, स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये भी स्टेशनरी है, पकड़ के बैठना है या चश्मे में लगाना है, इट्स वेरी हैप्पी. उनको आप यूनिओक्युलर दे दो, बाइनोक्युलर दे दो, the persons are very happy and the success is instantaneous. उनको दे दो. अब उनको कैसे सिखाना कि how can that person walk? I have not gone to that details right now, but it's a technique by which you can teach a person. आपने कभी ब्लाइंड स्कूल में व्हाइट केन से कैसे चलते हैं ये देखा है? एनीवन हु हैज अंडरगॉन दैट ट्रेनिंग एंड व्हाट इट इज कॉल्ड एज? Okay, doesn't matter. You can always go right now to any blind school or National Association for the Blind who conducts all these kind of trainings. They are called as mobility training. Okay, and you can learn the technique of mobility yourself. It's not very difficult, but you should be able to help that patient better. तो उसके बाद वो टेलीस्कोप लेके घर में चलना भी सीखे. And I think there your initial success story should stop. There are a lot of further things which can happen, and there are a lot of easier things which you can prescribe or sell for a very high end price. But there is a difficulty. आजकल इलेक्ट्रॉनिक से कुछ भी आप उसको N36 भी नहीं दिखता हो, उसको N6 पढ़ने के लिए आप दे सकते हो with lot of electronic gadgets. But within few years patients do not accept and throw it away, और आपका नाम बदनाम होने लगता है कि ये महंगा कुछ देते हैं और उसका फ़ायदा होता नहीं. So my advice to you is start low, but guarantee that each and every case is successful. आराम से स्टेप बाय स्टेप करो. विदिन 4, 5, 7 years टाइम आपके जैसा सक्सेसफुल लो विजन प्रैक्टिशनर दुनिया में कोई नहीं होगा. ग्रेजुअली यू शुड स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप करो. बाद में आप अगले साल तो मुझे बुलाओगे ही बुलाओगे, तो अगले साल मैं एडवांस लो विजन टेक्निक्स बताऊंगा.
Okay, last point before I go to my quick presentation. मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं पता है सबको? यस और नो? मुझे भी नहीं पता था जब मैंने इसको प्रैक्टिस करना था, तो मुझे भी नहीं पता था. तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. दो चीज़ें बता रहा हूं मैं आपको. नंबर वन, पेशेंट को कितना मैग्निफिकेशन लगेगा. ओके, सिंपल रूल है. What patient has divided by what patient desires. ठीक है. विजन कितनी है पेशेंट की? 6/60 है. द बेस्ट करेक्टेड विजन इज विथ नॉर्मल 6/60 है. पेशेंट क्या पढ़ना चाहता है? 6/12. 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया? Thumb rule is patient will require 5x magnification. Simple है, right? What patient has divided by what he desires. 60, 6/60, 60 divided by 12. वो कर लो आप. That is the thumb rule. आगे पीछे होगा, कैसे होगा ये अगले साल वाली बात है. अभी के लिए ये काफ़ी है. You can do that, but this is 90% successful. Okay, 5 के बजाय 4 लगेगा, किसी को 6 लगेगा, जो भी है, but with this you should be able to do it. और दूसरी बात, सिंगल लेंस आपको देनी है चश्मे में, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इफ किसी ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है पेशेंट रिक्वायर्स 2.5x मैग्निफिकेशन, तो आप क्या दोगे? या 2x मैग्निफिकेशन, 3x मैग्निफिकेशन, चश्मे में कैसे दोगे उसको? 4 डायोप्टर्स, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डायोप्टर्स इज 1x. ओके, तो आप प्रिस्क्रिप्शन में जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो ना आपका, तो +10 नहीं लिखना. यू शुड राइट 2.5x मैग्निफिकेशन दिया है मैंने उसको. सामने वाला समझ जाता है कि ये बंदे को इसकी मालूमात है. ही अंडरस्टैंड्स व्हाट ही इज प्रिस्क्राइबिंग. इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैंने उसको +10 विथ 10 प्रिज्म बेस इन दिया है, आप ये कहो मैंने 2.5x मैग्निफिकेशन विथ प्रिज्म. प्रिज्म क्यों देते हैं नियर ऐड के लिए? नंबर 1 इज टू मेंटेन द बाइनोकुलरिटी. भारती का बंदा है तो वो तो करेक्ट आंसर देगा ही. मैंने भी तो क्रेडिट लेना चाहिए ना. और दूसरा, when the person takes it very close, you are tiring his medial rectus like hell. थक जाएगा वो. इसलिए to relieve that constant convergence, you relieve. ओके, तो आपने एक बार आप ट्राई कर लो, यू विल बी अमेज्ड. ओके, चश्मे के मतलब ऐसा हाफ आई जैसा देते हो ना, ऊपर से देखो पेशेंट इज लुकिंग स्ट्रेट और पढ़ रहा है यहाँ पे, बिकॉज द इमेज बिकॉज ऑफ योर प्रिस्क्राइब प्रिज्म इज फर्दर अवे. तो बहुत कंफर्टेबली उसको रख तो रहा है पास में, बट ही फील्स दैट इट इज क्वाइट फार फॉर हिज medial recti and he is able to read for a very long time. Okay, I think I should dazzle you with some of my photos. I have 7 minutes left out of 30 which I promised, so I'll use them and run quickly through this. All this, my
journey of making instruments, making my own low vision aids was because of difficulty that जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी कहीं पे मिलता नहीं था. So I started manufacturing my own low vision aids. Screens मिलते नहीं थे, तो I started manufacturing slit lamps and keratometers. करते करते ऐसा हो गया, right now I own one eye hospital. We have a posterior segment section. I own a LASIK machine. I have my own lens manufacturing factory. कर सकते हैं आप भी. It's not absolutely difficult. शाम को शायद एक आधा घंटे का वक्त है. I am going to मैंने एक और प्रेजेंटेशन तैयार किया है. For want of time, I will not do it now. How to own a Mercedes in 5 years. और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ विदिन 5 years. आज थर्ड है ना, थर्ड कॉन्फ्रेंस, 8th कॉन्फ्रेंस को जब मैं वापस आऊँगा तो एवरीबडी विल हैव देयर ओन मर्सिडीज. So let's quickly this is from where I have taken my slides. All of you have gone to Dubai. If not, next year please go. मैं brand ambassador नहीं हूँ. But the reason is to be able to see things beautifully, you require vision. And if not, you have to come to people like us for low vision evaluation. I have done this. Few things which I did not cover, I'll just cover shortly. Difficulty with charts is crowding and single letter acuity. Again, my request to team Indore Optometry is you can call me for a week's program. I'll stay here for 1 week and teach you details about this. I'm just pushing it forward, and all my slides you can click. Okay, everyone, whosoever wants, and contact me for any details. I wanted to cover these all, but for essential and initial practice, I thought I will not be able to. Okay. I'm sorry. पीछे कैसे लेते भैया? ये एक पॉइंट मैं इलेबोरेट करना चाहता हूँ. Unfortunately, all optometrists and all ophthalmologists who are anterior segment surgeons are tuned to see success, which is 99.99%. कैटरैक्ट है, सर्जरी कर दिया, 6/6 विजन. रिफ्रैक्शन है, अच्छा चश्मा दे दिया, 6/6 विजन. जब पेशेंट कहता है कि मुझे आपने कुछ भी करने से भी नहीं दिख रहा, then the consultant has to have a different mindset to go further. अगर वो नहीं है तो लो विजन एड प्रैक्टिस सक्सेसफुल नहीं होती है. You have to have a different mindset. Okay, these are the common conditions you should look for from birth to 19 years of age. The reason is, unless you know, you do not look for it. जैसा कि अभी संजय सर बता रहे थे, ग्लॉकोमा है और आपको ऐसे लगता है कि उसमें उसके
लिम्बस पे ज़्यादा ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं. अनलेस यू लुक फॉर, you may not see a neovascularization on iris. You have to look for it. वो सामने से दिखता नहीं unless you look for it. So the reason why I am enumerating more condition is that you should look for them so that you understand. This is why your services are important. All of us know that 70% of all our input is through eyes, right? So this is the most fear. Death के बाद में सबसे difficult चीज़ ये है कि blindness. एक important point था, family reaction. आपके यहाँ पे पेशेंट आएगा तो आप ध्यान रखना कि उनके साथ में कौन आ रहा है. वो पेशेंट निग्लेक्टेड है या केयर्ड फॉर है. आप एक एग्जांपल देता हूं, शायद इसमें नहीं है. यहां पे 60 इयर्स एंड अबव कितने लोग हैं? ओके, थैंक यू. बिटवीन नहीं, ये बताओ मुझे, यहाँ पे ऐसे लोग कौन हैं जिनके बच्चे 5 इयर्स टू 15 इयर्स है? उनके बच्चे 5 इयर्स टू 15 इयर्स है, राइट? अब मुझे ये बताओ, घर में आप क्लिनिक से घर जा रहे हो और आपको फ़ोन आता है, पापा पापा घर में आइसक्रीम लेके आओ. आता है? या कचौरी लेके आओ, पूरी, जो भी है. आप क्या पूछते हो? कौन सा लेके आओ बेटा? आइसक्रीम, है ना? आपने कभी ये सवाल आपके डैडी को किया, मम्मी को किया? क्या उनको पूछा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है? यू टेक देम फॉर ग्रांटेड. अरे वो तो खा ही लगे ना, उनको बहुत साल से मैंगो खा रहे, वो मैंगो ही खाते हैं. आपने कभी नहीं पूछा उनको कि आज क्या आपको डिफरेंट चाहिए? इट इज लाइक दैट. वंस दैट पर्सन लूजेस दैट आइडेंटिटी और आप बड़े हो जाते हो ना, तो यू टेक देम फॉर ग्रांटेड. लो विजन में ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है, दैट यू टेक देम फॉर ग्रांटेड, और उनके साथ बात नहीं करते. फिर बच्चे को होते, अरे आज कैसा हुआ, वो ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने उधर रास्ते पे ना वो देखा. आपने डैडी को कहा कभी, इतनी मज़ा आया आज मैंने ये करते वक्त? यू लूज दैट कॉन्टैक्ट, टच. तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है विच मैटर व्हेन यू आर डीलिंग with that person with low vision. Okay, it is not the condition of low vision alone, but it is this condition that make you a successful low vision consultant. जो मैंने अभी वक्त कम होने की वजह से ये सब चीज़ें आपके सामने इलैबोरेट करके नहीं बताई है. This is what I would love to talk on so that you become more and more complete as low vision consultant. I have exceeded by 2 minutes. Thank you so much.
Thank you so much, Ajit sir. Sudhanshu, my friend wants to get LASIK done. Can you suggest me what kind of LASIK surgery should I recommend? Mahi, there are various type of LASIK technologies which are available nowadays. So, according to the patient and individual's needs. So, let's see what our experts want to say about this. Dr. Urvija Chaudhary is a highly skilled and experienced cornea, cataract and refractive surgeon. She completed her MS in ophthalmology and specialized in cornea, cataract and refractive surgery. Dr. Urvija Chaudhary is a renowned expert in her field and is widely recognized for her commitment to providing exceptional patient care. As a cornea specialist, Dr. Urvija is an expert in treating corneal diseases such as keratoconus, corneal dystrophies, and corneal infections. She also performs advanced cataract surgeries, including phacoemulsification, femtosecond laser-assisted cataract surgery. Now, I would like to invite Dr. Urvija to tell us more about latest LASIK technologies. Ma'am. Good afternoon, everybody. Thank you, President Sir and Indore Divisional Optometry Association for having me with all of you. This is my first interaction with all of you, and I know it is lunchtime. I'm not going to take a lot of your time. Most of you are my seniors here, and what am I going to talk today? You are all aware about it. Still, I would like to highlight upon a few points. Ophthalmology has drastically grown in the last 10 to 15 years. We have all been seeing what we have been doing last 10 years, last 15 years. It has tremendously changed what we learned and now what we are doing now. It's completely changed. So many options have come, and most of the things that are available throughout the world are now available in India and also in Indore. So ophthalmology is growing drastically. There's a lot of opportunity, lot of growth prospects in this field. I would basically talk about our advances in cornea and refractive surgeries. So mainly the highlights will be the refractive surgeries, corneal transplant surgeries, the advances in the corneal transplants, and also the dry eye management because of more of computer vision syndrome and dry eye increasing nowadays. So the corneal ulcers that we treat nowadays, firstly could be treated only with medical management, medicines, empirical treatment was given, not much of culture sensitivity was available throughout. Now it is increasing. We can send for cultures. We have very pinpoint treatment for the ulcers. We have sterile ulcers. We have infective ulcers. We have autoimmune ulcers. Lot of patients and lot of options have also come to treat this kind of small thinnings and perforations. Like nowadays we have this tissue adhesives, which is just like 15 seconds treatment, and you can help the patient limit that ulcer. You do not need to directly go for corneal transplants and very high-end procedures and all those things. Then we can do small patch graft. We have nowadays amniotic membranes, tissue adhesives, and Tennant's grafting, conjunctival grafting, which can limit corneal transplant, which can prevent corneal transplants
And ultimately, we do have keratoplasty as an option for such patients. But in keratoplasty also, we have now lamellar keratoplasties. So if it is only the superficial part of the cornea which is affected, like in corneal dystrophies, degenerations, scars, keratoconus, in which there is a corneal thinning, you do not need to change a complete cornea. You can simply change the superficial or the upper side of the cornea, anterior stroma part of the cornea, and that is called as DALK, deep anterior lamellar keratoplasties, and this will prevent the rejection. This will give better quality of life for the patient, minimal use of the medications. Then we have endothelial keratoplasties for patients with only the endothelial dysfunctions, like some people present with pseudophakic bullous keratopathy. People have Fuchs dystrophy, in which there are genetic weaknesses in the endothelium of the cornea. So for such patients, if we just strip the endothelial part of the cornea and transplant it with the donor tissue, again this will improve the rejection, the medication requirement, and the overall quality of life. And the recovery is also very fast, and additional bonus to it is like you can help 2 people with just 1 donated eye. So there is a tremendous, this is a small video of I would like to share a video of endothelial keratoplasty. So this is a corneal button that we had harvested from the eye bank, and we use a small blade to make the initial cut. A knife is used to create the initial edge, the dissection into the stroma. The upper side of the tissue can be used for anterior lamellar keratoplasty, and the posterior part can be used for the endothelial keratoplasty. This is a manual technique we are doing with manual blade, but automated keratome or the automated blades are also available, which can give you these kind of graft, which are also available in the eye banks, and most of you are also aware about it. Eye banks provide you with the grafts nowadays. So here we are doing the stromal dissection. We are separating the anterior and the posterior layers. We try to be as posterior as possible, so we get the minimal thickness of the graft. जितना thickness कम होगा उतना अच्छा attachment होगा graft का endothelium से, और उतना ही उसका it will stick properly. So now the graft is removed after the dissection. We have marked the center of the graft so that we do not, while punching the graft, we do not get decentered and get irregular graft. So this we are punching with the trephine, the punch, and now we have got our donor tissue. We will separate both the layers, anterior layer and the posterior layer, just preserving the endothelium with a bit of viscoelastic so that we don't damage the endothelial cells much during the procedure. Now this is the patient of a pseudophakic bullous keratopathy. He had got an aggressive cataract surgery because of the hard cataract. So his endothelium was damaged. Now we are just creating, it takes very minimal time for an endothelial keratoplasty. Complete penetrating keratoplasty will take you about 1 hour, but this could be finished only in 20 minutes. Now we'll remove the damaged endothelium. We'll using a reverse hook, and we'll just scrape out the posterior part of the endothelium. We're trying to pull the endothelium out. This is called as Descemet's scoring. We are scoring the Descemet's membrane out of the tissue, and you can see very clearly the membrane peeling out of the cornea. Now this Descemet's and the endothelium combined. This is
pulled out of the tissue. Now we'll fill the anterior chamber with lot of viscoelastic. We have ample of space in the anterior chamber. We'll try to use pilocarpine to reduce the pupil size, and this is our graft. This is the endothelial graft. The anterior part of the tissue has been kept for the DALT surgery. It is kept endothelial side up so that we don't rub the endothelium, and it is a Busin glide that is being used. Now we are just clearing all the viscoelastic, all the visco in the chamber, because that viscoelastic, if it is left behind even minimal, that will not let the graft to attach to the stroma. Now with the microrhexis forceps, we are pulling the graft inside the anterior chamber. And very gently, you just now this suture is very important. If we don't place it before sticking the graft can anytime come out of that wound, because it's a large wound. It is around 3 millimeters wound. So we just secure the wound, and then we'll put the air inside. This air will give a tamponade and the graft will stick to the stroma. So now we'll just leave the patient like this for 5 minutes, and the graft will be nicely stuck within 2 hours. This is the post-operative result. Pre-op, the surgery after 1 month. And you can see how the thickness of the graft was hardly like 70 microns. This was a very ultra-thin graft, and the patient regained 6/12 vision unaided, improved slightly to 6/9 partial, 6/9 with little bit of refractive correction. So this is very rewarding surgery, very, very rewarding surgery. Doesn't take a lot of time, and patient's discomfort is also reduced to like 70-80%. With all, there is no sutures, no suture removal needs to be done. Rejection chances are also very, very minimal. Now we have patients with a lot of chemical injuries here, at least in MP. We see a lot of chemical injuries, tuna burns, and where patients just lose their vision, and these kind to this kind, where there is just light perception remaining, and we can't help them with any other keratoplasties. Any type of keratoplasty done in such patients will reject. Patient will again come back to the same state. So for such kind of patients nowadays, we are doing keratoprosthesis. These keratoprosthesis are again really rewarding. It's a boon to patients who cannot undergo any kind of surgeries and still getting 6/12 vision with these kind of prosthesis. This is like an artificial tissue, artificial plastic acrylic material, which is just grafted on the eye, and it stays and it gives a minimal field of vision so that at least his all day-to-day activities are not hampered. So we have things available for such damaged corneas also. Now I'd like to focus on my most beloved topic. Refractive surgery is my most beloved topic. I like to do a lot of refractive surgeries, and refractive surgery has also grown tremendously in last 15 years. Earlier it was only LASIK. Nowadays we have ICL now, and after that has come lenticule extraction. So in LASIK surgeries, we used to make a flap and do the excimer ablation. For high patients with, let's talk about it one by one. In LASIK, we use excimer lasers, which are very short wavelength ultraviolet radiations which are used, and they polish the surface of the stroma. We create a flap, they polish the surface and create a different curvature to bring down the power. This can be used for minus, this can be used for plus, hypermetropia, myopia, astigmatism, and everything. But there is a limitation to it. It is very, very precise surgery. People get 6/6 vision. Sometimes people even get 6/5 supervision also. This is that accurate, that fine surgery. But there is a limitation, which is that it cannot correct power beyond 10 to 12 diopters. Initially, LASIK could be done with blade. This is a small surgery, initially very old surgery. When blade surgeries were introduced for LASIK, we used to use a microkeratome, an automated blade which was used for LASIK. So initially we used to mark the cornea. Nowadays we don't need to do all that. So this is a microkeratome blade. It is a motor blade with a defined thickness,
and it will just give a very fine cut on the superficial part of the stroma. You lift the flap, you dry the surface, and the excimer ablation is done. So this is the excimer firing going on, and it will create a plane surface. It will reduce the curvature, flatten the curvature for myopia, and this laser firing will done only in the periphery. If it is a hypermetropia. This is central ablation done, and it is done, over. You just put the flap back. And patient has a 6/6 vision in 4 hours. The very next day he has a 6/6 vision, which he never imagined, when he never faced. Now came an advance in blade surgeries where we faced little complications with the blade because it was not guarded. With different corneal keratometries, it used to give us sometimes complications on the results that we did not want. So to become more safe came the femtosecond laser. So here, the flap that was created with the blade is also created with a femtosecond laser. It will give us such a precise cut. If you want 100 microns, it will be 100 microns. If you want 95 microns, it will be 95 microns. Like micron precision is given with the femtosecond. So there are no chances of flap cutting, buttonhole, wear and tear that can sometimes happen with the blade surgeries. If your blade gets stuck, if you get very deep with the blade, if you get very superficial blade, nothing like that. You get 100, you want 100, you will get 100. So I would like to share a video of femtosecond LASIK. So this is the most commonly performed LASIK surgery nowadays. People prefer getting a femtosecond laser rather than blade surgery. Almost like 80% people would. Can you play this video from there? So here the femtosecond laser is used to create the flap. There will be an applanation cone, a different machine altogether. It will applanate the cone, it will press the corneal surface, it will create a very smooth cut, and you just have to lift the flap, and the rest procedure is same like we did with the blade surgery. The excimer ablation is done similarly. All the planning program is done. Only the safety part is slightly more than with the blade surgeries. So it's a very pain-free surgery. Patient doesn't feel anything during the whole process, not during the diagnosis, not during the procedure. And after 3-4 hours, he's as comfortable as he was before the surgery. And there is a quick restoration of the eyesight even by the next day. But sometimes some patients do feel a bit of dryness. Some people can have a little bit of glare. That is just one side effect of this surgery, which we have to counsel the patient before, that you might have a little bit of glare and dry eyes, which get recovered in another 3 to 6 months. So just have to reassure the patient in that way. Now, for patients who have a very high power, like even 15, 20 diopters of myopia or high hypermetropic patients, they can't get surgery because LASIK has a limitation. It can't just burn off your cornea to any extent. So you have to sometime limit. You can't. So such patients do very well with phakic intraocular lenses. These are made by ICL Star Company. One IPCL is there, which is an Indian company. Both of them do very well. We can do high cylinders also, high hyperopia also. We have done about 8 diopters of hypia and about 22 diopters of myopia corrected with phakic IOLs. And people outside have even done till 28 diopters of myopia has been corrected with this. So earlier it was started with anterior chamber lens, then came the iris fixated lens, and what we do nowadays is the posterior chamber lens. This lens is implanted in the sulcus just above your natural crystalline lens. So the depth of the cornea, the anterior chamber depth needs to be 2.8 millimeters minimum. Only then you can perform this surgery, which most of the cases usually have. Myopia patients usually have a good anterior chamber depth. They should have a good endothelial count,
anterior chamber angles need to be evaluated before, because it reduces the angles. It is occupying a bit of space in the anterior chamber. So sometimes crowding of the angles is seen. So this should be checked prior, that they have a good endothelial count, good anterior chamber depth, and angles are properly at least more than 33 degrees opening should be there. The advantage is that it is a reversible procedure, unlike LASIK. Once LASIK is done, it's done. But ICL, it can be reversed. If the patient is facing any kind of issue, any kind of discomfort, it can next day be explanted out of the eye and you're back to your normal original state. People used to have chances of cataract formation, glaucoma formation with the phakic intraocular lens prior, but now the newer models have upgraded, they have refined their designs to an extent that we have not been seeing any glaucomas and cataract formation nowadays with the latest available phakic intraocular lenses. So these are also very, very rewarding, and people are doing very good with this. We can be very free, we don't have any stress while we advise this to the patient. The stress is for the doctor also, like when we are advising such kind of procedures, so expensive, patient is myopic, already the retina is little weak and power is so high, there are a lot of chances of complications and such, but these lenses are doing very, very well. Play the video, no, please. Sorry? That's there. In this it is there. They are not able to connect this. पेन ड्राइव आपके पास ही है ना? अलग से नहीं है वीडियो. They are trying to connect the video. Would you like to discuss something about whatever we have discussed till now? Anything? Anybody wants to know about LASIK or corneal surgeries or anything? हाँ जी सर. हाई मायोपिया में सर एक रेटिनल डिटैचमेंट का चांस तो हमेशा रहते ही है ना, whenever. I'm sorry? हाँ, any kind of intraocular surgery if we go, even LASIK also, we have to evaluate the retina completely. Any retinal holes, lattice degeneration if we see, we need to laser barrage it first and then only we go for surgery, even LASIK, because LASIK also when we do, we apply little bit pressure, a lot pressure. So that sudden increase and decrease in the pressure sometimes can lead to retinal tear if there is a prior existing retinal degeneration or thinning. So retina evaluation is most important. And high myopia are very prone for all this. So there is a chance of retinal detachment, of course. Very, yes. Play कर दीजिए.
So this is a ICL surgery, the intraocular, phakic intraocular lens that we implant in the eye. A 2 millimeter incision is created, like done in a cataract surgery, same way. This is a very, very fragile lens. It needs to be very gently handled. This is the ICL lens. This is how the central is the optic zone. This is the haptic. There are central and the peripheral holes which help in the aqueous outflow. तो ग्लोकोमा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि कहीं भी आपका एक्वस फ्लो इंटरप्ट नहीं हो रहा है. सेंट्रल पेरिफेरी सब जगह जो माइनर होल्स हैं वो आपकी ऑप्टिकल क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं एंड इट ओनली एड्स इन द एक्वस फ्लो. सो मिनिमल चांसेस ऑफ ग्लोकोमा. वी आर पुलिंग द लेंस टिल द वेरी एज ऑफ द cartridge. Now we inject the lens. Now the anterior part of the haptic we try to put directly behind the iris. We can do toric implants also. High cylinders can also be very easily done with this, and we just gently tuck it behind the iris and above the natural lens of the eye. So the measurement of the ICL is also very important. If we have taken a smaller lens as compared to the sulcus diameter, it will keep floating in the sulcus. It will rotate, and if we have a cylinder, then it will not give you good results. If we take a little higher side, a higher measurement, then it will create a volt. It will rise up like a mountain, and it will try to occlude the angles, or it might even touch the iris and the endothelium and cause endothelial damage or glaucoma. So the sizing measurement is also very important. Now we just clear off all the viscoelastic and the surgery is done. We have to monitor IOP the second day, the 7th day, and on all the visits we try to just monitor the IOP. Then we don't do it in cases like high myopia patients are also, they develop cataract very fast. So sometimes at very early stages also they have cataract formation. So those kind of patients might not do very well. So we can also advise early refractive exchange, clear lens exchange, and then can we implant a multifocal lens for such patients. So no, ICL will not be a good idea for them. Now, when we were talking about LASIK, nowadays Contura Vision LASIK is very much talked about. Contura Vision is just the name given by the Alcon brand. It is only a topo-guided treatment, topography-guided treatment. Like it will measure the anterior surface of the cornea. So there are many topographers nowadays which measure the anterior surface of the cornea. This measures 22,000 points on the surface, and according to the elevation and the depressions on the eye, like how it is now, there is a sea level. We talk about it is this much above the sea level, this much below the sea level. So cornea also works on the same principle. So there is a best fit sphere. It creates a basic sphere. And then it measures the elevations above and below it. And those elevations are detected by the topographer, and it will create an ablation profile accordingly. The power of the eye is not like throughout 3 or 4 or 4.5. It will be very, very variable according to the curvature. It will be 3, 3.1, 3.12, 2.9, like so much variation. This is just a theoretically I like to explain, but there are minor variations. So topography will take care of those higher order aberrations also, and that's why this is able to give you a 6/5 vision, a super vision, than what you don't get with your opticals, with your spectacles. And high myopia patients and all those which do not go above 6.9, 6.12, sometimes they do very well with ICL and LASIK surgeries, because suddenly the quality of vision improves so much, then they start reading even beyond what was their best corrected vision before the surgery. So that improves the quality of life also. It gives them a lot of boost. It increases their morale, confidence. They feel more independent. They are more able to do a lot of other activities which were their limitations. They can do very well in sports, in swimming, a lot of careers which were not an option for them. Like so many people with these exams,
government exams and all, they qualify because of these kind of surgeries nowadays. So that really helps them. So this Contoura vision, this will map so many points, 22,000 points on the surface of the eye. It will create an ablation profile according to the patient, and it will give a very nice vision. It will help you in patients who have a very early keratoconus because their cornea is irregular because of the keratoconus, or people who have had some prior injury, some corneal scar which has damaged the surface of the eye, or who have early degenerative changes or something which is hampering their vision. So ablation will remove that part of the cornea also. It will burn out that stroma, and it will create a very smooth profile. It will give a very customized treatment to that kind of a patient and increase the quality of vision. Sometimes after LASIK, even with the 6/6 vision, people are not happy. I have had 1 or 2 cases like that. They had undergone LASIK, but during the LASIK, due to a little decentration, or patient moved during the surgery, so the ablation, the laser that was being fired, now it fires at the wrong place. So it was hampering the vision. Although he was able to read 6s, but he was not happy. There were certain kind of distortions. So this Contoura vision helped in such kind of cases. So we could actually identify what the problem patient was facing. Why is that distortion? Why is there spreading of light, what he's facing? And that little bit, like 3 to 4 microns of treatment, just gave away all the difficulty which he was facing. Nowadays, after ICL, this is the most talked about surgery. We have heard SMILE. Nowadays, we are hearing about silk. Both of them are same. They are lenticule-based procedures in which, with a very small 3 millimeter incision, you go inside the eye, you take out a part of the stroma. This part of the stroma is again cut with a femtosecond laser. Femtosecond does the cutting part in the stroma. So it will cut a coin shape cutting is done, and it removes that, and it flattens the cornea, and thus reducing the myopia. So that is what it is. SMILE, silk, they are lenticule-based procedures. This is better in the sense it is flapless. There is no flap, so no chances of flap dislocation, flap distortion, no stria formation. Like after 10 years also, after trauma, some patients come with, people have come with a flap dislocation, although it can be replaced back and everything, but if it is torn away, what you can do? And in LASIK, you are doing so much of cutting also. You are cutting at least 300 to 330 degrees of cutting is there. A small hinge is left. So that cuts your corneal nerves, causing dry eyes. Why patient has dry eyes? Because we are cutting that part of the corneal nerves. So the cutting is reduced to 3 millimeter here. It will reduce the corneal nerve. It will not hamper the collagen of the cornea. So the cornea is basically more strong as it is compared to LASIK, because we are not damaging that much of the cornea here. So in that way, it is more safe and it is more rewarding. And the results are as good as LASIK. You get a 6/6 vision. The topo-guided treatment has not yet been introduced with lenticule procedures, but patients are getting good quality of vision, very satisfactory vision. The recovery is very fast. The time that they need to take care after the surgery, now the 3rd day they are going back to their office, they are doing all their work. By 3rd day, they are doing everything that they were doing before the surgery. There is no restrictions after the surgery. And it is very good for people who go for sports, contact sports, boxing, or other where the flap could have been a problem to them. So what I am talking about is the silk. How silk is different from SMILE. The most important point in this is the shape of the lenticule which is formed. So this is the cornea. This is a complete cornea. In SMILE and the other lenticule procedures, the shape of the lenticule, it is called lenticule because it is in a shape of a lens. So that's why a lenticule, but it is a corneal lenticule, the part of the stroma of the cornea that it is removing. So in other lenticule-based procedures, they remove in a plano-convex manner, the second photograph. The upper part is plane and they just remove the posterior convexity is given. But in the silk procedure, it is a biconvex shape. So biconvex shape will help in a lot of ways
because the number correction that is given in the other lenticule procedures, it is only given by the posterior convexity, but here it is divided in the anterior convexity also and the posterior convexity also. Now there are other additional advantages also of the silk procedure. First photograph is showing you the pulse duration. The green part is the pulse duration with the silk procedure, and the blue is with the pulse means the laser firing, the laser shot. Multiple laser shots are given. So the one shot that is given, it is of just 1 second, less than 1 second, 1 femtosecond. So that duration, the green part you see, it's very narrow, means it's a very quick pulse. It is given and ended. But with other lenticule procedures, because it is giving a broader spot, it is a multiple spots are given on the cornea, complete cornea, lot of spots are given, and that's why it will create a one cut is given by multiple spots. इतने spots दे दिए जाते हैं कि वो एक पूरा कट ही create कर देता है. तो जो दूसरे procedures हैं उसमें वो 3 micron का spot रहता है. Silk में वही चीज़ 1 micron की है, like 1/3. तो क्योंकि 1/3 का spot size है, short है, तो energy भी बहुत कम लगती है और speed भी fast हो जाती है, क्योंकि वो shot देने में time कम लगा and आपका energy requirement भी बहुत कम लगा. एंड क्योंकि वो 1 माइक्रोन के स्पॉट्स रहते हैं, आप बहुत उसको पास में देते हैं. तो पास में देने से, लाइक इन द सेकेंड फोटोग्राफ इफ़ यू कैन सी, द फर्स्ट वन इज़ द 1 माइक्रोन स्पॉट्स विच आर गिवन, तो बहुत पास में दिए हुए हैं थ्रू आउट द कॉर्नियल सर्फेस. एंड द सेकेंड फोटोग्राफ बिलो बड़े स्पॉट्स हैं लेकिन दूर दिए हुए. तो जो सेंटर उनके बीच का एरिया है वो नॉन कट एरिया है, वाइट एरिया कट एरिया है. तो आप जब डिसेक्ट करते हो, जब आप अंदर जाके, आई विल शो यू द प्रोसीजर, जब आप अंदर जाके डिसेक्ट करते हो तो यू फील द लिटिल रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको प्लेन तो मिला, एंट्री तो हुई, पर थोड़ा आपको टिश्यू कट भी करना है मैनुअली. तो थोड़ा वहाँ पे डिसेक्शन ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, फोर्स ज़्यादा लगता है, डिसेक्शन इतना स्मूथ नहीं होता है. थर्ड इज़ द एक्यूरेसी. इट इज़ बेसिकली शोइंग द एक्यूरेसी कि थोड़ा बहुत भी आई टिल्ट हुआ है, कंप्रेशन जो एब्लेशन हम करते हैं वो तिरछा हो गया है, मूवमेंट हो गई है, उसको भी वो काउंटर करता है कि थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस हुआ तो वो उसको ट्रीट कर सकता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोसीजर में. एंड थर्ड, द लास्ट इज़ द बाई कॉन्वेक्स शेप, विच इज़ द यूनिक पॉइंट ऑफ द सिल्क प्रोसीजर. दैट इज़ the thing that they have come up with is the biconvex shape, which is most important, जिसके कारण इसके सारे advantages हैं. तो ये हमने शेप की बात की. सिल्क का बाइकॉन्वेक्स शेप लेंटिक्यूल प्रोसीजर्स में प्लेनो, लेसिक में भी प्लेनो कॉन्वेक्स शेप ही बनता है. हम बेसिकली उसको डीपन ही करते हैं, उसका फ्लैटनिंग ही करते हैं. तो द शेप ऑफ द लेसिक इज़ ऑल्सो प्लेनो कॉन्वेक्स. बाइकॉन्वेक्स शेप में उसका एडवांटेज ये है कि एक तो वो कॉर्निया के, आप देख रहे होंगे ना, जो देर आर 2 डॉटेड लाइन्स अप एंड डाउन, तो वो एंटीरियर स्ट्रोमा है, पोस्टीरियर स्ट्रोमा है. तो जो हमारा आँखों का कॉर्निया होता है, जो कॉर्नियल नर्व्स होती है और जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं कॉर्निया के, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. केराटोकोनस में वो कोलाजन ही डैमेज होता है, जिसके कारण धीरे धीरे आईज थिन होने लग जाती है. तो कोलाजन इज़ व्हाट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द कॉर्निया, एंड द मैक्सिमम कोलाजन डेंसिटी इज़ इन द एंटीरियर पार्ट, मतलब ऊपरी लेयर में, ऊपर फर्स्ट हाफ में जो एंटीरियर स्ट्रोमा है, फर्स्ट 1/3 में बेसिकली ज़्यादा कोलाजन फाइबर्स होते हैं. तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्निया कम्स फ्रॉम द एंटीरियर 1/3 पार्ट, and the second posterior 2/3 does not have that much collagen and less number of corneal fibers. तो जो ये आपका बाइकॉन्वेक्स शेप है, इसमें पेरिफेरी में अगर जो अपन देखें, एंटीरियर तो ठीक है वो टच कर रहा है सेम पॉइंट पे, बट पेरिफेरी में जो देखें, जो साइड हाफ एरिया है, उसमें वो काफ़ी नीचे के लेयर में कटिंग दे रहा है. इसमें वो कटिंग ऊपर जा रही, तो इसमें कोलाजन ज़्यादा डैमेज होता है, कॉर्नियल नर्व ज़्यादा कट रही है, क्योंकि उसमें बाइकॉन्वेक्स शेप में आपने पेरिफेरी में ज़्यादा कटिंग नहीं करी है या डीपर लेवल पे कटिंग करी है, तो वो कुछ थोड़ा अमाउंट ऑफ कोलाजन कॉर्नियल नर्व्स को और प्रिवेंट करता है. तो जिससे आगे चल के स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्निया ज़्यादा अच्छी रहती है, आपका कॉर्नियल नर्व्स कम डैमेज होते तो ड्राइनेस कम रहती है. प्लस आपने जब ये पार्ट हटाया आँख से, यू रिमूव दिस लेंटिक्यूल आउट ऑफ द आई, तो वो दोनों एंटीरियर और पीछे का पार्ट दोनों एक दूसरे से जॉइन हो जाएगा, दोनों मिलेगा. तो क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों से अपन इक्वल अमाउंट हटाया है, तो वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में जाके उसमें एडजस्ट होता है.
इस वाले में क्योंकि आपने सीधा पोस्टीरियर से ही कॉन्वेक्सिटी हटाई है, ऊपर का तो प्लेन है, तो एंटीरियर पार्ट को काफ़ी नीचे जाके सेट होना पड़ता है कॉर्निया में, तो थोड़ा उसमें माइक्रो डिस्टॉर्शंस आने का, छोटे छोटे सल्स उसमें फोल्ड्स आने का चांस ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा क्वालिटी को हैम्पर करता है. तो दिस इज़ द एडवांटेज विद सिल्क दैट वी आर सीइंग नाउअडेज. लॉट ऑफ स्टडीज़ हैव बीन डन. ये एक सर्जरी का वीडियो है. दिस इज़ द एलिटा मशीन विच हैज़ गॉट द फेम्टोसेकंड लेज़र. इससे फ्लैप भी बनता है और लेंटिक्यूल भी बनता है. इट इज़ फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन. इसमें एक पेशेंट इंटरफेस लगता है, वो आँखों को पूरा मेजर करेगा, उसका डेप्थ असेस करेगा. इसका एक एडवांटेज ये भी है कि उसका सक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें सक्शन लॉस होता ही नहीं है. एक बार आपका सक्शन लॉस हो गया सर्जरी में तो यू आर गॉन, देन यू हैव टू पोस्टपोन द सर्जरी फॉर द डे. देयर इज़ नो सक्शन लॉस एट ऑल सीन विद दिस. अब वो पीआई ने कॉर्निया को फ्लैटन आउट कर दिया, उसको एप्लेनेट कर दिया, उसके बाद वो कटिंग देगा. इसमें आप सेंट्रेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो आँख का. यू हैव दैट ऑल measurements that can be changed later after the suction ring is placed. ये एंट्री एरिया है जहाँ से हम अंदर जाके कॉर्निया का लेंटिक्यूल रिमूव करेंगे. अब हम पहले ऊपर का पार्ट डिसेक्ट करेंगे, फिर नीचे का लेंटिक्यूल डिसेक्ट करेंगे. And this is a blunt spatula. It doesn't cut or anything. You just have to enter, make the space. ये anterior part, lenticule के ऊपर का part dissect हो गया. This video is from the initial stages when we were doing the surgery. Now it is much more refined. Same way आपने posterior side में जाके dissect कर दिया. फोर्सेप्स से आपने ये लेंटिक्यूल निकाल लिया, तो इससे आपका कॉर्निया फ्लैटन हो गया. नाउ वी जस्ट चेक कि वो पूरा बाहर आया है एंड इट इज़ डन. You don't see that there anything happened a day before. Eyes as white. Thank you everybody. Yes, please. मैम 40 इयर्स के बाद सर्जरी करवा सकता है, पर उसका हम प्रेसबायोपिक करेक्शन रिमूव नहीं कर सकते हैं. एडिशनल आएगा फिर? एडिशनल आएगा उसको, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका पूरा नंबर नहीं जाएगा, रिक्वायरमेंट एकदम कम हो जाएगी, बट पास के लिए तो उसको नंबर लगाना पड़ेगा. एंड कैटरैक्ट नहीं बनना चाहिए बेसिकली. 50-55 तक ऐसे भी नहीं आता है, तो यू कैन एटलीस्ट डू टिल 50 years of age. वी कैन स्टिल टेल द पेशेंट. थैंक यू मैम. जी सर. हाँ. फॉर दोस पेशेंट, यानी अगर उनको 0.25 का भी एरर अगर हुआ तो उनको निगलेक्ट कर देते हैं. तो उनके लिए सिल्क रहेगा, हो सकता है? नहीं, 0.25 के लिए तो हम पाइलोकार्पिन ड्रॉप दे देते हैं और उसका काम हो जाता है. 0.5 तक भी पाइलोकार्पिन से ही हो जाता है. मतलब बिना मतलब नहीं करना चाहिए. नहीं करना ही बेटर है. नहीं. ऑर्थो के लेंसेज भी तो हेल्प कर देते हैं ऐसे में थोड़ा. तो ऑर्थो के आप रात को लगा के जाओगे ना, एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ी पहन के जाओगे. ऑर्थो की तो आप रात को लगा के गए ना, आपने 6-8 घंटा रात को पहन लिया वहाँ पे. हाँ, हमने तो दिए हैं सर. मतलब पेशेंट को एडवाइस कर देते, फिर उसको अगर वो चांस लेना है तो वो ले सकता है.
पर 0.5 लेसिक से उतना तो नहीं जाना चाहिए, 0.5 के लिए सर्जरी तो नहीं, अवॉइड ही करना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन था कि एक पैकेमेट्री का एक वो रहता है, हाँ सर, है ना, 400 म्यू मिनिमम होना चाहिए, ऐसा पहले बोलते हैं। हाँ, 480 से 500 माइक्रॉन। क्या सिल्क के अंदर 350 या और उससे नीचे के लिए एडवाइजेबल है लेसिक उसके बाद? नहीं सर, जो क्राइटेरिया लेसिक के लिए है, सिल्क के लिए भी वही सारा क्राइटेरिया है, बस आप सेफ्टी ज़्यादा दे रहे हो पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव सेफ्टी भी इसमें ज़्यादा मिलती है, रिकवरी अच्छी हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, एंडोथेलियल अच्छा है सर, काफ़ी अच्छा है, मतलब फिर भी आप कुछ बताएंगे परसेंटेज बेस पे? 70 to 80% वर्क रियली वेल। ग्राफ्ट रिजेक्शन का चांस तो 10-12 साल बाद भी होता ही है, उतने साल से तो मैं कर नहीं रही हूँ, बट अच्छा है, लाइक 70-80% वर्क वेली। और नहीं भी हुआ तो आप सेकंड ग्राफ्टिंग कर सकते हो उनको, थर्ड ग्राफ्टिंग कर सकते हो, डीमेक कर सकते हो, डीमेक में और पतला लेंटिक्यूल जाता है तो रिजेक्शन का चांस एकदम ही कम हो जाता है। तो उसके लिए हेल्दी कॉर्निया की मतलब कोई एज लिमिट भी है क्या उसकी, जो डोनर्स से आए जो वो कॉर्निया की कुछ वो है क्या? नहीं, मतलब ऐसी कोई लिमिट नहीं है, एंडोथेलियल काउंट अच्छा होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड था कि आपने जो आईसीएल का बताया, हाँ सर, आईसीएल में एक क्वालिटी बताई, तो क्या अब कोई नीड नहीं रहेगी प्रोफिलेक्टिक कुछ ग्लाइकोमेटस कोई आइड्रोक्टोमी वगैरह की जाए या ऐसा? नहीं सर, अब ज़रूरत नहीं पड़ती करने की, वो सेंट्रल होल जब से आने लगे हैं आईसीएल में वो टोटली बंद कर दिया है प्रोफिलेक्टिक आइरेक्टोमी। नहीं, एक्चुअली जहाँ पर प्रोफिलेक्टिक, अभी पेशेंट इस चीज़ से बड़ा डर रहा है आईसीएल में है। अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना सर, हम नहीं करते हैं। ठीक, थैंक यू। हाँ सर, हाँ, आफ्टर मैरिज अगर कभी वो चेकअप कराने जाते हैं तो वो मालूम पड़ जाता है क्या डॉक्टर्स को चेकअप में कि मैंने लेसिक कराया हुआ है? डॉक्टर्स को मालूम पड़ जाता है, और वो हाँ, दे डोंट वांट टू रिवील इन देयर इन-लॉज कि हमने लेसिक कराया हुआ है, चश्मा उतारा हुआ है। तो वो देखो, डॉक्टर तो स्लिट लैम्प पे बैठ के देखेगा तो उसको दिखेगा, ठीक है। सिल्क में वही मार्क बहुत फेंट होता है, हो सकता है जिस डॉक्टर को नहीं पता हो कभी वो मिस कर जाए, दिखता है, पता चलता है, पर बहुत फेंट होता है तो इसलिए कभी मिस हो सकता है। सेकंड, हमको पेशेंट का जो भी है कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, सो इफ शी वांट्स कि उसको रखना है तो शी कैन टेक केयर, मतलब शी कैन डिस्कस विद द डॉक्टर ना कि दिस थिंग शुड नॉट बी रिवील्ड, इट्स अ पर्सनल दिस थिंग। बाकी दूसरे जो जनरल डॉक्टर्स हैं वो तो उसको डायग्नोस नहीं कर सकते ना? जनरल नहीं, विदाउट स्लिट लैम्प नहीं डायग्नोस, विदाउट स्लिट लैम्प नहीं कर सकते। हां, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम द अनमैरिड गर्ल्स, दोज हु आर वेयरिंग देयर ग्लासेस। और जो सर ये एग्जाम के लिए भी अप्लाई करते हैं वो भी पूछते हैं मैम पता तो नहीं चलेगा, पता तो नहीं चलेगा, यस। तो वहाँ पे तो बायो माइक्रोस्कोप से होता ही नहीं है, स्लिट लैम्प से नहीं करते, बट नाउ डेज दे हैव स्टार्टेड मेजरिंग एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ देख लेते, तो एक्सियल लेंथ तो मायोपिया वाले पेशेंट की बड़ी हुई रहेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक क्राइटेरिया सेट कर दिया उन्होंने, तो दैट पेशेंट शुड बी अवेयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिकॉज हाँ, नहीं नहीं, जब तक कांस्टेंट नहीं कराना, 24-25 तक भी आप ड्रैग कर सकते हो, हाई पावर हाई मायोपिया का बहुत बार 24, 25, 26 तक भी स्टेबल होता है, तो यू शुड वेट। Yes, what Mr. Subodh Agrawal asked just, the ladies, marriageable age ladies. One of the patient came to me with her daughter, age 5 or 6 years, I think less than that, and she was a myope of 7 to 8 diopters. I asked, anybody of you in the family is a myopic? Well, no. But her mother confidentially told me कि before marriage I had undergone the ICL, and I am not told. And in my practice, madam, generally for LASIK surgery I refer the patient, only those patients who are orthophoric and there is a difference of more than 4 diopters complaining of diplopia. Otherwise, in routinely I don't advise the LASIK. What is your opinion?
So it's an cosmetic procedure, optional procedure. There is nothing like should be done or not be done. Patient always an option कि आप glasses, contact lenses पहन सकते हो lifetime. Many girls they are coming to me myopic with their mother, है ना, भैया मैं शादी करना है बिटिया की. I advise them कि that time has gone, कि आप बच्चे चश्मा पहनती तो आपकी मैरिज नहीं होगी. Because education and awareness is increasing. सब लोग हमारे जैसे नहीं सोचते हैं और फ़र्क तो पड़ता है. एक ओवरऑल पेशेंट की पर्सनालिटी में भी फ़र्क पड़ जाता है. मतलब अगर हाई मायोपिया है 3-4 है तो मैं नहीं बोलती, पर अगर पेशेंट इज़ कमिंग विद 7-8 डायप्टर्स ऑफ मायोपिया तो मैं ज़रूर एडवाइस करती हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स इन लॉट ऑफ वेज. आपकी डिपेंडेंसी इतनी कम हो जाती है. आपका चश्मा टूट गया तो आपका 4 घंटा तो मतलब यू नो डूइंग नथिंग. कितना आपको हर जगह आप गॉगल्स बनाने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जाते हो. कितनी सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो. कॉस्मेटिकली आप थोड़ा सा फील करते हो. तो पेशेंट का पर्सनालिटी, उसका मॉरल बूस्टिंग तो बहुत होता है सर्जरी के बाद. और सेफ्टी आजकल पूरी तरह से ध्यान में रखी जाती है, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच उर्विजा चौधरी मैम. मैडम ने, मैम 2 मिनट प्लीज़. उर्विजा चौधरी मैम ने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाल के आज रिफ्रैक्टिव सर्जरी पर इतना ज्ञानप्रद जानकारी प्रदान की है. मैडम के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रगति जी को. कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें मैम का. ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रगति जी उर्विजा मैम का पुष्पगुच्छ स्वागत करेंगे. और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट रंजना रायखेरे जी को कि मैडम को स्मृति चिन्ह भेंट करें. ऑप्टोमेट्रिस्ट रंजना रायखेरे जी मैडम को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे. मुझे यहाँ पर एक जानकारी और आपको शेयर करना थी कि आज के कार्यक्रम के लिए जो पूरा आयोजन हम लोग भली भांति कर पा रहे हैं और पूरे दिन का आयोजन सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, उसमें हमारे ही वरिष्ठ ऑप्टोमेट्रिस्ट विजय गुप्ता सर का बड़ा अपूर्व सहयोग रहा है. तो एक बार उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे. ऑप्टोमेट्रिस्ट पीयूष गायकवाड़ जी. विजय गुप्ता सर प्लीज़ मंच पर आए. ऑप्टोमेट्रिस्ट पीयूष गायकवाड़ जी. पीयूष जी. अशोक भरोसे जी सर का स्मृति चिन्ह आइए. संतोष मालवीय जी पुष्प को स्वागत करेंगे और अशोक भरोसे जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे. आज के इस कार्यक्रम में ऑनरेबल चीफ गेस्ट के लिए हमने डॉक्टर अरुण भार्गव सर को आमंत्रित किया था, परंतु उनका कुछ आज बाहर विजिट होने की वजह से उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में रेटिना अस्पताल के डायरेक्टर आदरणीय चेतन जी खतुरिया को हमारे बीच उपस्थित हैं. मैं निवेदन कर रहा हूँ कृपया मंच पर आएँ और अनुरोध कर रहा हूँ ऑप्टोमेट्रिस्ट सुधीर चौरसिया जी से. ऑप्टोमेट्रिस्ट सुधीर चौरसिया जी. मोस्ट वेलकम चेतन सर प्लीज. थैंक यू मोस्ट. सुधीर जी आइए. और ऑप्टोमेट्रिस्ट मुकेश बिरला जी चेतन जी का कोई स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ रेटिना हॉस्पिटल. ये राम लक्ष्मण की जोड़ी इस मंच पर आज सुशोभित हो रही है.
थैंक यू सो मच चेतन जी। एक आवश्यक सूचना, एग्जीबिशन हॉल ट्यूलिप में एग्जीबिशन में लगभग आप लोग सब विजिट कर चुके होंगे। लंच का समय हम अब घोषित कर रहे हैं आज के सत्र का। 3:15 या 3:20 से अगला सत्र शुरू होगा। चूँकि हम इनाग्रेशन सेरेमनी में थोड़ा लेट हुए हैं तो सारा सत्र लेट चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा लंच का समय कम कर रहे हैं। एग्जीबिशन की विजिट आप लोग करेंगे। पत्रिका जिसका विमोचन करवाया था उसकी एक कॉपी का विमोचन हुआ और चूँकि समय की व्यस्तता और समय की अल्पता की वजह से पत्रिका का प्रकाशन अभी नहीं हो पाया है, तो पत्रिका अब तक विद्युत पहुँचाई जाएगी। जो एक कॉपी किसी के पास हो तो कृपया विवेक सर के पास भिजवा दें। अब हम सभी लंच के लिए चलते हैं और 3:20 तक लगभग सभी 3:20। एक और आवश्यक सूचना, एग्जीबिशन हॉल में एक कुछ यहाँ पर है, लंच के बाद गिफ्ट का है। ठीक है, 3:20 पर हम यहाँ पर मिलेंगे प्लीज़। रात का नाइट डिनर के लिए आप लोगों को सब सूचना पहुँच चुकी है। नाइट डिनर शाम को 7:30 बजे से इसी हॉल में रहेगा, उसके लिए भी आप सभी आमंत्रित हैं। थैंक यू सो मच। वो वीडियो रेडी हो गया क्या उनका? कैसे क्या? 3:20 पर एक गिफ्ट हैम्पर ड्रा भी है। कृपया 3:20 पर यहाँ पर एक स्पेशल सरप्राइज़ है, तो सभी लोग समय से पधारें, तो आपके लिए एक गिफ्ट आपका वेट कर रहा है।
All delegates, please come in the conference room. I request all the delegates to please be seated.
All the delegates, please come in the conference hall.
Hello. Kindly attention, please. Hello. Hello. आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थैंक यू. इंदौर डिविजनल ऑप्टोमेट्रिस्ट ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन एवं ऑप्टोमेट्री काउंसिल ऑफ इंडिया के संयुक्त संयोजन में आयोजित 3rd नेशनल ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस दृष्टि मंथन के इस सदन में आप सभी का भोजन अवकाश के बाद पुनः स्वागत करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं. आप सभी की उपस्थिति टीम इडोवा के लिए न सिर्फ गौरव का विषय है, बल्कि हम अभिभूत हैं आपके आगमन को, आपके सहयोग और आपकी अपेक्षाओं के लिए. आप सभी का हमेशा विश्वास रहा है टीम इडोवा में, और उस विश्वास को कायम रखने के लिए टीम इडोवा कृत संकल्पित है. सेकंड सेशन का अब शुभारंभ करें, चूँकि समय से हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं. सेकंड सेशन में अब हमारे आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट के रूप में इंदौर नगर ही नहीं, मध्य प्रदेश और भारत के नक्शे पर अपना नाम अंकित करने वाले सुविख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी अग्रवाल सर हमारे बीच पधारे हैं. हम उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं. और फिर बोलना पड़ेगा कि आपको क्या करना है. मोस्ट वेलकम सर. मैं सुबोध अग्रवाल सर से और खन्ना सर से और रत्नपाके सर के निवेदन करूंगा, सर को मंच पे 2 मिनट के लिए विराजमान करेंगे. आपका अभिनंदन स्वागत करें और सेकंड सेशन शुरू करेंगे. अजित लिम्बिया सर, आप भी पधारिए प्लीज. यस यस. जैसा मैंने कहा कि विराजमान है प्लीज. सही. जैसा मैंने कहा कि कभी भी किसी मिशन को शुरू करने के लिए 2 या 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है. पहला आपका संकल्प हो, दूसरा सहयोग हो और तीसरा विश्वास हो. जब भी हम संकल्प लेते हैं और कार्य को शुरुआत करने का जिम्मा हम ग्रहण करते हैं, किसी प्रकार का सहयोग, चाहे वो बीसीसी से बुकिंग करने का हो या किसी प्रकार का, जहाँ कुछ प्रकार का किसी प्रकार का. इसके बीच में उल्लेख करना चाहूँगा कि आज टीम इडोवा का ये 3rd नेशनल ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिस स्तर तक हम लेके पहुँचे हैं, इसका श्री गणेश का कीर्तिमान डॉक्टर ओपी अग्रवाल सर को जाता है. आप सभी को याद है, जैसे बताने की जरूरत नहीं है, कि इंदौर में ऑप्टोमेट्री संगठन का पहली CME कराने का कीर्तिमान ओपी अग्रवाल सर को है, जहाँ से हम संगठित हुए थे और कार्य शुरू किया था और आज इस लेवल तक पहुँचे हैं. हमेशा सर का सहयोग संगठन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तन मन धन से. आखिरी वाली लाइन पे तालियां बजा दो आप. सर का खूब संबल रहता है. थैंक यू सो मच सर. तो मैं टीम इडोवा के ऑप्टोमेट्रिस्ट कमलेश सेठिया जी से अनुरोध करूंगा कि सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें. ऑप्टोमेट्रिस्ट कमलेश सेठिया जी डॉक्टर ओपी अग्रवाल सर का सम्मान करेंगे. थैंक यू. कवि कुल शिरोमणि विराजमान है. हाँ, हमारे लिए एक और उपलब्धि है कि हमारा एक ऑप्टोमेट्रिस्ट, वैसे तो कई ऑप्टोम जिनके कई काम हैं, उनमें से एक ऑप्टोम जैसे जिन्होंने अच्छा काम ले लिया है. जिनका काम
बहुत ही पूजनीय हैं और प्रशंसनीय हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट शैलेंद्र चोखड़े सर से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर ओपी अग्रवाल सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अभी तो शैलेंद्र चोखड़े सर को भी सुनना है, पर रात में सुनेंगे ज़्यादा मजा आएगा, इसलिए अभी सर को रोक रखा। आप लोग सभी आइए सामने फ्रंट पे, आप फोटोग्राफर सामने सभी प्लीज, आप लोग सभी आइए। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ओपी अग्रवाल सर से, कृपया हमें अपना आशीर्वचन प्रदान करें और इसी के बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओपी सर का सम्मान करने का जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं मुझे सहभागी बनाया है, तो मैं ये कहूँगा, कुशलताएं माझी की सदा कश्ती पार करती है, विनम्रता ही व्यक्तित्व के रूह का श्रृंगार करती है, और समय के बजाय स्वयं को समर्पित कर देता है जब कोई महामानव, तो फिर सफलताएं स्वयं कतार में खड़ी उनका इंतजार करती है। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस सम्मान का पात्र बनाया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन जो कार्य आप लोग कर रहे हैं और जो सहयोग हम लोगों को आपसे प्राप्त होता है वो शायद अद्वितीय है। जिस समय मैंने खुद ने प्रैक्टिस चालू की थी उस समय मेरा एक ही ध्येय रहता था कि मेरे मरीज को जो चश्मे का नंबर दे रहा हूँ वो चश्मे का नंबर उसे ऐसा सूट करे कि वो मुझे याद करे। यदि मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे आगे पेशेंट और मेरे पास पेशेंट आए वो तभी आएंगे जब आप उसको प्रॉपर चश्मे का नंबर देंगे और वो चश्मा उस व्यक्ति को सूट कर जाएगा। नहीं तो आपके पास पेशेंट ऑपरेशन के लिए कभी नहीं आने वाला है। 10 में से सिर्फ एक मरीज है जो आपके पास ऑपरेशन कराएगा, बाकी 9 चश्मे का नंबर लेके जाएंगे, दूसरी चीज़ों के लिए आएंगे। वो समय था जब मरीज कम थे, हम खुद कर सकते थे। उस समय ऑप्टोमेट्रिस्ट भी कम हुआ करते थे। मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, और बहुत कम लोगों के पास ऑप्टोमेट्रिस्ट, स्पेशली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास हुआ करते थे। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो एक रोल है, वो रोल ऑप्टोमेट्रिस्ट को इस रूप में समझना चाहिए कि यदि वो डेडिकेटेडली और प्रॉपर काम कर रहे हैं तो उसमें किस किस का भला हो रहा है या किसके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला तो उस व्यक्ति के लिए, खुद के लिए, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट उस विधा में, वो भले ही कॉन्टैक्ट लेंस के लिए काम कर रहे हैं, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस के लिए काम कर रहे हैं, एम्ब्लायोपैथ थेरेपी के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ चश्मे का नंबर निकाल रहे हैं, या हम कोई ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 0.5 प्लस माइनस कम ज़्यादा देना, हाँ ठीक है, ये थोड़ा चल जाएगा यार। अल्टीमेटली वो जब चश्मा पेशेंट पहनता है उसके चेहरे पे क्या मुस्कान आ रही है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा समय था जब हम चश्मे का नंबर खुद निकालते थे। शुरू के 10 साल तक मैंने अपने सभी मरीजों के चश्मे के नंबर निकाले हैं, और मैं अपनी प्रैक्टिस का जो मुझे फ़ायदा मिला, मैं सिर्फ उसी एक चीज़ को देता हूँ कि मेरा हर पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब आपके अलावा मेरे को किसी का चश्मा नहीं सूट करता। तो वो चश्मे का नंबर देना और उस चश्मे के नंबर को चेक करना कि वो सही बना है कि नहीं बना है, और उसके बाद उस पेशेंट की फिटिंग चेक करना है कि वो चश्मा सही तरीके से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। मैं हर प्रिस्बायोपिक करेक्शन को आज भी, जो फर्स्ट टाइम आता है 40 इयर्स में, प्रोग्रेसिव बनाना है, बायफोकल बनाना है, चश्मा बना के लगाना नहीं है, मेरे पास आना है, मैं समझाऊंगा कैसे लगाना है, उसके बाद आपको चश्मा लगाना है। बिकॉज
आप खुद भी देख लेना। आप, मैं सब ऑप्टोमेट्रिस्ट को ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और ये आपको समझाइश भी दे रहा हूँ और ये मेरा एडवाइस भी है कि आप उस चश्मे को लगा के उसको जब तक चलाएंगे नहीं, तब तक समझाएंगे नहीं कि कैसे देखना है, कैसे टीवी देखना है, कैसे सीढ़ी उतरना चढ़ना है, तब तक आपका काम अधूरा है। हमारा काम सिर्फ चश्मा बनाना नहीं है, मेरा काम सिर्फ चश्मे का नंबर देना नहीं है। आज मैं चश्मे का नंबर नहीं निकालता हूँ, पर मेरे ऑप्टोमेट्रिस्ट जितने भी हैं सबको मालूम है कि मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ। बिकॉज आपके 90% पेशेंट्स तभी खुश होंगे जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं। और आप खुद देखते हैं कि आज चश्मे की कीमत कितनी हो गई है। आज सब चश्मे, हर व्यक्ति बहुत अच्छी फ्रेम खरीदता है, बहुत एडवांस प्रोग्रेसिव बायफोकल बनवाता है। आज 10,000, 5,000, 8,000, 20,000 का चश्मा बनवाता है और उसमें यदि मैंने गलती की है, सही नंबर नहीं दिया है, that patient will never be happy and that patient will never come to you. तो हमारा काम यदि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, कहीं गलती हो रही है तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये 0.5 ज़्यादा या कम बन गया है या सिलेंडर में एक्सिस कम ज़्यादा हो गई है, हमें बहुत थोड़ा सा नुकसान होगा, बट दैट विल इंक्रीज अवर रेपुटेशन. एंड ऑल ऑप्टोमेट्रिस्ट फ्रेंड्स आर ब्रिज बिटवीन पेशेंट्स एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑल्सो, बिकॉज जो काम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं कर सकता और एक्चुअली जो काम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को नहीं करना चाहिए, मैंने शुरू के 10 साल खुद चश्मे का नंबर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए. दैट इज़ नॉट माई जॉब. उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एक प्रकार से. तो यू पीपल आर वेरी मच ब्रिज बिटवीन पेशेंट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. आप आज इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, अब OCT कर रहे हैं, आयल मास्टर कर रहे हैं. आयल मास्टर यदि हम कर रहे हैं और प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि मैंने जो कैटरेक्ट सर्जरी करी है उस कैटरेक्ट सर्जरी में जो डिफरेंस आ रहा है, यदि मेरे ऑप्टोमेट्रिस्ट ने प्रॉपर उसका बायोमेट्री नहीं करी है या उसका चश्मे का नंबर बराबर नहीं चेक किया और मैं लेसिक कर रहा हूँ और फेमटो लेसिक कर रहा हूँ, इतनी महंगी महंगी सर्जरी कर रहा हूँ, वहाँ मुझे परेशानी आना चालू हो जाएगी एंड दैट पेशेंट विल नॉट बी हैप्पी. सो यू ऑल, स्पेशली इन आई केयर, very important step, and you all are doing very good job. Rest everything is fine. I am thankful to all of you. I am dedicated with the whole of my family in field of ophthalmology. I have completed 32 years of my practice as an ophthalmologist. My elder son is retina specialist. He is MS gold medalist and he did his retina fellowship from Narayan Netralaya, Bangalore. My daughter-in-law is DNB gold medalist. She is national gold medalist in DNB. She is actually looking after all myopia control, refractive surgery, keratoconus, dry eye diagnostic and therapeutics, as well as how to control myopia. That is very important nowadays, because if we can control myopia, if patient is having -3 diopter at the age of 10 years and at the age of 20 years, if we can prevent that 2 or 3 diopter of increase in negative power, at least we can do refractive surgery or different procedures if will reduce myopia progression. So there are lot many things now available and that is very important to do it. My younger son also completed MS ophthalmology in August, and he is doing cornea fellowship from Shroff Charity Hospital, Delhi, and he is doing research in stem cell for cornea also. So my whole of my family is dedicated to ophthalmology. Thank you for very much for this recognition and thank you. Thank you so much sir. Thanks a lot आपके इस आशीष में उद्बोधन और इतने हमें उत्साह के लिए. आप लोग प्लीज़ आगे एकेडमिक सेशन शुरू करते हैं. आप सुधांशु और माही आगे कार्यक्रम संचालित करेंगे. Mahi,
क्या आपको पता है ये जो हमारी आंखें हैं ये एक हाई डेफिनेशन कैमरा की तरह होती है? ओह, पर सुधांशु ये दो कैमरा एक साथ कैसे वर्क करते हैं? Mahi, in short, that's what binocular single vision is. Our eyes work together to form a single image, and believe me, it's a very complicated process. Is there any way to simplify it? Why not? We do have an expert with us, our next speaker, and my senior from Bharati Vidyapit Pune, Optum Atanu Samanta. Atanu sir has done M-Optum from Bharati Vidyapit School of Optometry Pune and earned his PhD from Gujarat University. Currently serving as in charge of PG Optometry at Nagar School of Optometry, become a fellow of ICL in 2010. As the consultant and head of contact lens department at Nagar Eye Hospital, Ahmedabad, his focus is on providing exceptional patient care. I would like to invite Optum Atanu Samanta to tell us more about binocular single vision and vision therapy. Sir. Hello everyone, how was the lunch? So this is my test to keep you awake. Literally I was sleeping. Fine. Basically, well, my topic is very technical in terms. That introduction of vision therapy and selection of different optical correction modalities. But I would get into some basic poll initially before we get into the actual topic now. How many of you are sitting in front, beside your friends? Can anyone please just raise your hand? How many of you are actually sitting with your friends? And how many of you are not sitting with someone who you don't know? Mostly everyone is sitting with. That's. Now, Ajit sir, you are actually known face here. So no, everyone is aware of you. So basically, what is the point? It could be because you don't arrive in this particular hall on time, so that you cannot find a place with your friend, or that could be another possibility that you want to know the new face, or you want to explore the next person who is actually sitting behind with you, right? So same thing happens whenever we actually visit any new place. If you consider your patient, whenever we deal with our patient, it is very important to find out the actual requirement that your patient is looking for. So sometime it may happen that your patient visits you. You'll start your journey with that patient, introducing yourself. Suppose if you ask me, I'll start with that I am Atanu. I am the best optometrist in Indore. I am providing you all those best possible options. But when your patient asks you about why you are doing this, why you are providing all those best thing to me, okay, if you can answer that, your patient will definitely stick with you. If suppose your patient is looking for something that is related to digital eye strain, आज के दिन में अगर आप देखेंगे maximum 90% of the population is exposed to digital gadgets. Most of the population, even the elders are also using smartphones more than 3 to 4 hours. And if you are talking about something which are related to some AR coatings and blue cut lenses and all, sometimes they cannot relate what exactly you are talking about, right? So my purpose of this talk is to create something, or to give you some insight how to create your new relationships with your new patients, okay? Because most of the cases we generally start with our
in our normal practice, most of you are from optical background, many are from clinical background also. You must have noticed that many a time your patients are coming to you for the first or second time, but after third time they are not coming to you repeatedly, or they are not bringing their relatives to your practice. So what could be the possible reason behind it? So initial thing, if we start with the why, अगर हम लोग ये पूछे कि actual में उनका requirement क्या है, if you can find out what exactly that patient is looking for, you can connect with their requirement, and definitely you are going to serve the best possible thing to that specific person with specific requirement. Am I clear for all? So this is the way we generally start developing the relation with someone who is visiting you for the first time. Maybe they just visit you just like a walk-in patient. बहुत बार ऐसा होता है कि बाजू में भी 2-3 ऑप्टिकल स्टोर है या ऑप्टोमेट्री क्लिनिक है. They just get inside, they'll find out whether the rates are okay or not, whether the stocks are good or not, right? There are many multinational companies are there to challenge your practice. So to stand out of this gathering, how to find out whether the patient is actually looking for a spectacle for contact lens, spectacle for computer use, or whether he or she is actually looking for something which is specifically aligned with some specific requirement. So for that, we need to start with this particular question, why you visit me? So in that case, basic purpose of our discussion is how to bring patient satisfaction. For example, suppose if I ask you, how many of you want your home to be very safe? Hopefully everyone. So if you visit one construction company who says that I am the best construction company available in Indore, I am providing all the best quality products to you, and that's it. They are not actually answering the actual requirement. Basically, we need our home to be, home to be something which is actually safe for us, which is long-standing for us, which may support our memories, which may create some memories which is going to stay forever. So if suppose that construction company start with that we build safe homes for you, and that same continuation with how and why, if they say that yes, we are going to provide you best things for you, and we built as per the standards which are given by the government, then you may think forward to allocate your home to that particular company who are actually providing the support, because they are actually connecting your requirements with the actual condition. But they are providing the same thing what other possible construction companies are also providing you. Is it clear for all? Is it connecting somewhere? So same thing is happening over here. In case, suppose if we start talking about patient satisfaction, how we generally consider a normal patient with no problem. Okay, so basically, we every time consider all our patients will have, am I audible? So all our patients will have only refractive correction. Only thing that is to be observed or to be find out, that is only refractive error, and provide the best possible spectacle from your store or some support from your clinic, which will benefit you monetarily as well as it will support the patient to come back after some time, right? But as I already mentioned that many of your patients are actually looking for something which is not specifically there with only spectacle correction. So in that case, we have this particular thing. We have to start with why we are providing you why we are trying to provide you the best possible correction, and what is the actual requirement of your case. That is how you can connect with your patient, okay? So
main requirement is patient satisfaction. So in case how, if you start with a basic evaluation procedure, generally we start with normal refractive procedures, basic evaluations, but we forgot about normal comprehensive eye care technique, which starts with a history, which starts with refractive procedures, vision taking, then evaluation of eye, maybe with torchlight, maybe with slit lamp, then binocular vision evaluation, and retinal evaluation, as well as if it is indicated, then you may go for some specialty related evaluation procedures. And that will be possible whenever you start this stepwise procedure to understand your patient's requirement. So this is how I'm going to connect vision therapy, how it could be valuable for your patient to start with. Okay. So vision therapy is something which is actually individualized treatment, which is basically prescribed for a patient in order to treat diagnosed visual dysfunctions. If suppose your patient is diagnosed with some visual dysfunction, then only you can treat it with vision therapy. So for diagnosis, what is the requirement? You need to find out the problem, and for that we need comprehensive eye checkup. And this is the base of our service providing. So this is how we may implement vision therapy in preventing the development of visual problems. We may stop a problem to start with. It may happen that your patient is not yet developed with some particular problem, but yes, there are possibility that the convergence related problems are there. It is not yet prominent now, but if you can provide, if you can diagnose the case in early stage, that time we can provide you the actual treatment beforehand. Okay, so automatically your patient will not be exposed to that particular problem, and they will retain with you for the long term. It will basically enhance visual function. It may remediate the vision and eye problem which are already there. So this is how vision therapy is something which is addition to your practice. Basically विजन थेरेपी में अगर आप नॉर्मली कंसिडर करते हैं, विजन थेरेपी होता कैसे है? विजन थेरेपी ऐसा कुछ मैजिक नहीं है जो कि आप स्टार्ट कर दिए और नेक्स्ट डे से आपके पेशेंट के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. विजन थेरेपी एक सिस्टम है वेयर वी जनरली प्रोसीड स्टेप वाइज. सो इनिशियली यू हैव टू लर्न व्हाट आर द प्रॉब्लम. सो स्टार्ट करने से पहले मुझे डायग्नोसिस तो करना होगा. सो डायग्नोसिस अगर हमें करना है, फॉर दैट वी नीड टू स्टार्ट a habit where we are going to follow all the possible steps. अगर आप हर एक स्टेप प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि डायग्नोसिस आपका गलत हो, और अगर गलत डायग्नोसिस है उसके साथ आपका जो ट्रीटमेंट होगा पॉसिबिलिटी है वो भी गलत हो. ऐसे भी हो सकता है कि पेशेंट को आप कुछ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के साथ आपने कोई ट्रीटमेंट दिए जो कि प्रॉपरली क्लिक नहीं हुआ. So your patient will think that you don't know the actual problem and you are just playing with their time. So nowadays, time is one of the very important factor to play with. Okay, so this is how we start the journey of vision therapy. Most of the cases, your patient will come with eye strain, headache, binocular vision related issues, and some problems which are related to studies. Your patient may come up with a maybe in case of pediatric cases, बहुत बार आपके पास पेशेंट आके बोलेंगे कि इनिशियल स्टेज में वो अच्छा स्कोर करता था स्कूल में, धीरे धीरे करके उसका विजन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो पढ़ना नहीं चाहता है, बाहर जाके घूमता है, या फिर पढ़ने में उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है. या फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो जब लिख के लाता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन जब वो कुछ क्वेश्चन पूछा जाए वो बहुत अच्छे से आंसर दे रहा है. सो बेसिकली द थिंग इज द पेशेंट इज अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच आर टॉट इन द क्लासरूम. वो रिकॉल कर सकता है लेकिन लिख के वो आंसर नहीं दे सकता है. दिस कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू विजन थेरेपी, आई मीन बाइनोकुलर विजन रिलेटेड इशू. सो विद बाइनोकुलर विजन रिलेटेड इशू, इफ यू कैन ट्रीट दैट, दैट परफॉर्मेंस विल ऑटोमेटिकली improve. And today basically I am not here to discuss entire thing of vision therapy because it is not possible in half an hour. Vision therapy is a subject and it requires minimum 6 months of proper study. Otherwise it is really difficult to start with. तो इसमें हमें करना कैसे है? मतलब अभी तो मैं बोल दिया कि 6 मंथ आपको पढ़ना है. आर यू गोइंग टू स्टार्ट स्टडिंग नाउ अगेन?
there are very difficulty. Yes, it may be possible that 1% of this population will start studying maybe after few days. But is it practically possible? If I ask you, चलो आज से आप 2 घंटा बुक लेके बैठ जाओ, उसके बाद ही आप vision therapy करोगे. Not possible. So today I am going to discuss something which are related to basic, selection of optical devices, and why we are going to select a certain type of optical device for a certain type of problem. Okay, so will that sufficient? Will that be sufficient for all? Because I am not going to cover the entire thing, as sir said, Ajit sir said, this should be for the next time, not today. We are not going to discuss procedures, we are not going to discuss the exact steps how we are going to start with. Basic purpose of my discussion is to make you understand what is vision therapy and stepwise कैसे उसको आप implement कर पाते हो. So now बहुत बार सुनने में आते हैं कि misconceptions जो होते हैं. आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था नीचे, तो हम लोग नीचे थे, वहाँ पे बात कर रहे थे. क्वेश्चन आया कि विजन थेरेपी होता क्या है, चलो हम लोगों ने डिस्क्राइब कर दिए. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सर्जरी को हम लोग इसमें से अवॉइड कर सकते हैं, विजन थेरेपी करने के साथ साथ सर्जरी अवॉइड हो जाएगा. सो what you think, is it avoidable? I mean, if suppose some certain surgical procedures are required and if you start vision therapy, is it possible to avoid that surgery? It's not. But yes, we may delay the procedure. It may be possible that sometime the problem is in the basic stage. It is not in advanced condition. So that time we may start vision therapy to control some problem. Now, for example, what problem I am talking about? Maybe convergence insufficiency, which may develop into divergent excess with time if it is uncorrected for a longer period of time. And if you can detect that particular problem at the initial stage, it is treatable and you can delay that surgical process. Second misconceptions आते हैं कि विजन थेरेपी करके चश्मा निकल जाएगा, या फिर किसी को अगर चश्मा लग जाता है तो विजन थेरेपी करके अवॉइड कर सकते हैं कि मुझे चश्मा बिना मुझे अच्छा दिखे. The answer is no, we cannot do that. But yes, if it is related to some muscular balance or if it is related to some neuro developmental issues, that time we can definitely help the patient to rehabilitate to the normal course. ठीक है, so धीरे धीरे करके हम लोग उसको normal course में लेके आ सकते हैं. So this is the basis of vision therapy. How it is done? There are questions. Mostly you all have this question कि कैसे किया जाता है, vision therapy होता है कैसे? So this is a possible way. Initially we start with office therapy. Now what is office therapy? You have to call your patient to your clinic, maybe in the optical store, in your hospital setup, for basic initiation of the procedure. Once your patient is happy with the procedure, once they are got into this particular way कि कैसे करना है, कैसे उसका जो process है उसको carry forward करना है, वो उनको जब समझ में आ जाएगा, then we can shift it to home vision therapy. So there are two possible way we may start. One is home therapy, office therapy, and second is home therapy. And there are possibility we may go ahead with both the combination. So अगर आपके पास कोई पेशेंट है जिसमें कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है, या फिर सपोज आप कंसिडर करो कि एम्ब्लियोपिया लेके पेशेंट आया हुआ है, तो उसमें आप ट्रीटमेंट कैसे दोगे? आप अगर हर रोज एक पेशेंट को बुलाते रहोगे, आई बिलीव एवरीवन इज डीलिंग विद लॉट्स ऑफ पेशेंट, यू कैन नॉट अकोमोडेट ऑल एट ए टाइम फॉर विजन थेरेपी एट योर क्लिनिक. इट इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत सारा टाइम लेते हैं ना, पेशेंट आके बैठेंगे, उसको पूरा प्रोसेस समझाना है, then they are going to do some procedure. Is it possible to accommodate 10 patient additional to your normal routine work? It's not. So that time we may club this process. इसको हम लोग दोनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं कि थोड़े से एक्सरसाइज आप यहाँ पे करो, थोड़े से एक्सरसाइज आप घर में करो. तो this is also one of the possibility that we may consider in vision therapy. Now basically it require lot of visits. So most of our colleagues do not start vision therapy just to avoid all those things कि मुझे पेशेंट को बार बार देखना है, मुझे चेयर टाइम बहुत ज़्यादा देना है. In case of busy practice, it is very difficult to manage this kind of behavior. So for that you have to train your patient in a way so that your patient can do the procedure at home. दूसरा जो है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पहले होता था. Nowadays softwares are available.
There are softwares for vision therapy. So we may ask a patient to just do the procedure at home at their own comfort. There is no problem. There is no requirement of visiting your place every time. So that is also one of the option which is available nowadays in even India. ये जो प्रोसीजर है ये बेसिकली एक साइड से नहीं होता है, जैसे ताली दोनों हाथ का एक साथ होने के बाद ही बजता है. सिमिलरली इसमें भी आपका जैसे मोटिवेशन चाहिए उसके घर से, जो पेशेंट आ रहा है पेशेंट के घर से, घर वालों का भी सपोर्ट चाहिए. सो काउंसलिंग इज़ वन ऑफ द की फैक्टर इन सक्सेसफुल विजन थेरेपी प्रोसीजर्स. तो अगर आपके पास कोई पेशेंट है जिसका कोई प्रॉब्लम आपने डायग्नोस किए, then you have to motivate the patient that this is not the end of the journey. You have to start all those procedure. ये सारे process हम लोग अगर करेंगे तो you may get into the normal mainstream without any problem. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ बच्चे आते हैं जिसमें recalling capacity है, that indicates your patient is, the IQ level of the patient is absolutely okay, but they cannot write in a proper way. Their scores are not up to the mark. It is because of the dyslexic problem, or you may consider there are some problem related to near components like accommodation, convergence. There are many factors which may affect it. So that is treatable, and without any surgical procedure we may provide a proper permanent support to them. So for that you as well as your patient should be motivated, and this is the only thing that will give you some positive outcome. And treatment of possibilities, which are the treatment that could be treated, that could be managed with vision therapy. These are the conditions. That is amblyopia, one of the most important and commonly found problem. Strabismus and non-strabismic binocular dysfunctions. There are many non-strabismic binocular dysfunctions are there, which are actually a burden. I mean, that create a lot of burden to your patient, which actually restrict them to utilize their maximum capacity. उनके पास कैपेसिटी है बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम की वजह से दे कैन नॉट परफॉर्म इट टू द मैक्सिमम लेवल. सो दैट वे वी हैव टू चैनलाइज दैट particular thing into a system. Accommodative dysfunction, especially this is near component related problem. Ocular motor dysfunctions and visual motor dysfunctions are there, which are actually related to treatable problem through vision therapy. What is our goal? Basically, the goal of vision therapy is not, it is, as I already mentioned, it is not a magical process. We need a lot of motivation from our side to provide this support to the patient. We need patient support. So it requires a lot of efforts from both the side. So it could alleviate the signs and symptoms. That means overall sign symptom जो है ना, उसको हम लोग एक कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, जिसमें से उसका जो नॉर्मल कैपेसिटी है उसको वो मैक्सिमम वे से यूज़ करके नॉर्मल डेली रूटीन का काम करते रहे. So this is one of the area where we may start our practice with. So what are the basic requirement? How you are going to start? As I already mentioned, you have to study a lot. It is not always that you have to do everything. Sir already mentioned that we are not meant to do each and everything at a time. We are not specialized in all different area of optometry. Optometry is not a small subject. तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ही को सब कुछ करना है. We have multiple practices around us. We have our friends. यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं जो कि सभी को पता है कि किसका कौन सा स्पेशलिटी है. So we can ask our colleagues to help us in this diagnosis. Sir already mentioned how to do that. We may take a photograph and send to our student, our friends, asking them what is the diagnosis and how we may proceed with. So definitely we have support system, but we are not actively utilizing everything. So इसमें जो मेन पॉइंट है कि हमें थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है. ज़्यादा कुछ नहीं, अलग से नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके जो हमें पता है उसी को अच्छे से चैनलाइज करके यूज़ करना है. दैट्स इट. सो रिक्वायरमेंट्स आर लेंसेज, प्रिज्म्स. लेंसेज हम लोग जनरली सभी को यूज़ करते हैं. प्रिज्म सर ने बताए हाउ टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिज्म्स. फिल्टर्स आर देयर. फिल्टर्स मीन्स सनग्लासेस इटसेल्फ. सो यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर, डिफरेंट लाइट passing filters which will allow a particular type of light to pass through, which may stimulate the retinal cells. It may be a red filter. So red filter will allow only red light to stimulate the retinal part, the macula, which is actually reached with rods and cone cells. So cone cells are more stimulated with red color. So they are sensitive to it. So automatically your patient will get
different type of support out of all this. Occlusion therapy is most commonly practiced thing in India. Even in different countries, this is very commonly used procedure for amblyopic treatment. इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्टिकल दे देते हैं, उसके ऊपर वो स्पेक्टिकल पैच आता है जो स्टिकी पैच होते हैं, अदरवाइज स्किन पैच आते हैं वो देते हैं. बट अजित सर ने एक पॉइंट आज बोले थे, आपको शायद याद होगा कि इफ सपोज इफ आई प्रोवाइड अ टेलीस्कोप टू अ किड who is going to classes every day, they may find it out that it is actually not cosmetically good. ठीक है, बाहर वाले देख के उसको पॉइंट आउट करते हैं कि ये पहन के उसके बाद देख पाता है. सो कॉस्मेटिक पार्ट हम लोग ऐसे ही ग्रांटेड लेते हैं ना कि बच्चे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहन के जाओ, ऐसा नहीं होता है. दे ऑल्सो स्टार्ट अवॉइडिंग थिंग्स इन देयर ओन वे. सो इफ यू सपोज प्रोवाइड अ पैच, दे विल जस्ट कीप इट अवे एंड डू देयर ओन वर्क. तो उसके लिए आपके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ऑक्लूसिव कॉन्टैक्ट लेंसेज आर ऑल्सो अवेलेबल वेयर वी मे प्रोवाइड ऑक्लूजन थ्रू कॉन्टैक्ट लेंस. बट येस, इट नीड प्रॉपर evaluation as well as proper selection of material. It is not the way you just give it and it is the final thing. So it takes time, but yes, there are possibility that occlusion could be provided in a interesting way. Other appropriate materials and equipments are also there, like synoptophore and associated vision therapy equipments which are commonly found in different websites you can go through with. अभी जो मैंने अभी बोला कि इसमें थेरापीज होते हैं कि होम विजन थेरेपी होता है, एक होता है ऑफिस विजन थेरेपी, एंड सेकंड इज यू हैव टू टेक केयर वेदर यू आर गोइंग थ्रू, आई मीन यू आर प्रोवाइडिंग एक्टिव विजन थेरेपी और अ पैसिव विजन थेरेपी. आज हम लोग जो कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, दैट इज पैसिव विजन थेरेपी. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पैसिव विजन थेरेपी वेयर वी डोंट हैव टू लर्न टेक्निकलिटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट, बट येस वी शुड अंडरस्टैंड कि कैसे उसका, सपोज आप कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जो बेस है ना, हाउ टू डायग्नोज दैट. इफ यू नो व्हाट इज कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी, यू कैन जस्ट ट्रीट इट विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रोसीजर्स लाइक normal spectacle. You may provide a simple spectacle with some decentration to create some prismatic effects. Okay, so that way we may provide some therapy which do not require your patient's active involvement. We are not asking our patient to do something specifically. उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ के कुछ पढ़ने वाला नहीं है या फिर वो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करने वाला है. You just have to ask your patient to use this spectacle for this particular purpose or for the entire day. जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं. Then active vision therapy is something where basically it require lot of involvement of our patient directly. मतलब आपको पेशेंट को बोलना है कि ये पर्टिकुलर टास्क आपको करना है, आज के दिन में आपको ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज प्रोसेस है आपको करना है. जैसे सॉफ्टवेयर बेस्ड जो प्रोसेस बोल रहा था उसमें आपको बोलना है कि ये पर्टिकुलर स्टेज आपको क्लियर करना है. दैट इज़ हाउ यू मे कीप योर पेशेंट्स बिजी. सो इफ इट रिक्वायर लॉट ऑफ एक्टिव involvement of your patient, that is known as active vision therapy, which is bit difficult, but yes, once you get into this particular procedure, it is very easy and there is nothing like the reward when your patient says yes, I am getting things positively, yes, there are results which are actually improving with your therapeutic procedures. तो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग एक्चुअली विजन थेरेपी के थ्रू अचीव कर सकते. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू just summarize the thing, how to start with our practice and what are the thing that is actually required in our daily routine practice in this particular time. If you think about 10 years back, exposure of digital devices are very less, maybe 10-15 years back. Now it is compulsory for each and everyone. It is the fact is known. आपको पता है कि मैं अगर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा देर तक, आई एम एक्चुअली स्ट्रेसिंग माई आई. बट ये भी है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि आपके क्लाइंट्स वहीं पे फ़ोन करेंगे, आपको मैसेज आएगा, आपको चेक करना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू हैंडल एंड you should do that. You cannot avoid technology now. So in that you may have something, for suppose for example traveling के लिए पहले हम लोग चल के जाते थे. maybe 50 years back अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे थे कि जगहों पे जाने के लिए, काम पे जाने के लिए आप साइकिल से जाते थे या फिर कोई मतलब चल के ही जाने की ज़रूरत होता है. now we have car.
Same way, we may develop some procedure which will basically support our daily routine. So same way, we just have to modify selection of different type of optical devices which will help our patient to develop normal scenario in the overall maintenance of the visual condition. So comprehensive eye checkup is one of the thing what I already mentioned, that this is one of the most important area which we all should follow. This is the sequence, basic sequence of our normal daily routine. But we only follow this 2 or 3 points. Initial vision बहुत सारे लोग कभी-कभी ले लेते हैं. Then history and refraction. So most of the cases क्या करते हैं, पेशेंट आए, उनको पूछ लिया क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दूर का, ओके फाइन, माइनस लेंसेज रख दो, खत्म होगी बात. नियर का प्रॉब्लम है, ओके फाइन, प्लस लेंसेज जाओ. विजन 6 है, ओके फाइन, आप खाली नियर का ही लेके जाओ. नो नीड टू फाइंड आउट वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरोपिया और नॉट. एंड दैट इज वन ऑफ द एरिया वेयर योर पेशेंट इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम, राइट. सो if suppose if you start with a sequence, it may take maybe another 10 minutes more in your practice, but your satisfaction, your patient satisfaction level would be, I would say, 20 times better than now. You can start implementing and let me know if next year you ask me to continue with this same topic. I'll be happy to continue. Let me know after 1 year of implementation of this comprehensive eye checkup how your patients are actually getting benefit. Even what is your satisfaction level जो आप आज कर रहे हो और आगे चल के, I know many of you are doing it, but 80-90% optoms are not following this sequence. So this is one of the area where we should improve in our approach. So next part, which is binocular vision evaluation, it requires a very simple step. It is not like we should have a synoptophore to find out whether the binocular vision is normal or not. We can just find out with WFDT test, Word-4 dot tests. This is basically available in all the vision charts. वो हम लोग कभी नहीं देखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो तो है, हमें क्या करना है, 2 बार बटन दबाना पड़ता है, बस उतना ही हेडेक है. But yes, this is important to start with. Then slit lamp examination, it is not necessary every time you should have a slit lamp. It may be a simple torchlight, but yes, your experienced eye. You should know what exactly you are looking at and how you are actually trying to find out the problem. And it is not necessary every time you have to find out the problem. It is obvious that 80-90% patient may not have any kind of problem. So don't get disappointed कि मेरा इसमें तो problem निकल ही नहीं रहा है, तो मैं इतना सारा process क्यों करूँ? So it's not like that. If suppose 100 पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, उसमें से 10 पेशेंट को भी आप एक्स्ट्रा कुछ केयर दे रहे हो, दैट इन्फॉर्मेशन, दैट मैसेज विल कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट. सो ऑटोमेटिकली योर पेशेंट विल गेट अटैच्ड विद योर प्रैक्टिस. आईओपी मेजरमेंट ये हम लोग कभी नहीं करते हैं, ये अगर हॉस्पिटल प्रैक्टिस में है तो ही करते हैं. ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिस में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 90% केसेस में नहीं होता, 10% यस हो सकता है. Then retinal evaluation, Sanjay sir already told you about all the benefits and how it may save life also. It is a life-saving procedure if suppose if you learn it properly, and it is not very difficult. You just have to find out whether it is normal or abnormal. If it is abnormal, straightforward, you have ophthalmologist sitting behind you. Just let them deal with that. No need to diagnose it properly whether it is this particular case or that particular case. In my opinion, it is not your job to just find out and just make your mind happy that yes, मैं इतना सारा diagnosis किया. It's okay if you are aware of that condition, it is okay. But for the routine I am talking about, if suppose you are in a screening camp and if you find out yes there is something wrong, there is no need to diagnose that whether it is diabetic retinopathy or hypertensive retinopathy or something else. It is abnormal, I should refer it to the particular service so that your patient will get benefit. Then management. Management is the thing that you are going to decide. It is not always that we are going to provide something fancy to all our patient. बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैंने मैनेजमेंट में ये पर्टिकुलर चीज़ें इसको बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ एडिशनल दिया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू हैव टू प्रोवाइड. Most of the cases it is very simple. If you select a case with some particular way of management, I'm going to talk about that also. How to start with selecting a particular management procedure, maybe with a spectacle. Am I taking a lot of time? Okay, so shall I continue with selection? Okay.
So the basic thing is we need to understand whether the optical correction should be for us for the basic level, whether we should continue with a spectacle correction, or I may consider this case, specifically this case for contact lens, which is not possible to correct with spectacle. How we are going to find out? बहुत बार ऐसे होता है ना कि चश्मे से तो दिख रहा है, सपोज इन केस ऑफ मोनोकुलर अफेकिया, बहुत बार पेशेंट आते हैं, विजन 6:6 है, मैंने +10 डाल दिया, उसके साथ माइनस सिलेंडर के साथ विजन 6:6 है, अदर आई 0.5 डायोप्टर स्फेरिकल, दोनों आँख से दिखाओ, दो दिख रहा है. So it's not possible to provide a spectacle. So that time we have to consider why it is so and how we are going to manage it. We are not going to provide spectacle to that patient, or sometimes there are some old way of prescribing. I used to do some in some cases कि patient बहुत old है, तो अभी इसको एक काम करते हैं, एक आँख distance के लिए दे देते हैं, एक आँख near के लिए देते हैं. At least that is actually not good way to treat your patient, because you should have proper binocular vision. Okay, if it is not properly maintained, then do not disturb it in that way कि एक आँख दूर के लिए, एक आँख नज़दीक के लिए. So that may create a lot of difficulty in long run. So how to select whether should I go with a spectacle correction or we should go with contact lens correction? So the answer lies in few points. One is magnification, how we start with. If suppose, as per the previous example, that monocular aphakic case, if you provide a spectacle to a patient, 10 diopter spectacle में अगर एक आँख में दे रहा हूँ, तो मैग्निफिकेशन के हिसाब से सर ने ऑलरेडी बोल दिया कि 2.5x मैग्निफिकेशन तो होने ही वाला है. अगर 2.5x मैग्निफिकेशन के साथ एक आँख में से देख रहा है और दूसरे आँख में कोई मैग्निफिकेशन है ही नहीं या फिर बहुत माइनर है, then it is absolutely not possible to provide spectacle. So if you suppose provide a contact lens in place of spectacle, what would be the next difference? Spectacle में भी मैंने 10 diopter ही देने वाला हूँ, right? मे बी स्लाइट डिफरेंसेस वर्टेक्स डिस्टेंस कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा 11 डायोप्टर के आसपास होगा. बट द थिंग इज आई एम एक्चुअली प्रोवाइडिंग समथिंग विच इज एक्चुअली सिटिंग ऑन द कॉर्नियल प्लेन, सो दैट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द ओवरऑल मैग्निफिकेशन अमाउंट. सो ऑटोमेटिकली दैट बैलेंस वुड डेवलप फॉर बोथ द आईज. सो योर पेशेंट विल स्टार्ट सीइंग single, maybe after practicing for few vision therapy sessions your patient will be comfortable. Maybe for the initial stage बहुत बार ऐसा होता है, आपने लेंस दे दिए, पेशेंट आके आपको कंप्लेन करना स्टार्ट किया, सर मुझे पहले तो एक दिखता था, अभी तो मुझे दो दिख रहे हैं, because both eyes are looking at a time. But the problem is since long he or she was not using both the eyes together, so your brain forgot how to use two eyes together. That is the area where we come in. We have to train our patient कि उसमें कैसे उसको सिंगल करना है, सिंगल करने के लिए कौन से प्रोसेस करना है, that we should implement. So this way magnification is something where we should take care of. Okay sir. Thanks for coming sir. It's our honor. सर, हम हमारे पेशेंट्स का कभी भी पिन होल विज़न ज़्यादातर नहीं देखते हैं. मैक्सिमम ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड मैक्सिमम इवन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑल्सो, वी डोंट बिलीव टू टेक पिन होल विज़न, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मेरे यहाँ फिक्स है, जैसा आपने वो चार्ट बताया ना, मेरे हर पेशेंट का वी हैव EMR, हर पेशेंट्स की EMR में एंट्री होती है, बट स्टिल मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके पीछे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. वो कंप्लीट होना ही चाहिए, हर पेशेंट का होना चाहिए और हर विजिट में होना चाहिए. मैंने आज सर्जरी करी है, 15 दिन बाद उसको सिस्टाइड मैक्युलर एडिमा हुआ है कि नहीं हुआ मुझे मालूम तभी पड़ेगा उसका विज़न उस दिन चेक हुआ है या नहीं. करेक्ट. तो जैसे हम 6/6, 6/9, 6/12 क्यों हैं वो हमारे दिमाग में आना चाहिए. यदि 6/6 इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उसका रीज़न यदि मुझे मालूम है, देन इट्स ओके. इफ़ इट इज़ नॉट, देन वी हैव टू थिंक दैट देर इज समथिंग समवेयर प्रॉब्लमेटिक. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सर. So coming back to our discussion, so
magnification is one of the area where we should take care of. So if you just consider magnification, is this enough? मैंने यहाँ पे जो बोल दिया ना कि contact lens दे तो magnification कम हो जाएगा. No, this is not. There are two different way. There are two different type of refractive errors are there. One is curvatural, जो कि corneal curvature के साथ change होता है. Suppose एक आँख का जो cornea है ज़्यादा steep है, so that will provide myopic shift. If it is axial refractive change, eyeball का size बड़ा है, इसलिए उसका refractive error myopic है. So these things are different in both the things. So you have to take care of management again. So it is not only that कि मैंने one eye का refractive error है, सीधा contact lens दे दो. It's not going to answer your problem. So you have to find out whether the problem is curvature related या फिर उसका axial change है. So how we are going to find out? We can just click 2 or 3 buttons in your ear. K readings are there available, readily available होता है. उसको just एक बार देख लीजिए कि दोनों आँख में जो भी K reading आपका आ रहा है, केरेटोमेट्री सेम दिखा रहा है, सिमिलर दिखा रहा है कि नहीं. अगर एक में ज़्यादा स्टीप है और उसमें मायोपिया ज़्यादा दिख रहा है, सो इट इज़ कर्वेचरल प्रॉब्लम. अगर आपको लगे कि नहीं इसमें तो सिमिलर दिख रहा है बट मायोपिया दिखा रहा है, दैट इंडिकेट्स इट मे बी अ पॉसिबिलिटी योर पेशेंट हैव axial refractive change. So in case of axial refractive change, we should provide spectacle correction. Spectacle correction will change the overall management, overall magnification level. I'm not getting into details, but just look at this graph. If it is a axial type of refractive error, then contact lens will maintain similar amount of magnification or minification. It is not going to hamper much. But if you look at this spectacle, this red eye, it is going to maintain the overall magnification. Sir, for example, if you consider myopia because of axial length change, larger eye that creates larger imaging. So suppose if you correct a large size myopic eye with proper amount of refractive correction, on top of cornea, I am basically trying to provide you similar amount of magnified image. Large eye होने से उसका normal जो image size है ना वो बड़ा ही बनता है. तो अगर मैं उसको contact lens दे के magnification को disturb नहीं करना चाहूँ तो एक आँख में जो magnification था उतना तो maintain हो गया, vision आ जाएगा, but it is not going to fuse with the other eye. So that time we have to consider spectacle correction for that eye, large eye, so that we can bring into minification effect with minus lens. So if you provide a minus lens in front of the eye, which is away from the corneal plane, it would produce some amount of minification. थोड़ा छोटा हो जाएगा image. So that will automatically get fused with the other eye image. ठीक है, तो ये सारे जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना जो हमें थोड़ा सा जानने की मतलब याद रखने की ज़रूरत है. So axial refractive error best treated with spectacle, curvature related refractive error best treated with contact lens. So it is not necessary every anisometropic patient will be treated with contact lens. Even for surgical procedure also, if suppose you are trying to do a surgical procedure with IOL, that time also you may face this kind of difficulty if it is a large eyeball in one side. So this way we have to check whether this is actually related to vision, distance vision related issue. Now coming to the second part, which is near related issue, which is nowadays mostly 50% of our normal working period. 50% टाइम हम लोग नज़दीक में ही देखते हैं, 50% हो सकता है आप दूर देख रहे हो, 50% कुछ लोग तो शायद 70% भी देखते हैं, पेशेंट नहीं है तो मोबाइल लेके बैठ जाए. सो दैट वे वी आर एक्चुअली यूजिंग नियर विजन फॉर लॉन्गर पीरियड. फॉर नियर we generally use two different components very regularly and simultaneously in synchronization. So what are they? One is accommodation to make the image clear, and second is the convergence. Sir already said that if suppose if I bring an object very clear near to my face, it is going to demand some amount of convergence to take place. So if suppose convergence is insufficient, so that time also we have to take care of that particular problem. So उसमें हमें कुछ prism देने के ज़रूरत हो सकता है. And in case suppose you are considering a contact lens for a patient who is myopic and the age group is maybe 39, maybe 38, and your patient is somehow interested in contact lens. ऐसा हो सकता है ना कि आपने इससे पहले शायद बोला नहीं होगा या आप किसी दूसरे के पास से वो चश्मा बनाते हैं और आपने उसको अच्छे से कॉन्टैक्ट लेंस समझाए एंड ही और सी इज़ वेरी हैप्पी, ओके फाइन मैं अभी कॉन्टैक्ट लेंस में ही जाने वाला हूँ, आपने दे दिए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको फ़ोन आएगा, सर ये लेंस पहनने के बाद ना मुझे थोड़ी देर तो ठीक था, फिर धीरे धीरे मैंने जब काम चालू किया मुझे हेडेक होना स्टार्ट हुआ, शाम को तो एकदम मुझे लेंस निकाल देना पड़ा.
तो ये जो प्रॉब्लम हुआ दैट इज रिलेटेड टू एकोमोडेशन. So basically myopic eye are actually getting some sort of accommodation related support. इसमें कुछ calculations है, ये हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आज तो नहीं जा रहे. So calculation अगर आप करेंगे ना तो उसमें आपको क्लियर पता चलता है. If suppose your patient is actually using a lens of around 6 diopter, प्लस लेंस ले लीजिए, एक में माइनस लेंस लीजिए. अगर प्लस लेंस में मैं कॉन्टैक्ट लेंस दे रहा हूँ ना तो पेशेंट को एकोमोडेशन कम करने की ज़रूरत होगा. अगर माइनस लेंस वाले पेशेंट को मैं कॉन्टैक्ट लेंस दे रहा हूँ दैट वुड बी जस्ट अपोजिट. योर पेशेंट नीड मोर एकोमोडेशन. और आप कौन से पेशेंट में दे रहे हो? जस्ट बिफोर प्रेस्बायोपिया, जो कि सालों से चश्मा यूज़ करके उसको एकोमोडेशन कम करने की आदत है. उसको आप सडनली बोल रहे हो चलो आज से जिम करो, नहीं होगा. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस इज द एरिया वेयर वी शुड टेक केयर ऑफ. हर एक को मुझे कॉन्टैक्ट लेंस नहीं देना है, हर एक को स्पेक्टिकल नहीं देना है. देन कमिंग बैक टू the another component, that is convergence. Again, this is similarly affected. Convergence means we are actually making our eyeball to come closer, right? So initially मैं जब spectacle से देख रहा हूँ, spectacle में हम लोग क्या लेते हैं? PD लेते हैं, just to make sure that our vision through this particular lens should be from the center of the optical center of the lens, right? तो अगर मैं थोड़ा सा भी अंदर की तरफ देख रहा हूँ तो what is the next change that is going to take place? We are actually getting some prismatic effect because we change that position from center to inner centers. मतलब अंदर की तरफ जब आप देखना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे प्रिज्म्स होता है. आपको पता ही है कि प्लस लेंस जो होता है बेस टू बेस ओरिएंटेशन में होता है, माइनस लेंसेज अपेक्स टू अपेक्स ओरिएंटेशन में बनते हैं. सो बेसिकली आप सेंटर से थोड़ा सा भी आप अंदर की तरफ देख रहे हो दैट विल गिव यू प्रिज्मेटिक चेंज. नाउ दैट प्रिज्मेटिक चेंज बेसिकली हेल्प्स इन मायोपिक आई. सो मायोपिक पेशेंट with spectacle correction they get benefit of prisms. So when you are actually selecting a patient with myopia and somehow your patient is suffering from convergence insufficiency and maybe it is a younger age group patient, there is no issue, but उसमें भी अगर आप दे दिए तो पेशेंट आपके पास वही सेम कॉल आएगा कि मैं सुबह तो जब पहना था ठीक था, जब मैंने काम चालू किया धीरे धीरे करके हेडेक होना स्टार्ट हुआ और ये अनबेरेबल है. आप काउंसिल करेंगे 2-4 दिन पहन लो ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू create a lot of problem in your practice. So deciding the actual thing for or selecting a particular type of correction for a particular type of patient is very important, and this is how we proceed with a long term relationship with our patients. So this is the basic summary of my discussion. So in summary, for near, as I already mentioned, contact lens corrected myopes converge more, right? And contact lens corrected hyperopes converge less. So hyperopes को मैं अगर spectacle से contact lens में shift कर रहा हूँ, they will be happy even though they have convergence problem. If your patient have convergence related issue, आप अगर पूरा comprehensive eye checkup करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा. So there is no issue. Once you treat that, you can go ahead with contact lens correction. But yes, if it is not treated, your patient will come back with negative impact. It is not going to be positive. ठीक है, बार बार बुला सकते हैं, but अगर वो हथौड़ा लेके आएंगे तो it's very difficult to manage that patient, right? So this is the thing that I was actually trying to plan since last 1 month. बहुत सारे चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड करने की मैंने कोशिश किया था, बट हाँ ये थोड़ा सा लंबा हो गया. But still, hopefully this makes some sense. Hopefully you are going to implement few points of this comprehensive eye checkup. So in summary, what is the take home message from my discussion? One is we should do a comprehensive eye checkup for each and every patient. Secondly, we should understand what are the basic behavior of our eye, how they behave for distance and near. Second, आपको अगर कोई spectacle correction देना है या contact lens correction देना है, प्रॉफिट मेकिंग है या फिर ऐसा कुछ सोच रहे कि चलो लेंस दे देते, अच्छा हो गया, बहुत दिन बाद एक लेंस हुआ, दे देते, ऐसा नहीं है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इसमें देना है या नहीं देना है. अगर देना है दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर हाउ टू मैनेज इट. दैट्स इट. एनी क्वेश्चंस? हाँ प्लीज. Sir, can you please repeat it? What is the maximum age limit
for occlusion therapy in hypermetropic amblyopia? If you talk about occlusion therapy, there is no such age limit which is decided by somebody. It is completely based on your patient's requirement. Suppose if I say, for example, there are evidence that this says even at the age of 80, vision is improving with occlusion. There are few experimental studies. But उसमें problem क्या होता है, आप एक बार occlusion बंद कर दिए ना, immediately after 2 months your patient will come back with some deterioration in the eye. So it is not actually decided that this is the age group, I should not go with occlusion therapy. You may go ahead with occlusion therapy, but yes, you have to club it with some sort of vision therapy. It could be a software based therapy along with occlusion therapy, could be one of the beneficial way to provide your patient a better successful correction. So बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने 10 पेशेंट को ट्रीट किए, लेकिन उसमें से 5 पेशेंट ने इम्प्रूवमेंट दिखाया, 5 पेशेंट ने नहीं दिखाया, तो अभी हमें कन्फ्यूजन होता है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. सो बेसिकली वी शुड ट्राई वंस. अगर आपके पेशेंट में वो प्लास्टिसिटी बचा हुआ है ब्रेन का, बेसिकली हमारा जो ब्रेन होता है ना, हर एक का ब्रेन थोड़ा डिफरेंट वे से बिहेव करता है. इट इज़ नॉट दैट इफ आई गिव यू सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन एंड इफ आई गिव अनदर पर्सन सेम करेक्शन, इट इज़ गोइंग टू वर्क. वट वी एक्चुअली टॉक अबाउट कि हाँ चलो ऑक्लूजन दे रहे हो, 2 घंटे के लिए आप दे दो तो इम्प्रूवमेंट होगा. ओके, कितना इम्प्रूवमेंट होगा वी डोंट नो. सेम वे ऐसा कुछ है नहीं कि आप पर्टिकुलरली ऐसे एज में ही मतलब सजेशन देना. अभी तक हम एम्ब्लायोपिया में जो ऑक्लूजन थेरेपी देते हैं तो टीन एज के बाद हम कभी ट्राई भी नहीं करते थे. करेक्ट. पर अभी कुछ ऐसे मैंने कहीं रीड आउट किया है कि हम किसी भी एज में प्री प्रेस्बायोपिक एज तक हम occlusion therapy try even in presbyopic ages there are studies they says that at the age of 60 there are improvements. So I cannot say that this is not going to work for your patient. Maybe it is going to work, but yes, you have to have your own motivation. You have to keep your patient motivated that yes, this is experimental thing, but it is not going to get completely wasted. अगर आपका पेशेंट मोटिवेटेड है ना तो डेफिनेटली वो करेंगे. बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को करना ही नहीं है, अपने ऑक्लूजन दे के बैठ गए, या फिर आप कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड थेरेपी आप दे रहे हो, तो उसमें अगर वो अच्छे से नहीं करेंगे तो कैसे डेवलप होगा. सो बोथ द वे वी हैव टू बी वेरी एक्टिव. सर सेकंड, इन मायोपिया और पैथोलॉजिकल मायोपिया बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्विटी इज लेस देन 6/6. Can we go for occlusion therapy in myopia or pathological myopia? We have to understand what is the actual requirement. Why this vision related problem is there. If suppose if it is pathological change, ठीक है, pathological change मतलब विजन आपका सही है, ठीक है. सपोज इन केस मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, करेक्ट. सो वो फ्रैक्चर को मुझे स्ट्रेट करना होगा, बट वो सेम स्ट्रेंथ के साथ रिटर्न नहीं आएगा. सो इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल मायोपिया सेल्स आर नॉट देयर, सेल्स आर गेटिंग डिफेक्टेड. सो उसमें अगर मैं कोई प्रोसीजर करता हूँ तो होगा डेफिनेटली देयर वुड बी सम चेंज. जैसे कि अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं, इवन दो विद मल्टीपल फ्रैक्चर्स योर पेशेंट विल स्टार्ट वर्किंग, दे विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज विद द सेम स्ट्रेंथ. तो ऐसा हो सकता है कि स्लाइट 1-2 लाइन का डिफरेंस दिखाएगा, बट येस दैट टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ अगेन दैट मोटिवेशन पार्ट कि पेशेंट को मोटिवेटेड होना है वो सारे प्रोसीजर फॉलो करने के लिए. सेकेंडली देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ सेलुलर लिमिटेशन. अगर उसमें सेल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है तो आप ऑक्लूजन दे के बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे. सर अभी तक हमारा एक परसेप्शन रहता है कि मायोपिया में एम्ब्लायोपिया नहीं होता है, तो यह कहाँ तक सच है? बेसिकली इसमें परसेप्शन इसीलिए डेवलप हुआ है. मायोप्स आर मोर कंसनट्रेटेड इन सेंटर, आई मीन नियर. जनरली देयर विजन इज क्लियर फॉर नियर. अगर मुझे नज़दीक में देखना है, मैं एकोमोडेशन छोड़ के मैं देख सकता हूँ क्योंकि मुझे मायोपिया है. फॉर डिस्टेंस दे आर एक्चुअली गेटिंग ब्लरी विजन, बट फॉर नियर नाउअडेज मोस्ट ऑफ द वर्क इज एट नियर. और अगर मुझे नज़दीक में देख रहा है तो मेरा इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से डेवलप होगा. मैं अगर दूर की चीज़ नहीं देख पाता हूँ तो मैं बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूँ, मैं घर में बैठ के कैरम खेलने वाला हूँ. सो सेम थिंग ऑटोमेटिकली विल स्टिमुलेट द ब्रेन एज वेल एज योर सेल्स. जो भी आपके रेटिनल सेल्स है उसमें अगर स्टिमुलेशन मिल रहा है, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क इन द मैक्सिमम लेवल. एम्ब्लायोपिया कब होता है? अगर उसमें प्रॉपर स्टिमुलस कभी भी नहीं मिल रहा है. सो इसलिए मायोप्स में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्लायोपिया इज लेस, बट इट इज़ नॉट ज़ीरो. क्योंकि उसमें अगर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है, मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि अगर रिफ्रैक्टिव एरर है उसके साथ कुछ मेरिडियनल रिफ्रैक्टिव एरर, एस्टिग्मेटिज्म है, तो एक मेरिडियन से उसको क्लियर दिख रहा है, दूसरे मेरिडियन से क्लियर नहीं है, बट द पेशेंट इज मायोपिक. So that time also your patient may get amblyopia. So most of the cases your hyperopic patient will tend to get amblyopic change very fast,
और उसमें बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बट मायोप्स में भी दिखते हैं, कम दिखते हैं, बट दिखते तो हैं. We can try occlusion therapy and all the vision therapy in myopia also. हाँ, definitely. If vision is less, cellular structure and brain structure is absolutely normal, then definitely you should try once. If it is possible from your side and your patient. Motivation, वहीं पे आपको बात करना है कि आपका पेशेंट अगर मोटिवेटेड है, करने के लिए रेडी है, then you should go ahead. Thank you. Near about patient is optic neuritis and his vision near about finger counting 1 feet. Can we treat? See, the question itself is giving you answer. Whether it is completely treated, जो भी आपके रेटिनल प्रॉब्लम्स आप बोल रहे हो, ठीक है, इसमें रिफ्रैक्टिव करेक्शन ऑलरेडी आपने दिया हुआ है या नहीं दिया है, दैट विल मेक सेंस. दैट विल एक्चुअली गिव यू आंसर. इफ सपोज मैं फॉर एग्जांपल सपोज आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार रिपीट करेंगे. पेशेंट को ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया है. हाँ, और विजन उसका फिंगर काउंटिंग है. ओके, सो इन केस सपोज ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली रिलेटेड टू सम इन्फ्लेमेशन. ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, अगर मैं इन्फ्लेमेशन को कम कर सकूं, अगर वो रिस्टोर हो जाए, देयर आर पॉसिबिलिटी दैट इट वुड बी कंप्लीटली नॉर्मल, इट मे बी स्लाइटली अफेक्टेड, इट मे बी कंप्लीटली अफेक्टेड. ठीक है, न्यूट्राइटिस को आप अगर रिजॉल्व कर दीजिए, उसके बाद जो भी रिफ्रैक्टिव करेक्शन है वो आप पहले कंप्लीटली दे दीजिए. रिफ्रैक्टिव करेक्शन देने के बाद एक्चुअली होता क्या है, जो भी लाइट रेज डिस्टॉर्टेड थे ना, वो जाकर रेटिना में फॉल होना स्टार्ट करेगा. सो ये जो पर्टिकुलर पीरियड में जो विजन उसका कम हुआ था, अब अगर सारे लेंथ लाइट रेज को रेटिना के ऊपर लेके आओगे, तो उसका जो कैपेसिटी है, सेलुलर कैपेसिटी जो है, वो फिर से डेवलप होना स्टार्ट होगा एक लिमिट तक. अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से जो नर्व फाइबर्स है ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, उसमें मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है. सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग दैट न्यूराइटिस वर देयर, वेदर इट इज़ ट्रीटेबल न्यूराइटिस और नॉट. बहुत सारे बात ऐसे होते हैं कि कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर वहाँ पे पीछे से है, जैसे ट्यूमर रिलेटेड इशूज़ है, बहुत सारे इशूज़ रहते हैं, यू कैन नॉट ट्रीट दैट. सो दैट टाइम विद विजन थेरेपी इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ चेंजेस. Means we can't treat strabism also ना. डाइवर्जेंट भी नहीं सही कर सकते ना उसका. कर सकते. देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एग्जांपल दूं. डाइवर्जेंस कब होता है? डाइवर्जेंस तब होगा जब हमारे दो तरह से हो सकते हैं. एक मस्कुलर इम्बैलेंस है, ठीक है. डाइवर्जेंस क्या है, लैटरल रेक्टस मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर मीडियल रेक्टस वीक है, तो वो बाहर चला गया. तो अभी मुझे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मुझे इसको आइदर स्ट्रेंथ बढ़ाना है, या फिर इसका अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसको कम करना है. कम तो नहीं कर सकते, तो इसको मुझे स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो उसमें आप एक्सरसाइज तो काम हो जाएगा. सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज आपका पेशेंट कोई पैथोलॉजी के साथ है, तो एक आंख से वो देख ही नहीं रहा है सालों से, तो एक आंख से देखना नहीं है, इसलिए उसका जो ब्रेन है ना, इट इज़ एक्चुअली ओरिएंटेड फॉर अनदर आई ओनली. सपोज राइट आई डेविएटेड है, तो वो खाली लेफ्ट आई यूज़ करता है, तो लेफ्ट आई से ही ब्रेन को स्टिमुलस मिल रहा है, वो उसी के हिसाब से चल रहा है. अभी मैंने अगर सडनली उसका रिफ्रैक्टिव करेक्शन दे दिया और विजन थेरेपी करना स्टार्ट किया, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग. अगर उसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंज है, पैथोलॉजी को पहले मुझे हटाना पड़ेगा. सो ऑलवेज ट्रीट द बेसिक प्रॉब्लम. अगर ये मस्कुलर प्रॉब्लम है, ओनली मस्कुलर प्रॉब्लम, मैं मसल का स्ट्रेंथ में बढ़ा सकता हूँ. पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी के पहले आप ट्रीट करो, देन यू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. मतलब ट्रीटेबल है, कंडीशंस अप्लाइड. आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सम पैथोलॉजी, वेदर इट इज़ अ परमानेंट प्रॉब्लम, वेदर इट इज़ एसोसिएटेड थिंग विच इज़ नॉट ट्रीटेबल. अगर ट्रीटेबल नहीं है तो मैं उसको फिर से स्ट्रेट नहीं कर सकता, उसको मुझे सर्जिकली जस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी करके मैं उसको स्ट्रेट रख दूँ, क्योंकि विजन है ही नहीं उसमें, उसको मैं स्ट्रेट करके छोड़ दूँ, खाली कॉस्मेटिकली आपको दिखेगा. बट येस, देयर आर पॉसिबिलिटी. डाइवर्जेंस है, उसको भी आप स्ट्रेट कर सकते. अगेन देयर आर सम लिमिट. कितने डाइवर्जेंस को आप सीधा कर पाओगे वो भी देखना है. 40 प्रिज्म डायोप्टर से ज़्यादा पेशेंट को अगर डाइवर्जेंस है, आप जितना भी विजन थेरेपी करवा लो, कुछ नहीं होने वाला है. सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड. एनी अदर क्वेश्चंस? ओके. Thank you so much, sir. Sudhanshu, what is the role of an optometrist in community? So we
we as an optometrist play a very important role in detection of various causes of preventive blindness like uncorrected refractive error, cataracts, diabetic retinopathy, glaucoma, ARMD, and so on. Our next speaker, Optum Paula Mukherjee, who has done B-Optum and holds master degree in clinical social work. She is also a fellow of ESCO in dispensing optics and is currently working as Chief Operational Manager with Optometry Council of India. Will tell us more about the role of optometrist in community. Ma'am. गुड इवनिंग गुड इवनिंग घर जाने का टाइम हो गया ना ओके सो बिफोर आई गो अहेड मेरा टॉपिक क्लिनिकल बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ऑल द एक्सपर्ट्स हैव स्पोकन माई ओनली idea is to reflect upon a point which is I will leave you with the thought at the end of the presentation कि हम community में impact कर सकते हैं कि नहीं because we are a part of a community. So before we understand community health care या कुछ public health examples, we have to understand first what is community. So basically community होती क्या है? It is a geographic boundary. So you can relate with yourselves कि हम एक geographical boundary में रहते हैं. We have a sense of membership. So आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, we are a community of optometrists, right? Similarly, we are businessman community. There's a school which is again a community of children. So ये सारे characteristics जिसमें होता है, that is called as a community. So एक common culture, एक language होता है. So हमें यहाँ पे जो जोड़ रहा है वो है हमारा profession. So that is how we are connected, right? And then we have common interests and values. So आज हम यहाँ we are together. Why? Because we have a common interest. We want to learn, and then we want to take back something and improve our practices. Examples मैंने already दे दिया है. So there's businessmen, then there's social status. अभी recent example is Ayodhya, one where lakhs and lakhs of people went because they were a community of people who believe in something, right? So that is what is the power of being in a community. So community करती क्या है? They provide support, connection, and a sense of belonging for their members. So हम अब जब community की बात कर लिए हैं, what is community health care? So in a broader aspect, अगर हम common interests की बात कर रहे हैं, अगर हम common language share करते हैं, culture, beliefs share करते हैं, then health is something which is again very, very important and which we should understand. So community healthcare is a branch of public health which focuses on people's well-being in a particular geography. कुछ examples मैंने दिए हैं which you will be able to relate, like diabetes, cholesterol. So अगर आप being practitioners, you would have come to common terms कि diabetes या maybe arthritis ये कुछ लोगों को होती हैं जो common lifestyle lead करते हैं. Like say for example, females will have rheumatoid arthritis more than male. So again, it's a community of females which have. So these are specific things which are related to specific communities. So that is why understanding about community health care is very, very important. Now the main question, is poor vision a community health issue? So हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं to understand about vision problem and learn more about vision issues. So is this a community health problem is what I want to ensure and kind of present to you. So कुछ statistics हैं जो maybe will be an eye opener to you. Yes, it is very much a community healthcare issue. Vision loss अगर आप देखते हैं तो vision loss leads to depression, diabetes, hearing impairment, stroke, falls and premature death.
These are all through articles which have proven these things. So imagine the impact what vision loss causes. Decreased ability to see. So vision loss is something which is, again, of course, Ajit sir has said that there are a lot of layers, but vision loss is something which I'm relating to maybe complete blindness. Decreased ability to see, it causes inability to drive, read, travel to unfamiliar places, loss of income, etc. So you can imagine what vision loss and decreased ability of vision can impact in a life of a person. Increased life expectancy and high burden of lifestyle disorders, they are increasing because of these eyesight related issues. Now, interesting fact is 8 out of these 10 things are preventable, and that is where our role as optometrists come, is what I want to present. Primary eye care has the potential to play a major role in reducing avoidable blindness. So, am I sounding relatable? I don't think so. Okay. So there is a body called as IPB, which is International Agency for Prevention of Blindness. So ye puri dunya, for the entire world, they kind of create a vision atlas, which is statistics for vision. So India ka maine statistics yahan pe dala hai. So from morning we have been speaking that we are a 140 crore population, which is 280 crore eyes, right? So if you see this side, it is 27 crores with vision loss. So I am assuming these are permanent vision loss. 90 lakh are blind. Now if you see the data which I have presented in between these, 13.8 crore with near vision, 4.9 crore with some mild problem, and 7.8 crore with some moderate to severe problem. Now where can we place ourselves in terms of giving vision correction is yahan pe. Do you agree? But are we doing that is the question. So we are sitting in our clinics, हम हमारे clinic में या practice में बैठे रहते हैं, and then we expect that yes, a patient will come and then I will give these treatments or corrections to that patient. And that is not wrong. I'm not saying that that is what we are kind of doing. Private practice ho ya koi college mein ho, that is our place of work, and we think, okay, a patient will come, student will come, and then I will teach, or then I will see the patient. But are we going to the community and giving back what we have learned is a question which I want to leave you with. Because this is a serious problem. Now, जब मैंने वो स्लाइड दिखाया तो उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन किया कि आर वी रीचिंग आउट, सो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. इट इज़ नॉट वेरी ईजी. यहाँ पे खड़े होके क्वेश्चन करना इज़ वेरी वेरी ईजी दैट आर वी डूइंग दैट. देर आर सो मेनी चैलेंजेस. सो कुछ चैलेंजेस जो मैंने रिकग्नाइज किया है, दिस इज़ एब्सोल्युटली माई थॉट एंड आई थिंक पीपल विल रेजोनेट विद इट. जोग्राफिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, कल्चरल बिलीव्स एंड स्टिग्मा. अवेयरनेस को मैंने सेंटर पे रखा है बिकॉज वी कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट. सो जोग्राफी के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज रूरल टेरेन्स हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं. हम हमेशा वी वॉन्ट टू हम सिटीज़ में जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम रूरल में जाके प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, या जो अनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं वहाँ पे हम सोचते हैं कि हम इट विल बी अ लॉट ऑफ वर्क. सो मे बी हम कभी कभी जोग्राफीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं. इकोनॉमिक, people might not have access. So wahan pe there is a challenge. And then of course, pardon? No, this should put some questions in mind. कल्चरल बिलीफ एंड स्टिग्मा, जैसे अभी अतनु ने अभी स्क्विंट के बारे में बहुत सारी बातें की. हम लोग स्क्विंट के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे बिलीफ है कि लड़कियों को अगर स्क्विंट है तो वो अच्छा रहता है. ऐसे बिलीव्स होते हैं कि अरे लक्ष्मी है. सो हम एक कम्युनिटी का पार्ट है. अगर हमें ऐसा कोई दिखे तो आप अपने आप को ये क्वेश्चन कीजिए, कभी आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा जिसके पेरेंट्स को आप नहीं जानते पब्लिक में,
कभी आपने वो स्ट्रेंथ गैदर किया कि आप जाके उसको अवेयर करें कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, यू शुड टेक द चाइल्ड टू अ हॉस्पिटल? इट इज़ डिफ़िकल्ट. मैं करती हूँ, आई प्रैक्टिस इट. इवन इफ समबडी इज़ अननोन टू मी, आई गो एंड स्पीक टू पीपल. बट इट्स अ क्वेश्चन, डू वी डू दैट? मे बी नॉट, क्योंकि हमें उस टाइम लगता है कि नहीं, जानते नहीं हैं क्या बोलेंगे. एंड आई थिंक यशवंत सर ऑल्सो सम टाइम बैक, आई डोंट नो इफ somebody was there, so myopia के बारे में, he was just sitting in a restaurant और बाजू के parents were just crying about, you know, their kid having myopia and all, and he just dropped a message that if you want to know more about myopia control, you can connect with me, and they are a constant patient to him. So these are few small efforts by which we can give back to the community. So challenges के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये challenges and awareness is something जिसमें हम day in day out काम कर सकते हैं. Just sitting in the clinic and waiting for a patient, yes, of course we need that. But क्या हम महीने में एक दिन ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस ना दे के कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस दे? कैन वी गो आउट एंड स्पीक विद पीपल? और फिर मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ, कैन आई डू आई कैंप विद देम और एटलीस्ट स्पीक विद देम? So challenges of course are there, and we can find out various ways. But we have been speaking about what role optometrist does, and comprehensive eye examination is something, yes, बार हम आज नहीं, from the time I think the conference launched 3-4 years back, we have been speaking about comprehensive eye examination. So as primary eye care practitioners, because we are the ones whom people will meet first, ऐसा होता है, right? Because हम लोग community में ज़्यादा फैले हुए हैं rather than doctors or ophthalms. Right? So we serve the community in a more closer way than, you know, sometimes एक vision center रहेगा जहाँ पे एक optometrist रहेगा, या फिर आपका एक कॉलोनी है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन हॉस्पिटल 20 किलोमीटर दूर है. सो यू आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो आप क्या हेल्प कर सकते हो अपनी कम्युनिटी को? सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जहाँ पे वी आर स्पेशलाइज्ड. डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. So detection and diagnosis में again there is a difference. Detection is अगर history taking. So आप history taking जब करते हो, you will detect lot of things. And then आप procedure करोगे तो आपको diagnosis पता चलेगा. That will be your effect. So we can do both. So आप जब अपने patient के साथ बात कर रहे हैं, you can detect lot of things. And then you do the procedure, you can diagnose lot of things. And that can lead to a proper service delivery. Early intervention. Early intervention can actually go to that step wherein out of 10, 8 can be prevented. So we always talk about preventive care. So early intervention is something which optometrists can help in the community. Spectacle contact lenses, of course, we are anyways giving. Comprehensive, timely referral. So just यहाँ पे जितने भी लोग present हैं, किन लोगों के पास एक referral letter का format है? Can you raise hand? So less. This is something which you should introduce right away. So हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ रेफ़र किया और वो पेशेंट उधर भी नहीं गया, मेरे पास भी नहीं आया. Just referring or telling them is not sufficient. If you provide them with a letter, that I am giving you a letter with the name of the consultant or your condition written, probability is that the patient will believe you and then go to that higher center, get the treatment or the required thing, and will come back to you. So you should have few standard operating procedures of your clinic so that you can serve the community better. Binocular vision, low vision, other specialties, of course, we are now coming into a lot of things, other things. So इतनी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. I don't think we need to even think of your prescribing medicine or something. That is a different topic altogether. But ये कुछ चीज़ें जो मैंने I could thought of, I have put it. And just a question, are you doing all this? Not everybody. Again, we have been speaking from the morning that everything is not everybody's cup of tea. जैसे मेरे लिए मुझे बाइनोकुलर विजन कुछ भी नहीं समझ में आता है. मुझे सिर्फ ये पता है 2 eyes, they see, they make one image, that's it. Atanu is the expert. So if I have any problem, I will call him, pick up the phone, I will call. So can you, Indore, the optometrists of Indore, create such a community जहाँ पे specializations are being done and everybody is doing comprehensive eye examination? Can we do it?
maybe in the coming 1 or 2 years, is a thought. Again, a question, a thought. The next thing, importance of preventive eye care and early detection. क्यों important है? Avoiding vision loss, improving the quality of life, and educating about eye health. So ये चीज़ें बहुत important है. You know, the early detection is really, really important. You can just read through it. Right. Next important thing is collaborating with other practitioners and NGOs. So हमें वही लगता है अभी, in fact, a few of the renowned ophthalmologists also graced the occasion. So we feel that, okay, we are only bridge to ophthalmologists. No, we are bridge to lot of people, lot of specialities. So people come to us. Vision can actually give us an idea of lot of defects, lot of things. Say for example, आपके पास एक Down syndrome का बच्चा आया. उसको vision का issue होता है, but it's a neurological problem as well. So, and the parents, they really don't know. So, because you are the first point of contact, if you have a contact with a neurologist, you can immediately connect with them. So, it's not only that ophthalmologists are only your point of contact. You have to have a pediatrician as a friend, a diabetologist as a friend, or an endocrinologist as a friend, a cardiologist, a neurologist. And of course, community में जब हम काम करते हैं, आशा workers are very, very important, and NGOs. So what happens is हम अकेले इतना इफेक्ट नहीं ला पाते. अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं जो मैसिव काम करती है, and we just give 1 day of time to them. Say for example, you are associated with Lions. You are a Lions member. Just an example. And you tell them that, okay, I am doing this specialty and I want to extend my services to the Lions members or the school. They will be more than happy, and you can create a difference in the community. So ये कुछ communities हैं जो मैंने highlight किया है, जैसे truckers, जैसे drivers. You know, अभी recently some issues were there that color vision का issue था, and then person was driving for 20 years. अभी तक हमारे rules इतने strict नहीं हुए हैं. But then if you get you know, अगर आपका contact है and you know that, okay, I can give time and do screening for a driver community, please go do it. बट क्या हम ये सोच रहे हैं या फिर हम यही सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे पास पेशेंट आएगा तो ही मैं सर्विस दूंगा, इज़ अ क्वेश्चन. स्कूल है, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, एल्डरली कम्युनिटी है. अभी रिसेंटली वी डिड अ प्रोजेक्ट विद एल्डरली कम्युनिटीज़ हु आर इन ओल्ड एज होम्स. दे आर इमोबाइल, वो लोग नहीं जा सकते केयर के लिए. हैव वी एवर थॉट कि मैं क्लिनिक से बाहर एक दिन निकल के कोई एक ओल्ड एज होम में जाके मेरा सर्विस दूँ? अगेन अ क्वेश्चन टू यू. So this is a summary. India really faces significant challenges in eye health. With a large population and limited resource, there is high prevalence of visual impairment. Optometrists, they will help the issue, addressing the issue by providing accessible and affordable eye care. So ये बहुत important है that हम जो eye care देते हैं, हम जो solutions देते हैं, they are very, very accessible and affordable. So it is easier to attract people, and it is easier for us also to go and work in the community. This is the thought with which I want to leave you. I don't want to take more time. This is what I have been doing for the last decade, is advocating for eye health, and I think advocacy is something जो हम सब कर सकते हैं. It is just about, you know, talking to people, उसका इम्पोर्टेंस बताना. इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी एवरीबडी. आप आज अपने रूम से निकले, आपके रिलेटिव के घर गए, वहाँ पे भी यू कैन स्पीक अबाउट आई केयर. एटलीस्ट दे विल अंडरस्टैंड. स्पीक एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंटिव आई केयर. हम सिर्फ शायद 2 दिन ही करते हैं, एक वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री डे के दिन और एक वर्ल्ड साइट डे के दिन, तभी हमारा सब ऑप्टोमेट्री जाग उठता है. अदर देन दैट वी डोंट डू एनीथिंग, राइट? बट वी वांट 365 डेज हम वही चीज़ें करें, ठीक है? एंड let's work together for a better and healthy community, and everybody sees better. Thank you very much. Thank you so much, Paula ma'am. Now, I would like to invite Optum Kamal Sethia to take out the lucky draws from Sovia Atlas Ophthalmic Company.
सर आपके ड्रॉज ले आइए. पवन बंसल जी, इसको रखिए स्टेज पे. सर प्लीज. इस पे नाम बोलो. आपको इसमें से स्लिप निकालना है और इस पे नाम बोलो. आपके नाम क्या है? सोविया अल्टीज फार्मा द्वारा ये लकी ड्रा किया गया है. इसमें फर्स्ट जो है मिस्टर एलेक्स जोसेफ जी, सभी तालियां बजाएं उनके लिए. फर्स्ट लकी ड्रा मिस्टर एलेक्स जोसेफ जी, प्लीज कम ऑन. मुकुल सर प्लीज आप ऊपर आएं, स्टेज पर आएं. ये तो सेटिंग लग रही है. मुझे नहीं बस सेटिंग नहीं. लो अब उनको दो सर. अच्छा हमको लगा कि ड्रा हो गया सर का. मिस्टर तरुण पुनासिया जी, तरुण भाई. फॉर सेकंड प्राइज. दिस इज सोबी अल्टिस कंपनी फ्रॉम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम. सारे इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमारा सलीम जी से बहुत पुराना संबंध है, तो उनके वियाप पर मैं आया था यहाँ. तो ऑप्थेल्मिक में सारे जनरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम. एंटीबायोटिक्स में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सी के साथ मॉक्सीफ्लॉक्सासिन विद केटोलेक, प्रोटिपिनॉल, डेक्सा के साथ दूसरे अदर एंटी एलर्जिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम जी. थैंक यू. धर्मेंद्र जी अनिया साहब. और थर्ड प्राइज के लिए दशरथ जी धाकड़, प्लीज कम ऑन द स्टेज. थर्ड प्राइज. आ जाओ बंसल जी, इधर ही रहो. दशरथ जी धाकड़. रत्न पारकी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. एक बार फिर अनाउंस कर रहे हैं, 7:30 बजे से गाला डिनर का आयोजन इसी हाल में है. जो लोग बाहर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अध्यक्ष जी को कि शायद वापस लौट के नहीं आएंगे, तो उन्होंने बोला गाला डिनर बोलो तो शायद लौट के आएंगे. तो सभी से निवेदन है 7:30 बजे से यहीं पर हमारे स्पीकर्स भी हमारे साथ रहेंगे. ज़्यादातर 10-11 बजे के बाद सबकी फ़्लाइट है, तो 2-3 घंटे हम सबके साथ एंजॉय करेंगे साथ में. तो कृपया सभी लोग 7:30 बजे यहाँ
इसी हाल में पधारना है। Sudhanshu, you are a private practitioner, right? Yes, Mahi. What if I tell you that we have someone between us who owns one of the best private practice in India? Sounds like a good opportunity to learn from the best. For all of our private practitioners and those who want to start a private practice, here is your best chance to learn from leading optometrist Optom Sanjay Mehta. I would like to invite Sanjay sir to teach us about upgrading private practice. Sir, one small request. All of you turn around. All of you turn around. With the promise, chair भी turn कर लीजिए. Chair भी turn कर लीजिए. Chair भी turn कर लीजिए. सर बहुत देर से स्लाइड देख रहे हैं और वही डायरेक्शन से देख रहे हैं तो you will feel bored. Sorry for the discomfort. थोड़ा आपको जो कंफर्ट जोन में है सर ये वाला ओके हेलो थोड़ा आपको कंफर्ट जोन में से बाहर निकल रहा हूँ ओके सर आई वांट टू नो समथिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंथन सर सर बट नो आई नो बट व्हाट इज द हिस्टोरिकल वो पिक्चर कुछ आप बोल सकते हैं समवन कैन डिस्क्राइब इट प्लीज समवन कैन डिस्क्राइब इट हाँ प्लीज आप हाँ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जितना मुझे पता है हाँ सो दिस इज व्हेन हिंदी में बोल रही हूँ मैं असुर एंड देव दे तो उनको दे वांटेड अमृत एंड अमृत वाज सपोज टू बी डीप इनसाइड द सी सो इट इज सेड दैट व्हेन यू चर्न बहुत डीप से थिंग्स कम अप सो द आइडिया वाज टू चर्न द सी so they didn't know how to do it right. So this is a mountain, I don't know the mountain, so they right. took mountain as a whirling this thing and okay. then Sheshnag said that I will be the rope and then you do the tug of war and you churn and with that momentum the amrit came up so okay only amrit came out or no something wish else? also came exactly hello okay. Sanjay sir actually here the meaning of Drishti Manthan is this कि whatever conference we are managing we want to do the work very specifically accurately which is good and beneficial for the patient okay sir so we are going very deep okay sir and accurate sir in this whole hall there is one non-optometrist who has seen my journey probably better than me also is my wife. This is what I am here is because of her. I in public sincerely thank her to tolerate me, tolerate all my entrepreneurship journey with all ups and downs. So thank you very much. Okay. सर इसीलिए इस बार लेकर आया मैं बोला आइए प्लीज सर एनी जिसने आपने डिस्क्राइब किया है सो फॉर एवरीथिंग देयर इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैपनिंग्स तो वही कुछ हमारे प्रोफेशन में भी हो रहा है आई एम एन प्रैक्टिशनर सो आप जो भी है यहाँ पर प्लीज़ कम हो हियर मैम नहीं तो आप बात करेंगे मैं भी आ जाऊँगा बात करने के लिए ओके
तो पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट्स मी मोर. तो everyone knows the challenges. From day one, when I started my practice, I know that my journey is not going to be an easy one. Still, it is not. Every day we face challenges. Every day we go through many things which is never taught in the books, never taught in the school, never taught in the books, never taught by our parents also. Only the situation makes you what we are. Hello sir, how are you? So something interesting over there, please share it. Thanks. So we'll also learn from you. Right, okay sir. So what you want to know about me? Journey? Okay. I started much earlier. As I told you, when I was in my second year itself, I decided that I am going to have a shop, come practice. Yes, come practice. So 1990, I started after graduation. I waited for my degree to come, certificate to come, and then I started my practice. I still have the case sheet of my first patients. Okay? His name was Rajesh and Mukesh, both of them brothers. They were waiting for me to do the setup for checkup. So that was the spade work done for 2 years before I really started my practice. I had an ophthalmologist practicing just to this next side. There was a lot of opposition from within family कि वो लोग क्या बोलेंगे. He used to come only in the evenings, 6 to 9 or so. बहुत opposition हुआ कि वो है वो क्या सोचेंगे. मैं बोला वो लोग किया जो भी है, but I will have given 4 years after doing my BSc Mathematics. I have given 4 years. So I don't want to leave it as it is. I learnt a lot from that ophthalmologist also. I wouldn't say he was not a competition. I never took it as a competition. He taught me the importance of cylinder axis 5 degrees difference it makes when you are dispensing it. So I am one of the toughest customer for my suppliers, whether it is for specs, frame, lens, anything for that matter. I have rejected many of the wrongly fitted spectacle lenses. Something quality is not there in the frames, I have sent it back without worrying whether who he is, who the supplier is. So Ajit said, we'll start from tomorrow, low vision aids. He told me, Atanu said, sir, 6 months lagega aapko. But I will say, do the change in your practice every day. Every day, then only you will see the results. Probably as good as simple turning your chair from this side to this side, 45 degrees. Okay? That's how it is possible, because the new technology which is coming, probably it has already come. We are also facing the heat of it. In 2020, there was a conference in Salem during the same time. To be very frank, I had put 4 slides on lens cart itself. Okay, 2020. तो बहुत लोगों ने बोला था सर भैया क्या कर रहे हैं तुम लोग. I had put पीयूष बंसल का फोटो भी डाल दिया था मैंने. But I was warning them the change which is coming. Agreed or not? All of us are affected or not? For the good or bad? Good? Bad? Yeah, how many goods, how many bad? How many goods, how many bad? How many bad? कोई भी नहीं. Superb. Yes, I always took it as a positive thing. हम लोग सो रहे थे, उन्होंने आकर जगा दिया हमको. What we should be doing it. First the onslaught came about 10 years back. आप जो अभी देख रहे हैं, we had an onslaught 10 years back. We were
The first attack was on contact lenses. We were just dumbstruck what to do. And there was no support from the companies. Contact lens companies, सभी ने support नहीं दिया हमको. बोला कि हम बेचेंगे वहाँ पर, ठीक है. And like most of us, I also tried the model of lens cart. I failed miserably. One of my customers said, "What, Sanjay, you also, huh?" That I said, yes. Then I said, what to do? I realized what are my core strengths. My strength was we cannot challenge them because they have loads and loads of money, manpower, they have great marketing skills. We have to appreciate that. What I have as an optometrist, yes, in my 100 square feet clinic and 300 square feet of optical store, I can do what I should be doing. In fact, there were many turning points. Many people have come in my life to guide me. कि भैया ये करो, indirectly and directly, and I listened to them. मैं भी आपकी तरह, हम लोग की तरह business में हम हो जाते हैं. I had a very big clinic earlier, but then again I made it small to focus on my opticals. And we go into that rut. हम लोग भूल जाते हैं हर रोज के टाइम में. We start because पैसा चाहिए ना नहीं, तो we forget everything. And that's how someone said again, does your clinic look like a clinic? It really opened my eyes. So again I made the clinic, and there's no turning back from that day. Second important thing, where we are failing. As Paula said, people should know what you're doing. Even what Ajit said, you should show what you're doing. People will say, show off. Even my wife will say, why you are doing so much? Okay. My presence is there in all WhatsApp groups, Facebook, okay. But we have to use the best use of social media in the best possible way, positive way. So you have to show what you're doing. And in fact, if you want to know whether the eye is all right or not, which is the simplest way, tell me. And you can say, sure that the eyes are working properly. Can anyone tell me? Simple way. Pen torch. It can do wonders. We can know that the eye is working properly or not. आप उसका एंटीरियर चेम्बर डेप्थ भी देख सकते हैं, पिपलरी रिएक्शन भी देख सकते हैं. काफ़ी हद तक, in fact, you can go see up to your brain whether the light is going properly there or not. But patient wants to see. आपको दिखाना पड़ता है कि why are we all dressed up nicely? Okay? The same thing applies there. The patient should look that your clinic looks like a clinic, and what you are doing is doing proper eye examination or not. My patient, as my journey has happened, today my patient gets about, third thing is transparency. बहुत जगह पर I'm not aware of what's happening here. कुछ बोलकर दूसरा देते हैं, तो that age is gone. You have to be very, very transparent. You have to, मेरे patient को आज की तारीख में they get a 8-page to 16-page report जाता है. 8 to 16-page report. आप जो कर रहे हैं मैं वो ही कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और कुछ नहीं. लेकिन the patient should know that you are doing something, and that's how you build up the practice. So many challenges are there. She knows more about it than so where how to start is the question. As simple as making you all sit in a different direction
as long as even आपका क्लिनिक में आज कल जाइएगा, see from a normal public perspective what they want and how they look at your clinic, how they look at your practice, how you are doing your work. Then from their point of view, if you start seeing, then you will see a different yourself. And there will be distractions like this. Okay? There will be distractions like this. Can't help it. So as long as you again come back, that's how it's been. My journey has been like this, like this, like this. But I took it as an every step to go forward. And something has gone wrong. Something did terribly go wrong also. But you learn from your mistakes not to repeat again. That's what I will say. I would like to know from you, all of you, what problems you are facing, and I'll try my best to give solution for that. I did give to a couple of you today when we were during the lunch. Okay, I leave it up to you to ask me questions, because that's why there are no slides, because you are the slides for me. माई माइक है, पिप माइक। सर आपने जो अपनी जर्नी के बारे में बताया, इतना स्ट्रगल किया, इसके बारे में यही कहूँगी कि जहाँ चाह रहती है वहाँ राह अवश्य मिल जाती है। तो सर आपकी लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन आपके पास गोल था तो आप आपकी मंजिल तक पहुँच पाए सर। और आप समझ पाए सर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस जरूर, मैं हिंदी अच्छी तरह से जानता हूँ। क्योंकि सर मैं भी उसी सिचुएशन से निकली हूँ, इसलिए मैं समझ पाई कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर। यस सर, एंटरप्रेन्योरशिप इज द वर्स्ट थिंग कैन हैपन इन इंडिया। ओके, क्योंकि इतनी स्ट्रगल होती है, वी हैव टू वेट फॉर द पेशेंट्स टू कम। ऑफ कोर्स एज पॉल हैज सेड, वी विल ट्राई टू रीच आउट टू पीपल। ओके, let me reach out to those 3 people over there. They are trying to talk something. They are talking very intensely. बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर मेरे को ही नहीं मालूम। ओके, they said sir, I didn't even know that this type of awards existed. मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, सर हमने आपके बारे में सुना है, आप एंट्री डालिए। मैं बोला ठीक है, पिक्चर्स भेज दिए, तो उनकी कुछ ज्यूरी है, उन्होंने डिसाइड किया है, तो दैट्स व्हाट इट इज़। आई थिंक तो एक ही बात मैं बोलता हूँ, उन्होंने एक बोला कि सर दिस अवार्ड यू डोंट डिजर्व द अवार्ड, सर द अवार्ड डिजर्व्स यू। तो वो दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट। सर मैं भी बैक बेंचर ही था। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉक हैपन्स ओनली विद द बैक बेंचर्स। कैसे हैं सर? बढ़िया। Sanjay sir, I just for the interest of everybody, I think this is a very valid question. I think everybody will benefit from that. With very minimum equipments, with very minimum facility, yes, how can you actually build your optometry practice? If you can just throw your light. Ma'am, simple है. I have also for probably initially 15 years, अभी कितना साल हो गए? 34 years हो गए। So my 10 years initially was with basic instrument, ophthalmoscope, retinoscope, vision chart था, pen chart, और I was मेरे टीचर थे प्रिंसिपल डॉक्टर ई वैद्यलिंगम, वो बहुत मेरे को पसंद करते थे। तो बोला संजय आई विल गिविंग यू वन ओरिजिनल बॉश एंड लॉम का केराटोमीटर है। तो उन्होंने मेरे को दिया था, मैंने रख दिया था क्लिनिक पर। और मेरे स्ट्रगल हुई थी व्हेन आई वांटेड टू अपग्रेड माय क्लिनिक। स्लिट लैम्प लेने के लिए 5 बैंक पर गया, किसी ने लोन ही नहीं दिया मेरे को। फिर छठे बैंक मेरे जहाँ पर अकाउंट था उसको थ्रेटन किया, सर मैं सच ही बोल रहा हूँ, वैसे ही बोला, मैं थक गया था इतनी जगह जहाँ पर जाकर। सर मैं बोला, सर पीपल लाइक यू डिज़र्व हर्षद मेहता ओनली। तो
तो वो बैंक मैनेजर जस्ट ही गॉट स्टन, वो बोला यस सर इंडीड माय फादर नेम इज़ ऑल्सो हर्षद। तो वो फिर उसको बोला सर, वो बोला मैं आई एम रिटायरिंग, ओके बिफोर दैट आई विल सैंक्शन यू अ लोन फॉर प्रॉब्ली इट वाज सम 12,000 रुपीज़ स्लिट लैम्प। तो बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, मिनिमल आप कर सकते हैं बट दैट एज इज़ गॉन। आई एम डोंट मिस्टेक मी, आज की तारीख में हम पीपल व्हेन दे कैन स्पेंड ऑन मेनी अदर थिंग्स एंड आप एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। व्हेन माय नॉन मीडियाटिक फंडस कैमरा जो टॉप कॉन जो सेकेंड वाला है द बेस्ट वन, इट करेक्टली लैंडेड जस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन। तो मैं तो पैनिक में हो गया था कि उसको पैसा भी देना है और सिचुएशन भी ऐसी है, तो देन ऐसे ही हो गया था। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, वी हैव टू नेगोशिएट, उनको बात करके रीनेगोशिएट करके लकीली दे अग्रीड एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। बट 2020 में आई टुक माय फंडस कैमरा, 2021 में वो भी लॉकडाउन हुआ था, तभी मैंने शायद विजुअल फील्ड एनालाइजर लिया, नहीं एनसीटी लिया, एनसीटी एंड पैकीमीटर। स्लोली आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मशीन्स एंड दैट्स हाउ इट्स बीन। सी मैं तो पागल आदमी हूँ और कैलकुलेट नहीं करता हूँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आमतौर के लोग करेंगे, ओके लेकिन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्स इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड इट एड्स वैल्यू टू बोथ। मेरा सेल्स क्लिनिक में ही होता है, शोरूम में नहीं होता है। एक्सक्यूज मी सर,